Hello, chat. We are live with day number 2 of Clutch Chess Champions Showdown. And क्या ही showdown हमने देखा day number 1 को, जहां पे गुकेश beating the odds, proving his haters down and showing what he's capable of even in the rapid section. Welcome chat. सबके सब एक बार chat में hi लिख दो, पता लग जाए कौन कौन chat में घूम रहा है. Because why? We are seeing history being made. कार्लसन को कल हारे गुकेश, पहले ही गेम हारे. दैट वाज एन अपसेट. हमने कहा क्या ये फिर से उसी पाथ में जाएगा जहां पे गुकेश इज अनएबल टू मैच अप टू दीस लेजेंड्स ऑफ द गेम. वर्ल्ड नंबर 1 2 3 स्ट्रगल करेंगे, स्पेशली इन द रैपिड फॉर्मेट. लेकिन उसके बाद जो जादू हुआ, पहले कार्लसन से ब्लैक से ड्रॉ किया, फिर हिकारू को ब्लैक से हराया, फिर कारुआनो को ब्लैक व्हाइट दोनों से हराया. सो अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो एक्सपोनेंशियली अप जा रहा है. सो वेलकम भाई लोग. एक बार सबके सब लोग अपनी सिटी बता दो, कहां से आप लोग ज्वाइन कर रहे हो. वुड लव टू नो, बिकॉज गर्मी बढ़ने वाली है. बिकॉज पहला गेम किसके साथ है, जरा नाम पढ़े इन महाशय का. मगनुस कलसेन कलसेन कलसेन. तो कुछ है भाई, तगड़े खिलाड़ी लग रहे हैं मुझे. गुकेश हरा देंगे भाई, मुझे फीलिंग आ रही है भाई. यो अभी नेगी जी, क्या हालचाल. अहमदाबाद से लोग हैं, टिकटॉक से भी लोग हैं, फरीदाबाद, दिब्रूगढ़, असम, जमशेदपुर, भोपाल, फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस गुजरात. काफी इंटरेस्टिंग सिटीज इंडिया में आई है. मैंने काफी ज्योग्राफी पढ़ी नहीं है, पता नहीं था ये भी सिटीज है. ग्लैड टू दैट. एंड चैट, क्या आप लोग रेडी हो भाई. पहला गेम गुकेश वर्सेस, उस प्लेयर का नाम एक बार स्पैम हो जाए, इसके लिए गुकेश का मैच है भाई. कौन है वो प्लेयर, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं भाई. मग्नेस कलसेन, क्या नाम है इनका, कोई प्रोनाउंस बता दो मुझे भाई. क्या नाम है इन लेजेंड ऑफ द गेम का. लेकिन इस बार गुकेश के पहले ब्लैक है. वेरी इंटरेस्टिंग, एग्जैक्टली ऑपोजिट टू टुडे. एंड लेट्स मेक इट वेरी क्लियर, इट इज डे नंबर 2 ऑफ क्लच चेस. इसका मतलब क्या है चैट, कौन बताएगा. मैंने कल स्ट्रीम बताया था, कौन बताएगा इसका मतलब. इसका मतलब यह है कि आपको हर लॉस के लिए मिलेंगे 0 पॉइंट, हर ड्रॉ के लिए आपको मिलेगा वही आधा पॉइंट, लेकिन हर विन के लिए आपको मिलेंगे 2 पॉइंट. सो अब इवन जस्ट इन 1 राउंड the standings could completely change. So बहुत इंपॉर्टेंट दिन है डे नंबर 2. टाइम कंट्रोल एज यूजुअल विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. 10+5 उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो हमारे नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे that is very very important. So let's, अच्छा ड्रॉ 1 पॉइंट है क्या. ओ माय बैड, ड्रॉ हम लोग करते नहीं है भाई, तो ड्रॉ के बारे में मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं. विन के 2 पॉइंट है भाई, दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट. आई एम फ्रॉम अजीत सिंह होम टाउन. अरे नाइस नाइस भाई. मगन लाल कल नहीं भाई, ये मगन लाल उनका नाम नहीं है भाई. बिहार से नहीं है शायद. बट एनीवेज, मीनवाइल चैट, एज द गेम इज अबाउट टू बिगिन, आई थिंक 2-3 मिनट बाकी है. 10:30 स्केड्यूल टाइम. वोट हम लोग चालू कर देते हैं भाई. जल्दी, डेमोक्रेसी है भाई, वोट डालना पड़ेगा. इट इज कार्लसन वर्सेस गुकेश. गेम 1, कार्लसन विंस, गुकेश विंस, या फिर ड्रॉ. आई थिंक ड्रॉ तो हो सकता है. आई मीन ड्रॉ बी अ गुड रिजल्ट फॉर गुकेश, बट मैग्नस चाहेंगे लीड वापस लेना. एंड लीड वापस लेने के लिए सिंपल सोल्यूशन है मैग्नस के पास. गुकेश को हराओ, लीड पाओ भाई, सिंपल सोल्यूशन है. क्या, और पोल आ चुका है, सब लोग वोट करें. मैं भी वोट करता हूं भाई, मैं वोट करूंगा अपने देश के खिलाड़ी के लिए भाई. ओके सर, पक्का विन भाई. लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट टुडे चैट. एंड स्ट्रीम लाइक करते चलो भाई. लेट्स गेट टू 500 लाइक जल्दी से. एंड चैट, कल हमने मेंबरशिप गिव नहीं करा बिकॉज़ चैलेंज पूरा नहीं किया, बट आज हम फिर से करेंगे मेंबरशिप गिव अवे. चेसकॉम डायमंड मेंबरशिप देंगे हम चैट में से एक बंदे को जब 1000 लाइक हो जाएंगे. मुझे रिमाइंडर देना चैट, तो जल्दी स्ट्रीम लाइक कर दो. लेट्स गेट टू 1000 लाइक्स एंड एक बंदे को मिलेगी चेसकॉम डायमंड मेंबरशिप. वी आर जस्ट 3 days अवे फ्रॉम द वर्ल्ड कप. एक्चुअली लेस देन 2.5 days नाउ. वर्ल्ड कप भी आ रहा है, क्लच चेस भी चल रहा है भाई. इंडियन चेस मस्त लग रहा है भाई. भाई कल की तरह मुकेश खेले ना भाई, तो मतलब चेस देखने में जो फील आती है ना, दैट इज जस्ट नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल. साज ने कहा, साज भाई ट्रैवल करने की तैयारी, बुडापेस्ट से बहुत बहुत लंबी फ्लाइट है, तो आ रहे हैं वो. एंड या लेट्स सपोर्ट गुकेश, ऑफ कोर्स भाई, दैट्स योर सपोर्टिंग. अरे अरे भाई, हमारे सॉस की चैट में मेहनत करते हुए मौर जी, क्या होगा वेलकम में. 3 स्पॉट कैंडिडेट्स के दाव पे है. 3 स्पॉट्स, दैट इज अ लॉट. गेम होगा आई थिंक 10:30 स्केड्यूल टाइम. कई बार होता है कोई सेलिब्रिटी आता है ओपनिंग सेरेमोनियल मूव करने के लिए, तो 1-2 मिनट लग जाते हैं. बट द गेम
will begin very, very soon. And it is Magnus Carlsen versus Gukesh. Let's keep in mind, अगर गुकेश ने हरा दिया तो कहां कौन क्या बैंग होगा कुछ पता नहीं है. टेबल कांप रहे हैं दुनिया भर के, उनकी लेग शेक कर रही है टेबल्स की, भाई क्या होगा आज. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. कम ऑन गुकेश भाई, कारुआना को हरा दिया, हिकारू को हरा दिया. अब बस एक काम और कर दो भाई, एक काम और, एक काम और, बस बस एक एक पेपी पनी पिज्जा ऑर्डर करने का. नहीं नहीं, मतलब कार्लसन को हरा दो भाई, पिज्जा मैं खुद ऑर्डर कर दूंगा भाई. वर्ल्ड कप वुमेन्स का कब होगा? वो हो चुका है इस साल. एंड गेस व्हाट, हु वन? एन इंडियन वन इट. दिव्या देशमुख वन द गोल्ड मेडल एंड हम्पी वन द सिल्वर. सो आई मीन वी आर डोमिनेटिंग एवरी इवेंट दिस ईयर भाई. यो Harshad भाई, व्हाट्सअप? ओके, should slam the table after winning. भाई विन के बाद तो बंदा स्टाइल से लेटेगा भाई. आई मैग्नस. बस जीतने के बाद थोड़ी टेबल बैंग करते हैं भाई, वो हारने के बाद होता है. गुकी विल, लेट्स होप सो. जॉय मैक जी एंड चैट, जल्दी से अपना स्कोर की प्रिडिक्शन डाल दें. दो गेम है, मैग्नस वर्सेस गुकेश, एंड विन के 2 पॉइंट है. सो इज इट 2-2? इज इट लाइक 4-0? क्या, इज इट 3-1? क्या प्रिडिक्शन है आपकी मैग्नस गुकेश के? जल्दी बता दो. एंड आई एम गोना मेक अ प्रिडिक्शन. मेरे को लग रहा है यार, कर दूं क्या? रिस्क रिस्क ले लूं क्या भाई? रिस्क, थोड़ा सा रिस्क ले लेता हूं भाई. आई एम गोना से गुकेश विंस 3-1. मैं लगता हूं कि एक गेम के जीत जाएगा. मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है भाई, ऐसी फीलिंग अंदर से फीलिंग आ रही है. जो कल से मोमेंटम गेन किया ना, थोड़ा तो मूड बना होगा भाई जीतने का. सो लेट्स सी क्या होता है. मैग्नस ने पिछली गेम में तो हराया था, तो इस बार कमबैक करना बहुत जरूरी है. कल वेट लॉस की बातें, आज पिज्जा ऑर्डर. अरे भाई बस जैसे जज्बात बदलते हैं ना भाई, वैसी इवेल्युएशन जैसे बदले यूकेश की फेवर में, वैसे ही हम लोग के डाइट प्लान ही बदलते हैं भाई. कुछ भी हो सकता है चेस की स्ट्रीम पे. एनीथिंग इज पॉसिबल भाई, एनीथिंग इज पॉसिबल. एंड अ गुड क्वेश्चन बाय AG29, बहुत बढ़िया सवाल पूछते हो भाई. चैट, मैग्नस कार्लसन ही नोज कि मुझे जीतना है लीड लेने के लिए. व्हाट इज द फर्स्ट मूव ही विल प्ले? व्हाट इज योर गेस? I am thinking he's gonna go for D4 today because Gukesh थोड़े फॉर्म में लग रहे थे कल, तो he might be a bit more cautious with the opening choice. तो मुझे D4 लग रहा है. What is your prediction, chat? Guess करो. अरे हिकारू कारुआना का अलग मैच है, ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, बट ऑफ कोर्स वी गोना फोकस ऑन द मैग्नस गुकेश गेम. बरमुडा पार्टी ओलंपियाड में होती है भाई, वर्ल्ड कप में नहीं. सो ऑल द गो है, एनीथिंग इज पॉसिबल. G3, C4, A3, E4, C4, नाइट F3, G3, B3. भाई दुनिया भर की मूव्स है भाई. लेट्स सी व्हाट मैग्नस प्लेस. क्या पता है S3 खेल दे भाई. नोइंग मैन, ही कैन डू एनीथिंग. There is nothing Magnus Carlsen cannot do. Knight F3, कौन था भाई बंदा, कौन था? एंड D5, द गेम्स हैव गॉन चैट. लेट्स गो. मेरे गले की आज बैंड बजी हुई है, बट आई गोना ट्राई माय बेस्ट. एंड यहाँ पे काफी सॉलिड सेटअप आइडिया है कि आई एम गोना पुट द बिशप आउटसाइड माय पॉन चेन टू G4 और F5. एंड अब मैं A6 खेलूंगा ताकि मेरा बिशप पॉन चेन के पीछे अटक ना जाए. गुकेश ऑलरेडी प्लेइंग अ बिट क्विकली. लुक एट द टाइम यार, वो इट्स ओनली अ 10 सेकंड डिफरेंस, बट इट शोज गुकेश क्लियर स्ट्रेटजी से आए हैं कि आई वांट टू प्ले क्विकली. उनके कोचेस ने कहा होगा, उनके सेकंड्स ने कहा होगा कि भाई जल्दी खेलो ओपनिंग में, मैग्नस से 1-2 मिनट का थोड़ा टाइम बढ़ा लो ताकि आप आगे जाके और सोच पाओ. एंड वो कह रहे, रेटी कह रहे फायर आर्म. बिल्कुल, रेटी बहुत बढ़िया ओपनिंग है यार. इट्स ऑल्सो फेवरेट ऑफ गुकेश. एंड कई बार ना किसी प्लेयर की फेवरेट ओपनिंग उसके अगेंस्ट खेलते हो तो टफ होता है खेलना. इफ यू प्ले द लंडन सिस्टम अगेंस्ट मी, मे बी इट माइट नॉट बी दैट इजी. बाय द वे, बिशप पेयर गुकेश ने यहां पे दे दिया है, लेकिन यहां पे काफी सॉलिड स्ट्रक्चर है, तो कोई बड़ी डील नहीं है. यहां पे कभी ना कभी D4 आएगा. आई थिंक ही कुड आल्सो प्ले नाइट C3, B3. काफी ऑप्शंस है, डिपेंड्स ऑन. ओ ही डज गो D4 एट द एंड. स्ट्रीम इज लैगिंग, बोर्ड इज लैगिंग. सर भाई, इज समथिंग लैगिंग? कुछ लैग कर रहा है क्या भाई? बता देना भाई, समथिंग इज लैगिंग. काफी लोग कह रहे हैं. आई एम लैगिंग रियली? क्या बात कर रहे हो भाई, इम्पॉसिबल. एनीवेज, ओके, वेल, बाय द वे, E3 अगर हम ध्यान से देखें, ये बिशप ऑन C1 इज स्टक बिहाइंड द पॉन. इट्स स्टक बिहाइंड द पॉन. सो फिलहाल के लिए गुकेश हैविंग अ डिसेंट पोजीशन. वो बिशप पेयर फील नहीं हो रहा है. नाइट A5, नाइट C4 आने वाला है बहुत जल्दी, एंड इट्स गोना बी अमेजिंग. और यू नॉट बोर्ड, बोर्ड इज लैगिंग. कोई कह रहा है बोर्ड, कोई कह रहा है मैं. चैट, इट्स गोना बी वन आंसर. आई अच्छा अच्छा, ओके ओके.
मीनवाइल चैट यहाँ पे रुक C8 खेल दिया है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, आई एम गोना चेक माय इंटरनेट स्पीड। काफी बढ़िया है भाई, 200 Mbps चल रहा है, तो आई डोंट नो क्या चक्कर है अभी भाई। क्वीन अपलोड भी देख लेते हैं भाई। क्या था वो, क्या था, इंटरनेट स्पीड कैसे चेक करते थे, हाँ, यस, ओखला ओखला ओखला, reminds me of an old song, but anyways. By the way, 98. What is 98? That's a ridiculous move, right? Because you're moving the knight passively back. I think knight d6 maybe unka idea hai. That is the goal. Yeah, he wants to maybe even come to c4, and that's why bishop e1 पहले से preemptively वो bishop को वापस ले आए ताकि कोई चक्कर ना हो. Very very interesting. By the way, download is 201.8 and upload is 350. Pray. Okay, now it's a bit down. Now it's a bit down. Now it's around 200. Yeah, 200. Same ही है, 200 ही है. लेटेंसी है, लेटेंसी क्या होता है भाई? पिंग दिखा रहा है 29 भाई. 57, 57. Download and upload is 20. Okay. हाँ, मीनवाइल चैट, लेट्स ट्राई टू फोकस ऑन द गेम. क्वीन D7 खेल दिया योकेश ने, फिलहाल के लिए काफी सॉलिड चॉइस. जो बिशप पेयर व्हाइट के पास है, ही इज नॉट एबल टू यूटिलाइज इट बिकॉज द पोजीशन इज क्लोज, राइट? अगर यहां बिशप यहां होता, इमेजिन द पावर ऑफ द बिशप, राइट? E1 पे पैसिव है, ओके, क्वीन D1, नाइस मूव बाय मैग्नस. क्वीन यहां भी आ सकती है. यू आर ऑल्सो अगेन गिविंग द बिशप सम रूम. कल को नाइट A4 एंड नाइट C5 इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लान. एंड ऑल्सो नाइट C4 के अगेंस्ट मैंने क्वीन पहले ही हिला दी. कई बार ना आपका ओपोनेंट ऐसे मुक्का मारने वाला है, आप पहले ही गर्दन हटा दो ताकि वो मुक्का लगे तो हवा को लगे. समझ रहे हो? हवा को मारेगा तो दर्द नहीं होगा. ठीक है भाई, आई विल ईट पनीर टिक्का गुकेश विंस. अरे भाई, अगर गुकेश मैग्नस को हरा देना तो भाई मतलब फील ही आ जाएगी भाई. तू मतलब क्या बोलूं भाई, मतलब मैं 3 महीने की डायमेंशन दे देंगे भाई अगर गुकेश जीत गया तो भाई, क्रेजी हो जाएगा भाई. एंड मीनवाइल बाय द वे बिशप E1 यहां पे भी है. एंड लुक एट वन वेरी इंटरेस्टिंग डिटेल 1 minute लैग फॉर गुकेश भाई. लैग वर्ड दिमाग में आ रहा है. सो मैग्नस ऑलरेडी अप ऑन द क्लॉक. इस पोजीशन से मैग्नस ज्यादा कंफर्टेबल लग रहे हैं एज ऑफ नाउ. एंड यूजुअली इट हैपेंस जब भी हम एक नई पोजीशन में आते हैं जो थ्योरी नहीं है, तो यूजुअली जो प्लेयर एक्सपीरियंस्ड होता है, जिस प्लेयर को सालों साल लोगों को अगेंस्ट टेबल बैंक करने का एक्सपीरियंस होता है, वो प्लेयर यूजुअली अच्छे से जल्दी खेल पाते हैं. बाय द वे, पॉन टू F5. जो लोग ड्रॉ पोल किए थे, कौन थे वो लोग, कितने? 12% लोगों ने कहा था ड्रॉ, तो वो 12% लोग तो गलत हो गए. गुकेश डी इज नॉट इन द मूव फॉर अ ड्रॉ. Is not in the mood for a draw in this game. He's gone for F5. भाई, that's why Sahaj भाई is not here, because F pawn को कोई नहीं, हर गेम में F pawn चला जा रहा है भाई. So that is a big deal now suddenly. Ooh, bishop coming back, and now look at this. The best move is G5. Are we gonna see a crazy attack on Magnus Carlsen? Knight E4 also a good move for Gukesh. Bro, Gukesh is really gearing up for this. Why Chesvin? I have no clue, yaar. In fact, I think they're on site, so I'm quite puzzled by that as well. But I don't know. Board lag, I think ab nahi hoga board lag chat. I think it should be fixed. I can refresh it. Agar usse, if that helps once, maybe that will take care of some details. And meanwhile, chat, ये कलर थोड़ा अजीब है ऐसा है भाई, मुझे लग रहा है बोर्ड का थोड़ा डल लग रहा है. मतलब इसमें थोड़ा सा, हाँ, कॉन्ट्रास्ट मिसिंग है ऐसा मुझे लग रहा है. कॉन्ट्रास्ट मिसिंग है, थोड़ा सा कलर ऐड होना चाहिए लाइफ में. कैसे पता लगता है भाई वो? हाँ, वर्चुअल कैमरा. By the way, Nadi who played, so great move again, putting pressure on the center. And chat, question to you, ये नाइट का मेन टारगेट क्या है भाई? बताओ भाई, कम ऑन चैट, व्हाट इज द मेन टारगेट पॉइंट फॉर दिस नाइट? कहां पे, उसकी नजर हर जगह है, हर जगह है, बट मेन नजर कहां है, किस पॉइंट पे है भाई? कम ऑन चैट, क्या लग रहा है भाई? कलर कम लग रहा है ना, कलर थोड़ा ड्राई लग रहा है. आई डोंट नो इफ इट्स पॉसिबल टू ऐड सम कलर. समय भाई ओबीएस में ना वो कलर ऐड कर दे, मजा आ जाएगा भाई. हाँ 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 हाँ.
इट इज एक्चुअली F2। कई लोगों ने सही बोला, F2 G3 ऑल्सो, बट आई थिंक ये पूरा कॉम्प्लेक्स पे नाइट की नजर है, तभी बिशप E1 इज नाउ डूइंग अ ग्रेट जॉब। एंड नाइट F4, मैग्नस कहते हैं भाई मेरा बिशप डिफेंड कर रहा है, so let me just kind of go on the offensive. I'm going to go on the offensive and I'm not going to back down. So bishop D6, look at this. Knight towards G3, bishop towards G3, both players trying to attack the other side. भाई कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, आज 2 पॉइंट्स मिलेंगे पर विन भाई। दैट इज द गोल फॉर डे नंबर 2। सो लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग भाई, मजा आ रहा है यार। मतलब इमेजिन मुकेश विंस भाई, ही वुड गो टू 6 पॉइंट्स, दैट्स इनसेन। वाओ भाई, दिस कुड गो क्रेजी। बाय द वे आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। बाय द वे क्रोम टैब शेयर करना चाहिए, एंटायर स्क्रीन करना चाहिए समय भाई? टैब करना चाहिए। ओके, आई विल शेयर द टैब दिस टाइम। वो वाला शेयर कर दिया मैंने, एंड आई हैव क्लोज्ड दिस वन। डू चेक। आया क्या? चैट बोर्ड जाएगा 1 सेकंड के लिए, बट इट विल बी बैक सून। वी आर ट्राइंग टू ऐड कलर टू द बोर्ड, दैट इज द गोल देयर, बट अभी दिख नहीं रहा है मुझे। हाँ, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। बोर्ड उड़ गया, हाँ भाई। चिड़िया उड़ सकती है तो बोर्ड क्यों नहीं भाई? व्हाट इज बोर्ड, व्हाई शुड चिड़िया हैव ऑल द फन? मीनवाइल, बाय द वे, नाइट C5 खेल दिया है। आई थिंक यू विल हैव द मूव्स प्रीटी सून, चैट। सो फिलहाल के लिए हुकेश कंप्लीटली इक्वल, एंड मैग्नस हैज मेड अ स्लाइट एरर आई फील। ये जो F3 पॉन, F पॉन पुश कर दिया है, टिपिकल सहाज डायलॉग, बट ही शुड नॉट हैव पुश द F पॉन। आई गेट अ फीलिंग कि ये कल को बाइट कर सकता है मैग्नस कार्लसन को। अच्छा, एक और लिंक दिया क्या? रुको रुको, आई शेयर इट ऑन दैट लिंक नाउ। ओके, लिंक पे लिंक, लिंक पे लिंक, लिंक पे लिंक, लिंक पे लिंक। हाँ, नाउ आई हैव शेयर्ड इट अगेन सो भाई। ऑसम। हाँ, बोर्ड आ रहा है, काउंट करो। 10, 9। ओह, जल्दी आ गया। नाइस। हाँ, तो चैट बढ़ा चुका है, एंड यू कैन सी चैट। आई एम गोना गो बैक टू द मूव्स जो हमने मिस करी, 1-2 मूव्स। F5 देखा था, बिशप E2 खेला, नाइट E4 तक वी सॉ, नाइट A4, बिशप D6, F3। दिस वाज द मूव व्हिच इज वेरी रिस्की, बिकॉज आपने F पॉन पुश कर दिया है। नाउ देयर इज नो F2 पॉन डिफेंडिंग द G3 पॉइंट, सो कल को सैक्रिफाइस H5 H4 कैन बी इवन मोर डेंजरस। नाइट C5 आता है, क्वीन E7, नाइट D3 एंड रुक C7। गुकेश दोनों साइड पे खेलते हुए, रुक्स भी डबल कर रहे हैं, किंग साइड भी रेडी है, so he's not committing to a certain side of the board, he's keeping it flexible, chat, he's keeping flexible. And by the rook c8 played, now doubling up the rooks, putting pressure on the c file. क्या करेंगे यहाँ मैग्नस? Will he play b5? टाइम पे गुकेश is slightly behind by just like around 30 seconds. So फिलहाल के लिए टाइम मैनेजमेंट not so bad for गुकेश, but कहीं ना कहीं मैग्नस also reaching that time control जहां पे टाइम बैलेंस हो जाएगा। बेस्ट मूव b5 played, नाइट को धक्का मारते हुए। यहाँ पे नाइट a5 is the move you want to play, but there is the bishop attacking the knight, so you can't do that। नाइट को वापस जाना पड़ेगा, but then maybe white is also completely fine, right? Because c file मेरे कंट्रोल में है। लैग क्यों आ रहा है यार? आई डोंट सी द लैग। आई सी द लैग, आई सी सम लैग, बट आई एम नॉट श्योर इफ इट्स ऑन माय एंड और सब। चेक करना, अपना स्पीड चेक करना भाई। Meanwhile, by the way, a4 played, rook c1 is the next move, I'm pretty sure about it। 3-1 कैसे होगा ड्रॉ के लिए? 0.5 आई थिंक ड्रॉ के लिए 1 है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन चैट, जहां तक आई एम अवेयर। बाय द वे, टाइम पे 6.5 minutes ईच। ओके, 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 हाँ, लुक्स गुड। बोर्ड इज लैगिंग, ओके, लेट्स ट्राई टू कीप फिक्सिंग इट भाई, जो भी हम कर सकते हैं। मीनवाइल नाइट F7 played, so now controlling the E5 square and the G5 square, that is important because white has control over it right now। A5, so मैग्नस कह रहे हैं भाई देखो, सिंपल सी बात है, he is trying to prepare his pass pawn for a queen side initiative। यार उसको प्लान करना है कि जल्दी से मैं रेडी करूं, कोई भी रेस हो, कोई भी रेस हो यहां पे, उसके लिए मेरे पॉन ज्यादा एडवांस्ड होने चाहिए। दैट इज द गोल फॉर मैग्नस। जितना एडवांस करेंगे उतना पॉन क्वीनिंग स्क्वायर के पास है। सो गुकेश को देखना है अब, डज ही वांट टू सिट टाइट
and wait for exchanges on the c file, or does he want to play g5 and potentially create a kingside attack? It is a tough choice for the world champion right now. What will he decide to do? He's taking that decision right about now. He might think for around 30 seconds or 1 minute. So much lag, really? क्या बात कर रहे हो भाई? कैसे? स्पीड तो बढ़िया है यार. मेरा भी आ रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है. नॉट श्योर एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग. अच्छा, मैं आपको स्टार्टर हो रहा हूँ क्या? Weird. बोर्ड में लैग बस. ओके. भाई लैग. भाई बोर्ड लैग हो रहा है कि मैं पहले दोनों? बोथ कैमरा या बोर्ड? पहले तो बताओ. कम ऑन चैट, लेट्स क्लैरिफाई द प्रॉब्लम. भाई बट बोर्ड आई सी मोस्टली बोर्ड. आई सी मोस्टली बोर्ड. एक दो कैमरा भी दिख रहे हैं. बोथ भी दिख रहे हैं एक दो. एक बंदा लिख रहा है भाई नहा के आओ. भाई नहाया हुआ है भाई. यार यार रात को 12 बजे स्ट्रीम कर रहे हैं भाई. अब जस्ट बिफोर स्ट्रीम तो हिलाऊंगा यार. By the way, A6, oh, by the way, only move B6. Gukesh has to find B6. Because, Chad, if you take, then suddenly Rook takes and A7 is quite weak. So he has to find B6. We are reaching the crunch zone now. एक बंदा कह रहा है नहीं है लैग भाई. हाँ ये बंदा मस्त है भाई. एक ही बंदे को लैग नहीं है. Gukesh, come on. B6, 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 B6. Come on. You have to find B6. Do not take that pawn. Do not go gentle into the A6 square. Play B6. Come on, let's go. Come on, Gukesh. You have to find the move. You have to find the move. बोर्ड में ला गया साहिल भाई. आप जीएम टाइटल अच्छा, आपका जीएम टाइटल लैग हो रहा है भाई. स्ट्रीम का फिक्स हो जाएगा बट जीएम टाइटल लैग फिक्स नहीं होगा भाई. ही विल एब्सोल्युटली भाई. Come on, come on, come on, come on. B6. Bhai, Gukesh is still thinking. He's still thinking. I'm not really sure what's happening. Oh, he finds the best move, but he took a lot of time, more than a minute for this. Okay, Rook C1 now. CARLSEN gearing up to reach the C6 square. Oh, that's a blunder. That's a big mistake by the world champion. Oh no, why did he play that? It's weakening the d5 square. It's weakening the f5 square. I think Gukesh did not want to sit passively and now he's struggling. Oh no, that's not a good move. That's like overextending himself. I think थोड़ा passively खेलना था वहां पे. होता है कि प्रेशर होता है जिंदगी में और गुस्सा निकल जाता है किसी के ऊपर, इवन दो यू डोंट इंटेंड टू. ये वही गुस्सा है भाई. ये वही गुस्सा है. ही फेल्ट द प्रेशर एंड निकल गया बस. उफ. यार मैग्नस को हराना है. मैग्नस भाई एक गलती कर दो यार, कोई बढ़िया सी भाई. एक गलती फिक्स कर, गलती कर दो भाई प्लीज. बोर्ड लैग. I'm gonna check. Okay, I'm gonna make some arrows and see how much is it lagging. यार मुझे तो लैग अभी अभी तो नहीं दिख रहा एटलीस्ट. बाद रुक C7 मार दिया है एंड नाउ आई थिंक क्वीन C7 वेरी इंपॉर्टेंट. एटलीस्ट सी फाइल तो मिले. एंड नाउ द क्वेश्चन इज D takes C5, knight takes, bishop takes. How weak is this pawn? How weak is this pawn? I think very very weak actually. Usually chat एक चेस में प्रिंसिपल होता है टू वीकनेस प्रिंसिपल. दो वीकनेसेस अगर ओपोनेंट के पास है दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफेंड. ऐसा लग रहा है कि यहां पे तीन है. सो इट्स गोना बी इवन मोर डिफिकल्ट. Although Magnus has to take on C5, अगर ये knight यहाँ कुछ C4 पे आ जाए तो we might get some counter play, but I don't think यहाँ पे Magnus miss करेंगे. He will take on E5. अच्छा, pieces are moving slow. Wait, I can try to do something there. Is it because of this? Wait. Chat, अब बताना piece movement, ठीक है? अब बताना जरा, ठीक है? Let's see the piece movement now and let me know now. Is it lagging now, chat? Come on, अब बताना, yes or no? Okay, bishop takes. Magnus finds the best move, and now I think Gukesh struggling, chat, and bishop d3 best move yet again. Best move yet again. So putting pressure on the f5 pawn. अरे भाई तो लैग नहीं था मेरे दोस्त. अरे भाई इट वाज बोल्ड एनिमेशन.
चेस्कॉम की बोर्ड एनिमेशन को लैग बोल दिया भाई। भाई यार लेवी का भी है भाई एनिमेशन यार ये। बताओ भाई, ओ माय गॉड। वी आर ऑल नूब्स चैट, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग प्रोड्यूसर, इंक्लूडिंग यू, वी आर ऑल नूब्स। नेट तो लैग होनी था भाई, मैं भी कहूँ यार 300 एमबीपीएस पे खेल रहे हैं भाई, लैग कैसे है? अच्छा नहीं था एनिमेशन, वो अलग बात है, वो अलग बात है, दैट आई कैन एग्री। हाँ, अच्छा अच्छा, जो भी था अच्छा नहीं था, ओके दैट आई कैन एग्री भाई। मीनवाइल चैट, वी आर रेडी, F5 पॉन D5 पॉन दोनों में प्रेशर है। सो एंड लेट्स नॉट फॉरगेट द G5। भाई बहुत वीकनेसेस है भाई। यूजली जब डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर एक दवा देता है कि भाई ये वीकनेस है आपको, तो 10 हो तो क्या करोगे भाई, दिन में 10 टेबलेट नहीं खा सकते भाई। इट्स नॉट पॉसिबल। अरे यार, मैग्नस ने एक सेकंड में मार दिया वो पॉन भाई, एक सेकंड में। नेक्स्ट पैक्स भाई आई थिंक परसों आ रहे हैं, परसों सुबह तक। सो अभी तक पुराने वाले से ही काम चलाना पड़ेगा, आज मैं ऑर्डर करके आ गया। पॉइंटर भी लैग कर रहा है भाई, कौन सा पॉइंटर? अच्छा ओ, चलो वो तो भाई आई थिंक फिर कुछ होगा चक्कर। By the way, King G2, best move by Magnus again. Chat, let's come back to the game now. We have almost 3,000 people watching. Sorry for that, jo bhi tha wo. It was more of animation than lag. But regardless, we have solved the problem. Let's come back to the games now. Gukesh, 6 games today. Two against Magnus, world number 1. Two against Hikaru, world number 2. Two against Caruana, world number 3. Pehla Magnus, black pieces, struggling right now. Can he hold this game? Let's find out. Time pressure, I think already 1.5 minute, almost 2 minute पीछे यहाँ पे गुकेश। कैसे मैनेज करेंगे इज द क्वेश्चन। उफ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। मैग्नस से एक दो गलतियां तो चाहिए, बिकॉज राइट नाउ चैट बिशप पेयर खुल चुका है। इमेजिन अ सिचुएशन जहां पे ये बिशप इस डायगोनल पे है, दैट इज रिजाइंस, like that is basically resigns. Imagine if the queen was somewhere here, that is also resigned. So the only reason why Gukesh is not completely lost is because the queen is passive and the bishop is passive. अगर ये activate हो गए, the game is gone, the game is completely gone instantly. क्या सुपर चैट है भाई, मुझे भी नहीं पता। क्विक मूव होते ही बोर्ड, अरे अच्छा, बोर्ड थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है भाई। भाई देखो लाइफ में एवरीबडी, एज वी ऑल नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म अंडर स्ट्रेस। वी कैन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम टॉप चेस प्लेयर्स, एंड बोर्ड को भी सेम प्रेशर है। वी ऑफन ask how the chess players are doing, but nobody asks how the chess board is doing. So hats off the chess board for fighting for so many years, for us thousands of years, and giving us entertainment and some amazing chess. Meanwhile, टाइम पास को आगे छोड़ते हैं, गेम्स पे आते हैं। फिलहाल के लिए गुकेश उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू होगा, कि ये यहाँ पे प्रेशर की वजह से जो मेंटेन यहाँ पे किया हुआ है, ही विल गेट सम अपॉर्चुनिटी, एंड पोटेंशियली लॉन्ग टर्म ये जो पास पॉन है, आई मीन आई एम कॉलिंग इट अ पास पॉन, इट्स मोर लाइक अ वीक पॉन, बट पोटेंशियली कल को ये कुछ काउंटर प्ले दे सकता है। बट एज ऑफ नाउ इट लुक्स डिफिकल्ट। टाइम सिचुएशन ऑल्सो 1 minute and 40 seconds, it's going down by the second, looking very difficult right now chat. But let's not worry too much. कल भी उकेश हारे थे, फिर एपिक कमबैक किया था अगली 5 गेम में, and black pieces है, so it would not be too crazy if he loses, but we are still hoping for the best even in this game. पूजा गैम्बिट यार पहले गेम में नहीं यार, एक दिन में एक बार होती है भाई, सो वी कैन नॉट डू इट इन द फर्स्ट गेम इटसेल्फ, वो भी बैलेंस के शायद काम भी ना करे। फिलोसफर सर टिको, अरे भाई बस मेरा अभी तुमने सुना नहीं है भाई, कितनी ज्ञान ज्ञान पेलता हूं भाई, मैं बहुत पेलता हूँ, कोई मिलना भाई और पेलूंगा। बाद में बिशप D4 प्लेड, सो दैट्स ऑप्टिकली एन एक्सीलेंट मूव। इमेजिन क्वीन कूद के यहां पाती तो ओह मजे आते, बट कूद इतना नहीं कूद सकती, घोड़ा नहीं है। सो बट या एटलीस्ट देयर इज सम थ्रेट राइट, कि लॉन्ग टर्म आई कैन प्ले क्वीन C1, क्वीन G1, एटलीस्ट क्रिएट सम चांसेस। सो एंड बिशप E3 भी आ रहा है, जस्ट लॉकिंग some of the white pieces in. So at least practically a good move. uh, Sahil, please conducting an online poll worldwide to vote for Sahil bhai as prime minister. So 2800 लोग देख रहे हैं, so 2800 वोट आएंगे भाई उसमें मैक्स। क्वीन, अबे ये क्या भाई, आई होप मैग्नस ब्लंडर्स यार, वी आर ऑल होपिंग फॉर द सेम, बट यू नो व्हाट, पिछले 20 साल से सब लोग होप कर रहे हैं, आज तक हुआ नहीं। साल में एक बार होता है, एंड इस साल मुकेश के अगेंस्ट ही हो चुका है वो, दोबारा होने के चांसेस बहुत कम। By the way, 1 minute for Gukesh, yeah. Let's not forget that he is 1 minute. Oh no, 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 Gukesh भाई थोड़ा जल्दी, थोड़ा जल्दी।
मैग्नस बाय द वे थोड़ा टाइम लेते हुए, यहाँ पे 3 मिनट है उनके पास, ट्रिपल द टाइम। वर्ल्ड कप टिकट चैट बहुत जल्दी अनाउंस होने वाले हैं। आई थिंक, आई एम गेसिंग कल तक आ जाएंगे, कल की स्ट्रीम तक। सो वील शेयर द लिंक इफ दैट्स ट्रू। एंड मीनवाइल चैट आल्सो, लेट मी शेयर दिस। आप में से कितने लोगों ने कभी कोई गोवा ट्रिप बनाया है जो नहीं हो पाया? कितने लोग? एक बार यस या नो लिख दो भाई। जो लोग का गोवा ट्रिप कैंसिल हो, एक बार यस लिख दो भाई। बाय द वे, क्वीन ई6, मैग्नस कार्लसन रेडी टू क्रिएट द फाइनल अटैक। क्या गुकेश डिफेंड डिफेंड कर पाएंगे? लुकिंग डिफिकल्ट राइट नाउ। बाय द वे, Caruana has won against Hikaru, so big upset there. And now Caruana in second place along with Magnus. Cancel each time. So chat, you have a golden opportunity, ठीक है, to win a all expense 2 day, I think 2 days trip to Goa for the World Cup, get access to the commentator zone and so on. And उसके लिए 2-3 कॉन्टेस्ट रन कर रहे हैं हम. There are arena, I think, tournaments you can play. There are, caption contests. There are tagline contests. So follow the Chesscom India and Chess India Instagram handles to get more information. So you have a chance to win a trip to Goa. Bye. Do not miss it out. By the way, Queen D7, not the best move. Ooh. Apparently, the best move is Queen C6. But that's very hard. देखो, मैग्नस है, बट क्वीन C6 नहीं निकाल सकता यार. बिकॉज टू अलाउ दिस यू हैव टू बी एब्सोल्युटली श्योर ये पॉन कैप्चर नहीं हो जाएगा. नाउ मैग्नस विल बी श्योर, आई एम श्योर, बट स्टिल लाइक ही विल नॉट टेक दैट रिस्क. इट्स नॉट प्रैक्टिकल. इट्स जस्ट टू गुड इवन फॉर मैग्नस. गोवा ट्रिप इज 100 किलोमीटर भाई. मेरे लिए भी 1000 किलोमीटर नहीं है मतलब, बट स्टिल When to go for a school trip in 2018? भाई मुझे भी बहुत टाइम हो गया. मैं भी 18 में गया था लास्ट टाइम. And now let's see what happens, chat. What will Magnus find? 20 seconds for the world champion. He needs to come up with something good here. Otherwise, Magnus Carlsen about to win the first game. I know we can get a revenge match, but ideally, if we can hold this, अगर जादू से हमने ये गेम होल्ड कर दी, तो सडनली मैग्नस का मोरल डाउन हो सकता है. मार मार गुकेश, मार पॉन. Golden opportunity for the world champion to get a repetition. Will he have the guts to take the pawn? Very difficult to find. मौका था, मौके पे चौका नहीं मारा लेकिन गुकेश ने. टफ वन दो, वेरी वेरी टफ टू फाइंड दैट वन, चैट. वेरी टफ. उसमें आई थिंक पीस मर रहा था. यू वर, आई डोंट नो क्या क्रेजी लाइन थी कुछ. नाउ चैट, द प्रॉब्लम इज, इस पॉन को रोकने के लिए ये बिशप काफी है. एंड व्हाट डू यू थिंक इज द विनिंग प्लान फॉर मैग्नस? वेरी सिंपल. बिशप D6, बिशप B8, टक टक एंड क्वींस, एंड देयर इज नो डिफेंस हियर. या मैग्नस कार्लसन इज गोना विन नाउ. बट ठीक है, अगली गेम में कमबैक करेंगे. बीनवाइल यहां पे गुकेश अभी भी उम्मीद में है, कुछ कुछ जादू. यू नेवर नो चैट, ब्लंडर कभी भी हो सकता है. बट या आई थिंक F4 यहां पे काफी लॉजिकल, किंग को पास लाने के लिए मैग्नस के लिए, प्लेड बाय मैग्नस. बाय द वे, एक्यूरेसी देखी जाए तो मैग्नस कार्लसन 94.7, गुकेश 89.7. मैग्नस कार्लसन डोमिनेटिंग गेम नंबर 1, एंड नाउ किंग मूविंग अप टुवर्ड्स द सेंटर. Come on, come on, come on, come on. Two wishes are a monster. Well said. Lose with Magnus and win with others. Easy, please top rank. Bhai, it works as long as Magnus loses to somebody. So Magnus did lose to somebody yesterday, but aaj win ke liye 2 point hai. So, he can still, Magnus can still kind of catch up, and he will catch up after this game, because Magnus will go to 5.5 points and Gukesh will remain on 4. So he will be in second place after this game. Your arrow is lagging. Wow. पहली बार जिंदगी में ऐसा किसी ने मुझे बोला है. भाई मैं टाइम कम होता हुआ, क्या कोई आखिरी ट्विस्ट है कहानी में? कुछ हो सकता है क्या? इज देयर समथिंग, some last trick Gukesh can somehow create? I think very unlikely. Magnus not allowing the king to even move forward. What clear domination. Yeah, and this is just done. Yeah, bishop C6 आ रहा है. It's just completely over. ये तो मैं भी जीत जाऊंगा actually. Yeah, king E6. Yeah, just takes and takes. Yeah, and it's over. खत्म. Yeah, I think time to resign for Gukesh, and game instantly चालू हो जाएगी. I think कुछ 4 मिनट का गैप होता है. Do not go anywhere. Game number 2, Gukesh के होंगे white pieces. So it's going to be a revenge match. Can he strike back? 2 points for a win, exactly. So भाई 5.5 ही होंगे ना भाई उसके मैग्नस के, और कितने होंगे? 3.5 plus 2, 5.5.
सर माय लाइफ इज लैगिंग ब्रो, गेट इन लाइन भाई, हर किसी की लैग कर रही है भाई 2020 से। बाय द वे 50 सेकंड्स फॉर मैग्नस, मैग्नस थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं भाई थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं भाई, थोड़ा जल्दी विन करना चाहिए उनको फैबी वन, यस यस, ये तो मैं भी जीत जाऊंगा भाई। कह रहे हैं विश्वजीत जी, बिल्कुल आई थिंक आप भी जीत जाओगे एक्चुअली। By the way, now he can just take and play bishop b8. That is just completely winning. He can just take the pawn. And yes, Gukesh resigns. And इसके साथ ही Magnus Carlsen takes sole lead in this event. 5.5 पॉइंट के साथ। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। भाई ये होगा सुनहरा मौका गुकेश के पास। कम बैक गेम, वाइट पीसेस, मैग्नस को हरा के दोबारा सोल फर्स्ट ले लो। कीप इन माइंड मुकेश विंस, ही विल गो टू 6 पॉइंट्स एंड विल हैव सोल लीड एंड कारुआना हिकारू कैच अप नहीं कर सकते। सो चैट, पोल लगा रहा हूं मैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोल, ध्यान से वोट करना भाई लोग, ठीक है, बहुत ध्यान से। दिमाग दिल जिसकी भी सुननी है भाई, लेकिन ध्यान से करना। सो गुकेश के हैं व्हाइट इस बार, लेकिन यार ध्यान से। गुकेश वर्सेस कार्लसन, Gukesh wins, Carlsen wins, and a draw. Let's see. Ooh, bhai, that was hard. Next game would be a draw. I think it depends. So, will Gukesh push for a win? If Gukesh feels कि मैं से draw ले लेता हूं and let me beat the others, then he might play a drawish opening जहां पे उसको draw मिल जाएगा. बट इफ ही थिंक्स कि भाई नहीं मुझे विन करना है, देन आई थिंक ड्रॉ के चांसेस बहुत लो हो जाएंगे, बिकॉज मैग्नस ऑल्सो विल काउंटर अटैक, ही विल नॉट गो फॉर द ड्रॉ एज वी नो, या ही विल ऑलवेज पुश। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। आई थिंक ड्रॉ नहीं होगा मुकेश को जानते हुए, आई थिंक ही विल गो फॉर द विन। सो लेट्स सी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। योर फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस, यार इतना मैं मूवीज देखता नहीं हूं आजकल, तो फेवरेट कोई है नहीं सच, बट या देयर आर अ फ्यू। आई नो वी प्रेडिक्शन दैट डजंट मेक सेंस, जस्ट एंजॉय द गेम। अरे शैज भाई यार दिल की बात छिली, बस एंजॉय करो। बट लेकिन बस जीतेंगे तो ज्यादा एंजॉय करेंगे। मैंने गुकेश से खुद पूछा था, चैट, आई इंटरव्यूड गुकेश, आई थिंक दिस वाज फ्रॉम लास्ट ईयर दो। मैंने उनसे खुद पूछा, सो डू यू थिंक enjoying the game matters more, or do you think कि winning the game matters more? उसने बोला कि भाई both are important but you enjoy the game more when you win. So that's the answer. I think जीतना भी जरूरी है, you cannot really avoid it for long, and if you're losing you don't really enjoy playing the game. So Gukesh wants to win, he would not like to lose two in a row. Let's see if he can do so. Nahi, Sydney Sweeney is not playing this tournament. Piyush Pandey ji, give one beginner tip, bro. I think number one tip is solve daily tactics. Daily, मतलब कुछ भी हो जाए, 15 मिनट, आधा घंटा, 10 मिनट, जितना टाइम है, खेलो, डेली टैक्टिक्स सॉल्व करो भाई। दैट इज नंबर वन एडवाइस फॉर बिगनर्स। भाई फायदा ही नहीं है, तुम जितना भी क्वींस गैम्बिट देख लोगे, अगर क्वीन ही देनी है चौथी चाल में, सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ द गैम्बिट, राइट? 2 पॉइंट क्यों मिल रहे हैं कि दिवाली धमाका ऑफर चल रहा है भाई वो टूर्नामेंट फॉर्मेट ही है भाई कि डे 1 को 1 पॉइंट, डे 2 को 2 पॉइंट, डे 3 को सीधा मतलब वो पीयूष पांडे वाला गिफ्ट, गेस्ट 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 वो साइनिंग ऑटोग्राफ मिलेगा। आज मैग्नस कार्लसन जीतेगा भाई, भाई लुक्स लाइकली एज ऑफ नाउ, बट यू नेवर नो, यू नेवर नो। लेट्स सी भाई, पहला गेम एक्साइटिंग नहीं था, आई अग्री, आई थिंक थोड़ा लैग भी था वहां पे। तो लैग मतलब व्हाटएवर एनिमेशन, तो हम थोड़ा फील नहीं कर पाए गेम, बट आई थिंक ये वाले हम थोड़ा और फील करेंगे। तेरह रेटिंग पे क्या स्ट्रैटेजी रखूं भैया? भाई 1300 रेटिंग पे स्ट्रैटेजी रखो कि भाई, मतलब स्ट्रैटेजी होता क्या है पहले, कि 1300 पे भाई आई थिंक यू रियली नीड टू सॉल्व सो मेनी टैक्टिक्स, इससे पहले स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत भी पड़े। बाय द वे हिकारू गेम हैज स्टार्टेड, सो लेट्स हैव अ लुक अंटिल देन। जब तक के लिए गुकेश की गेम चालू होती है, आई थिंक उनकी गेम पहले खत्म हुई थी तो पहले चालू हो गई, सो इट विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट मिनट आई थिंक। जल लीजिए, अरे भाई आप बोलेंगे तो हम जल भी ले लेंगे यार, हमें क्या है, H2O ही है तो H2O ही तो है। और बोलो भाई क्या करना है? Wookie wins, then he will have 6 points. Yes, and he will go to sole lead ahead of everybody else. CSK 2 year ban. क्या बात कर रहे हो? Really? That is insane if that's true. Really?
भाई दैट इज क्रेजी। जय हिंद कह रहे हैं ईविल जी। अरे भाई ईविल जी जय हिंद कह रहे हैं, दैट इज अ बिट वियर्ड बट ओके आई विल टेक इट। 2000 आलू टिप्स। 2000 टिप्स चाहिए कि 2000 रेटिंग के लिए टिप्स चाहिए? आई थिंक दैट्स अ बिट डिफरेंट राइट। 2000 टिप्स में शायद दे नहीं पाऊंगा अभी। बाय द वे कार्लसन और कारुआना जी खेल, सॉरी हिकारू और कारुआना जी खेल ही नहीं रहे हैं। मैं 800 रेटिंग पे स्टेट खेल के आया हूं भाई। कौन सा स्टेट में खेल रहे थे भाई? लिक्विड स्टेट में ही खेल रहे होंगे कि आंसू ही टपक रहे होंगे भाई। 800 रेटिंग पे खेल के तो बस पिटाई हो रही होगी भाई टूर्नामेंट में। एंड बाय द चैट, यहां पे फिलहाल के लिए कारुआना स्लाइटली बेटर। यू नो व्हाट, ये गेम मजा नहीं आ रहा भाई। चलते हैं गुकेश और कार्लसन की गेम में, बिकॉज इट्स स्टार्टिंग पॉइंट टू E4। लेट्स गो भाई, लेट्स सपोर्ट आवर वर्ल्ड चैंपियन। एक बार भाई गुकेश ओपी स्पैम कर दो चैट में भाई, फुल सपोर्ट टू आवर वर्ल्ड चैंपियन। कैन ही विन टुडे, बीट द ग्रेटेस्ट ऑल टाइम। बाय द वे काफी इंटरेस्टिंग ओपनिंग चॉइस बाय मैग्नस कार्लसन। यहां पे D65 खेला है उन्होंने, काफी लॉजिकल ओपनिंग गुकेश के द्वारा। बिशप G4। बाय द वे भाई यहां पे वो गैम्बिट हो सकती है भाई। नाइट C3, बिशप G4, H3। विल मैग्नस कार्लसन ब्लंडर दिस चेक 6? अगर कार्लसन ने ये ब्लंडर किया तो एक बंदे को 1 साल की चेस का मेंबरशिप भाई। आय हाय मैग्नस भाई आपको, मैग्नस भाई गलती भाई, गलती तो कार्लसन की है भाई। गलती तो कार्लसन की है। तुम्हारी मेंबरशिप कार्लसन भाई ले गए। भाई होता तो कितना फील आया थी ना भाई। बाद में बिशप E6 खेल दिया मैग्नस ने, दैट्स अ रिस्की मूव एक्चुअली। बिकॉज मारने के बाद आपका थोड़ा सा किंग थोड़ा सा ओपन हो गया है, एंड यू आर स्टिल 3 मूव्स अवे फ्रॉम कैसलिंग। सो गुकेश यहाँ पे जल्दी से कुछ C3 D4 करके सेंटर ले सकते हैं, एंड ही कैन क्रिएट सम अटैकिंग चांसेस, आई वुड से सम पोजिशनल प्लसेस एज वेल। नाइस मूव, लव दैट मूव। बहुत ही उम्दा चाल। दोनों पॉन सेंटर सेंटर में रख रहे हैं। ओके, अब पॉन अटैक्ड है, सो आई थिंक रुक E1 खेलना पड़ेगा या क्वीन E2 खेलना पड़ेगा E4 बचाने के लिए। देन वी वांट टू प्ले D4 एंड चैट, लेट्स लुक एट दिस। लेट्स से रुक E1, बिशप E7 एंड D4। मारने के बाद हमारे दोनों पॉन 4th रैंक पे है, मैग्नस के दोनों पॉन 6th रैंक पे है। मतलब हमारे पॉन सेंटर में है, मैग्नस के नहीं है। और हमने क्या सीखा? चेस में सेंटर ऑक्यूपाई करना बहुत जरूरी, बिकॉज उससे आपके पीसेस को ज्यादा स्पेस मिलती है। दे कैन क्रिएट मोर अटैक्स, मोर इन्फ्लुएंस ओवर द बोर्ड, मोर इन्फ्लुएंस ओवर योर ओपोनेंट्स हाफ ऑफ द बोर्ड, एंड दैट्स व्हाई गुकेश इज बेटर राइट नाउ। ऑल्दो इट इज मोर अबाउट मैग्नस ओपनिंग चॉइस, he wants to play something tricky, and but again, it doesn't matter at the end. Gukesh wins, he wins. साहिल भाई एक दिन चेस वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, देख लेना दोस्तों। थैंक यू भाई फॉर लेटिंग मी नो कि इलॉन मस्क मुझे पहले ट्रिप पे मार्स भेज रहे हैं, मुझे पता नहीं था। दैट्स ग्लैड टू नो। मैं पैकिंग करना चालू करता हूं। मीनवाइल बिशप सिंह खेल दिया है, मैग्नस जी एक मूव दूर है कैसल से, सो जल्दी से खेल दो D4 मुकेश भाई, नो टाइम टू वेस्ट हियर, लेट्स गो D4। दिस इज द सेकेंड मैच ऑफ राउंड 1 टुडे। सो बेसिकली डे 1 खत्म हो गया। अब डे 2 को भी 6 गेम्स है। 6 में से सेकेंड गेम चल रही है। फर्स्ट गेम गुकेश लॉस्ट टू मैग्नस, बट द ब्लैक पीसेस, कैन ही कम बैक इज द क्वेश्चन। Come on, put the radio. Oh, sorry, खाना ही होगा भाई। 5.5, he'll get 2 points. Absolutely. If Magnus wins, he will go to 7.5. उनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। By the way, D4 played. Excellent move by Gukesh. The only question in my mind is what time बहुत ले रहे हैं। 1 मिनट पीछे है already. Come on, come on. साल भाई प्लूटो के वर्ल्ड चैंपियन है। प्लूटो नहीं यार, प्लूटो एक्चुअली प्लैनेट नहीं है। नील डिग्रास टाइसन ने उसको डिस कर दिया, सो maybe मार्स से काम चलना पड़ेगा। D5 by the way would be a bad move. I mean, I'm sorry, it would be a good move now I think because castle कर लिया है। So I think D5 के बाद खेल सकते हो, and the idea is मारने के बाद pawn से मारना है। So you're basically attacking the knight, and knight को दोबारा चलना पड़ेगा। It doesn't have a good square here, so you have to go knight B8, but it's a temporary advantage. अगर आप कुछ भी नहीं करोगे ना, black will slowly at some point bring the knight to D7, knight H5, knight H4, and he might even be better. So आपकी जो advantage है temporary है, so you have to instantly play knight G5 and try to get to E6. So D5 is good, but it's very, very committal and you have to strike instantly.
कोई गलती उसके बाद अफोर्ड नहीं कर सकते। गुकेश 2 मिनट पीछे हैं। दैट्स अ बिग 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 फैक्टर इन दिस गेम ऑलरेडी। Gukesh, bhai, you have to play faster. You have to play faster. So far, accuracy wise, Gukesh 99.4, Magnus 98.3. But the difference is in the clock, 2.5 minutes behind Gukesh. And he takes on E5, doesn't find the best move. But now, Magnus ke liye chat. Question for you. What is the best move for Magnus, which Magnus did not find? He did not find it. The best move was knight g4. अगर ये मारते हो देन बिशप d6 एंड मैग्नस वुड हैव लॉन्च्ड अ स्केरी अटैक, बट मैग्नस को नहीं निकाला उन्होंने, नाइट से मार दिया, नाइट टेक्स पॉन टेक्स एंड नाउ गुकेश इज अगेन स्लाइटली बेटर। बच गए भाई, दैट अटैक वुड हैव बीन डेंजरस। एंड नाउ आई थिंक यहाँ पे डबल पॉन है, दैट इज द मेन फैक्टर। आई थिंक एंड गेम में दिस कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर मैग्नस। सो आई थिंक slowly develop करने के बाद pieces, once the knight is on, maybe even f3 actually, knight d2, knight f3, attacking the e5 pawn would be a great maneuver here. But time wise, 3 minutes behind again. Pawn sack for tag, yep, Magnus I think wanted to play it solid. Commentary करते हुए, I love commentary, I love chess, I love commentary. That's the main goal. Magnus is maintaining his lead. Absolutely. Gukesh needs to play now. The time pressure is real. More than 3 minutes now. Gukesh bhai, chal do. I think it's a committal decision, right? Because आपको queen trade करनी है कि नहीं, you have to choose right now. Do you want to head off into an endgame against Magnus, the greatest endgame player of all time? Or you avoid the queen trade, but potentially black can have an attack, as you can see now. So, it's not an easy choice. Four minutes lead, bro. What's happening? Magnus ने 30 सेकंड भी इस्तेमाल नहीं किए. Chat, this is where Gukesh has to, बोलते हैं ना, sharpen कह रहा हूं, tighten his belt and just decide कि I have to play quickly. मुकेश को नींद आ रही है? आई डोंट थिंक सो भाई, वहां पे रात नहीं है, वहां पे दिन है, वहां पे दिन के 12 बज रहे हैं अभी, आई थिंक 12:30 बज रहे हैं, सो दिन में आई डोंट थिंक नींद आई मुकेश को, अनलेस वो हमारी तरह नाइट आउट में विश्वास रखते हैं। आई डोंट थिंक सो, ही इज द वर्ल्ड चैंपियन against Magnus. Gukesh feels a little nervous. I think everybody in the world feels a bit nervous, but what is Gukesh doing? Chat, this is serious now. 5-minute lead for Magnus Carlsen. I think at this point queen trade कर ही देना चाहिए, because now you don't want to face an attack. Come on, Gukesh. Bro, what is happening? This is what is happening? भाई रैपिड में कोई वॉशरूम जाता नहीं है भाई. I once saw, I think it was at the Millionaire Chess Open, jahan pe, I think it was one US player, Ray Robson, who had to rush to the washroom against Wesley So, and वो दौड़ के बुलेट की तरह गया था भाई. But usually people never go to the washroom during, क्या चल रहा है भाई? आज गला गया अंश भाई मेरा, तो आज चिल्लाना कम होगा भाई. What is happening? भाई what is happening? सही भाई, सो क्या क्या गुकेश में ताने का वो डायलॉग याद आ रहा है यार. सो क्या क्या गुकेश, है ना, वही डायलॉग याद आ रहा है मुझे. विद दैट म्यूजिक. अरे भाई चल क्या रहा है यार? ओ माय गॉड, ही जस्ट प्लेड आफ्टर अ 4-minute थिंक. I cannot believe this. Gukesh Tomaraju took 4 minutes in a 10-minute game. Will this be a clip that future YouTubers will milk for the next 30 years? Or will this be a tragic loss which will give Magnus a 4-0 score against Gukesh today? It's an important move. 92 saying no to the queen trade. Wow. A bold move by the world champion.
Too slow, but is he too good, you know? Like he might be too slow, but he might be too good. By the best move played by Magnus, who took like 40 seconds as compared to Gukesh's 4 minutes. And now Queen E2, yeah, best move, Queen E2, best move. Gukesh bhai, fast, 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 fast. We have no time. No time, triple time in Magnus ke paas. We cannot afford this 6 minutes difference. You have to play now. And that's already a mistake. That's a free pawn for the map. What? Wait, isn't it just losing a free pawn on e4? What is this? I mean, there is no way Gukesh thinks this is better for him. So he completely missed it. He completely missed, I think, Queen D1 and Knight T4. And this is what happens when you think too much. भाई लाइफ में कोई भी डिसीजन जो ओवरथिंक मत करो भाई, बस कर दो काम. You will learn more by doing than thinking. And Gukesh making that typical mistake of thinking he has to do something special to beat Magnus. I mean, he has to do it, but I think उसका सोचना नहीं चाहिए इतना. Man, come on, this is scary. This is scary. By the way, chat, let's not forget 1000 लाइक मैंने बताया था, 1000 लाइक पे डायमंड मेंबरशिप गिवे होगा. जल्दी स्ट्रीम लाइक कर दो भाई लोग. 1000 लाइक होने चाहिए दोनों स्ट्रीम्स पे. I know E5 is hanging, but even if you win it back, भाई आपने मेरे दोस्त को 10,000 रुपए दिए, आपको उसने 9 आपको मिल जाएंगे वापस, वो कह रहा है, but you are not gaining anything out of it, right? Like unless आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, but दोस्त को थोड़ी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे भाई, दोस्त को थोड़ी. But the point is, even if you get the pawn back, at the best it's equal. So then why did he think for 4 minutes? I'm not sure. And you know what Magnus is doing? Now he's thinking, क्या मैं विन के लिए खेलूं कि नहीं? This is that Magnus mode. This is the moment जहां पे वो डिसाइड करेंगे कि क्या मुझे ड्रॉ लेना है, आराम से ड्रॉ कर लो, या मुझे पुश करना है. ये अभी if he plays something crazy like rook f5 और bishop d6, तो मान के चलो विन के लिए खेल रहा है. Bishop e3 में I think he's playing a safer choice. Let's see what he does. Safer choice it is, yeah. Now I think rook f5 is still logical because e5 pawn hanging है, and then we will go rook d7. So we will try to attack one of the pawns. एक pawn हमें वापस जल्दी चाहिए. इससे अच्छा गुकेश क्विकली खेल देता. Exactly. You hit the nail on the head, Mr. Rick G. बिल्कुल सही बोला. And now rook d7, only move for Gukesh. He has to find it. Let's go rook d7. 7th rank पे रुक बिल्कुल चंगे लगते हैं भाई, सुंदर से अति सुंदर भाई, बिल्कुल शादी मटेरियल. Let's go to rook d7. Who do you think will win? I think draw is the most likely result now, as long as Gukesh finds this move. कुछ भी और खेला, then Magnus Carlsen is the favorite. Magnus is 5.5. Yes, Magnus is 5.5. That's what we can see. अच्छा, वो यहाँ पे वो chess.com पे गलत दिख रहा है chat, left side पे, because it's not accounting for the double wins. You can find the correct standings below me. Here. यहाँ पे. It's draw, bhai. Depends. By the way, rook d7. Nice move by Gukesh. Realizing ki, bhai, you have to kind of, adjust to the new world order now. And now I think rook a d1 will be very logical. Doubling up rooks. Rook ke na basic principles hote hai. Double up rooks. Put them on the 7th rank. Keep them active. Put your rooks behind the pass pawn. Do not bring them near levy. Like lots of rules you have to stick to with your rooks. Magnus is 5.5 right now. If he wins, he'll go to 7.5. I love the London, by the way. लेकिन London यहाँ पे नहीं है. There's a pawn on e5. 2.5 minute. Against 6.5 minute. Looking very difficult for Gukesh right now. On the clock, in the position. Ooh, knight c5. Wait. That's interesting. Because now I can give a check. That's very interesting. Can I just give this check on d8? Rook d8 check, rook d8, rook d8, king f7, and then I can harass these pawns one by one. Tuck, tuck, tuck. Come on. Gukesh bhai, time waste nahi karna hai. You have to play quickly. You cannot do this. You cannot do this. Jaldi khelo bhai, jaldi. Fast. I think rook d8 should be obvious here. It has to be the only move you're considering, I think. Because rook d2, I mean, 94, passive, doesn't make sense.
Gukesh is taking so much time. I think he's nervous. I think it's nerves again. नया डे, you have to again get new momentum. कई बार होता है ना, आपने क्रिकेट देखा होगा, कौन कौन क्रिकेट फैन है, कई बार आपने मान लो डे वन को 300 रन कर लिए, 200 डबल सेंचुरी मार ली, नेक्स्ट डे को when you come to the crease you have to settle down again. It's very similar. Now he can take the rooks and play 95, but there is knight a4 losing a pawn, so he can't trade rooks just yet. Oof, not easy, chat. Still not easy. I think now he has to bring the rook back to d1 or d2. Come on, come on, come on, Gukesh bhai, please, please, please bring the rook back. Do not trade rooks. No, I don't think he'll trade rooks. I don't think so. He will trade rooks because he sees knight a4. Even I see knight a4. That would be very, very dangerous. Maybe it's a draw with perfect play, but you do not want to enter that variation. By the way, a minute for Gukesh versus 7 minutes for the greatest player of all time. He has to do something now. तुम्हारे भाई ने बोला है भाई ऐसे कैसे ट्रेड कर लेगा भाई, ऐसे कैसे, पोकेमॉन कार्ड थोड़ी है. सो आता है रुक d1, बढ़िया मूव, एंड नाउ आई एम अटैकिंग e5, एंड इफ रुक f5 देन रुक d8 चेक अगेन, एंड इट्स रेपिटेशन. So very nice move. So black को e4 खेलना पड़ेगा, and then you can play knight g5, attacking this, and I think Gukesh will get the pawn back. Very close to equal now. RIP Dania, indeed, that was heartbreaking. Yeah, I mean, as I mentioned yesterday, he's been, I think, by far my favorite commentator of all time. Like, agar मान लो कि कोई ऐसे, you know, of course, if I want entertainment, maybe I might watch somebody else, but pure chess, like he was my by far the best commentator, and a very nice guy as well. जितना मैंने देखा है, at least online. So heartbreaking to see what happened there. Rook d2, there was knight e4, by the way, so it can be a bit irritating, right? So rook d1 also equally good, I feel. Not Tanya, bhai, Daniel Nairuski. By the way, e4 played, knight g5. Ooh, that's a slight error. And now knight a4. An excellent move for Magnus to put pressure on the world champion again. Because after knight a4, कहां जाओगे आप? आप rook d2 से ये defend करोगे, या rook d7 से attack करोगे? And it's not an easy choice, and he has no time. Difficult लग रहा है chat. What's your stance on Karamnik? अभी बताओ भाई. Okay, h5 is a weird move. Okay, I mean, it's not a bad move, but I think Magnus basically rook d7 allow nahi kar rahe. And he's also saying कि I'm going to play knight a4 next move, but Gukesh exchange करते हैं knights. Apparently rook f5 is the best move, ताकि आप मारो तो मैं rook से मारो. Wow. Wow. भाई Magnus still piling on the pressure. Draw के लिए नहीं मानने को तैयार अभी भी. Stop calling world champion again and again. क्यों अशरत भाई, ऐसा क्या हो गया भाई यार? मतलब वर्ल्ड चैंपियन है तो है, आपका नाम अगर एक्स है तो एक्स ही बुलाऊंगा ना भाई. वर्ल्ड चैंपियन तो है वो, इसमें क्या बुरी बात हो गई भाई? तो कुछ लोग किसी भी चीज पे बुरा मान जाते हैं भाई. क्रेजी है भाई जनता भी. मैग्नस इज अ ट्रू वर्ल्ड चैंपियन भाई. मैग्नस इज डेफिनेटली द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम. इसमें कोई डाउट ही नहीं है. By the chat, 40 seconds, nahi, 20 seconds left now, so it's looking really bad for Gukesh. Position is still a draw. I think rook d7 would be a nice move to play. Rook d4 also, by the way, attacking the e4 pawn. Bhai chalo! Bhai chalo! What is Gukesh doing? Bhai! Bhai, he's really, getting on our nerves now. Bhai, itna 8 seconds पे खेला यार. Yo, Pranshi bhai, I'm doing fine. How are you? Come on, Gukesh bhai, थोड़ा जल्दी है, ऐसे मत करो यार. Rook d8, knight trade पे. Good question. What happens on knight d7, rook d8? But there was a tactic, knight f6 check, and you lose the rook. So that was not possible. Going back to the live position. Good question. There is 5-second increment, so he will not lose on time. And rook can game at chat. I think it's possible to play this with increment. But of course, yeah, Magnus pressure डालेगा. And Magnus, अगर मान लो अगर time बराबर होता, he would have already agreed to a draw. But now that you know your opponent is under pressure, Magnus will play for a win. He will not agree to a draw.
टिक्कू ओवर रिएक्टिंग भाई, 2 गेम लगातार मैग्नस से नहीं हारनी भाई, ओवर रिएक्शन नॉट इवन क्लोज. Uh, Good question, Levi. Ki, should he play on intuition? But as you know, even Magnus has shared, ki Gukesh ka intuition maybe is not as great as somebody like Magnus. So he relies a bit more on calculation than the others. So automatically he takes a lot more time. By the rook d5, crazy move. You cannot take this rook. That would be resigns because we are a pawn down. So and if you take the pawn, there is rook d1 check, takes check, and you pick up the b2 pawn. But apparently that is. अच्छा है, मैं चश्मा टूट गया भाई, मुझे तो दिख नहीं रहा है क्या हो रहा है. अच्छा है कि आज मुझे दिख नहीं रहा है चैट, बिकॉज चश्मा मेरा टूट गया था कल, एज यू नो, सो आई कांट सी व्हाट्स हैपनिंग चैट. Clearly Gukesh would not have gone into a pawn end game, a pawn down, so I'm sure he grabbed the pawn and went for counterplay. So clearly I can't see chat, but you can let me know in the comments, although I can't read the comments also. So yeah, I think Gukesh will draw this, yeah, I'm sure. भाई क्या चल रहा है भाई, ये क्या था भाई. भाई why did he. भाई that is resigns, I think. I mean he thinks, I think maybe let's calculate chat. So uh king f7, king f2, king f6, king e yahan pe, and king f5, right? And how are you drawing this? I don't see it. And Magnus has taken it. He's taken it. I think he's losing. He's completely lost. I just don't see why he went for this. I just don't see it. It's completely lost. I mean, simple calculation. I mean, I don't know what Mukesh saw. Of course, he saw something, yeah. B4 only move, but it's lost after B4 as well. By the way, C6 only move. Why is C6 the only move? Very interesting. C6 is apparently the only move for Magnus. What? Definitely Gukesh saw something. क्या कुछ तो देखा है गुकेश ने. रुको 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 रुको. C6 is the only move. Wow. Okay, let's see क्या होता है. I'm now more interested in this game now. रुको 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 रुको. You are just an M. True, bro. That's why यार, मतलब if I was Super G, I would be playing. फिर तुम कमेंट्री कर रहे होते भाई. Chad, usually pawn in games में, I think you have to create a passer, right? That's the goal. As long as you have a passed pawn, sometimes number of pawns don't matter. The only question is ki, how do you create a passed pawn when you are a pawn down? Very unlikely. And now if black plays h4, okay.
हार गए भाई, गए ईफाई, खत्म, रिजाइंस। खत्म भाई, खत्म। भाई ये क्या रुक ट्रेड क्यों किया भाई? नहीं करने का था। नहीं कर, क्वेश्चन मार्क कैसे हो सकता है भाई? ब्लैक इज विनिंग। भाई चेस कॉम भी क्यूट है, लव यू चेस कॉम। अरे भाई क्योंकि तो लॉस्ट है भाई। क्या डिसअपॉइंटिंग मी। ये क्या है भाई? नहीं नहीं भाई, ये दिस इज गॉन, दिस इज लॉस्ट, एंड गुकेश लूजेस 2 गेम्स इन अ रो। भाई हार गए, एंड मैग्नस कार्लसन ने 4 पॉइंट इकट्ठे कर लिए हैं। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, गुकेश का अगला मैच होगा हिकारू के साथ। सो मैं पोल लगाने वाला हूं, द गेम विल स्टार्ट सून। बट क्या ही था भाई ये क्रेज, बाय द वे, हिकारू बीटिंग कारुआना। लेट्स हैव एक और किंग पॉइंट गेम। भैया चल क्या रहा है भाई? आज किंग पॉइंट गेम ही चल रही है क्या बस? यहां भी ब्लैक जीत गया भाई। वाओ। तो चैट, क्रेजी गेम्स, एंड मैग्नस जी पूरा पावर के साथ गुकेश को हराया उन्होंने आज। लेकिन अगली गेम में क्या होगा? गुकेश वर्ल्ड नंबर 1 को तो हरा नहीं पाए, क्या वो वर्ल्ड नंबर 2 को हरा पाएंगे? लेट्स फिगर इट आउट। पिछले मैचअप में जो कल हुआ, हिकारू को उन्होंने 1.5 हाफ हराया था। आज क्या होगा? चैट प्रिडिक्शन डाल दो। गुकेश पहली गेम, विन, ड्रॉ या लॉस? व्हाट इज योर प्रिडिक्शन चैट? स्पैम कर दो, मैं पोल भी लगा रहा हूं। पोल करो क्योंकि अरे यार ऐसे मत बोलो यार। हैवी नाका गेम एग्जैक्टली लाइक यस्टरडे। या आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। पूजा के एमिट करो प्लीज यार। यार मैगस के अगेंस्ट ना वो काम नहीं करती यार। मैगस के अगेंस्ट वी हैव ट्राइड इट, हर किसी के साथ काम करती है, बट मैं से नहीं। थैंक यू उत्कर्ष भाई। आई थिंक वो अंदर से निकले, वो एक्सप्रेशन अंदर से, बिल्कुल अंदर से निकले, तो जेन्युइन थे। नॉट टुडे, गुकेश विल कम टुमारो एज विक्टोरियस। भाई अभी ऋतिक भाई उम्मीद रखो। अभी 2 ही गेम हुए हैं, 4 गेम बाकी है। उम्मीद मत खो ऋतिक भाई। ऋतिक भाई इट्स ओके भाई, इट विल बी फाइन ऋतिक भाई, रिलैक्स। साले कितना कर्मा लेते हो भाई? कर्मा वर्मा लेता नहीं हो भाई, मैं देता हूं। गुकेश विल बीट मैग्नस टुमारो। यस यस, दैट इज टुमारो। वो कल के लिए छोड़ दिया है हमने। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो कल होगा। आज हिकारू को बीट करते हैं भाई। हिकारू को बीट करना बुरा नहीं है भाई, द वे वर्ल्ड नंबर 2 है भाई। आ, गुकेश का साबुन स्लो है क्या? मैग्नस विल विन भाई। वाह 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 वाह। साक्षी जी, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, मैग्नस जीत भी गए। दो दो गेमें लगातार हरा दी। हिकारू विल ड्रॉ कह रहे हैं बेन फायर। आई थिंक पहली गेम गुकेश है, वाइट है। सो चैट, यू नो व्हाट, आई एम गोना बी ऑप्टिमिस्टिक कि गुकेश को इस गेम में 2 पॉइंट मिलेंगे। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, वो अभी थर्ड प्लेस में है, बट वो दोनों गेम मैग्नस के साथ खेल चुके हैं। एंड हिकारू और कारुआना को दोनों को अभी कार्लसन से खेलना बाकी है आज। सो लेट्स नॉट फॉरगेट दैट बिफोर वी डिसाइड कि गुकेश इज इन थर्ड प्लेस। सो अब पेयरिंग वाइज गुकेश हैज द इजिएस्ट पेयरिंग, इफ यू कैन कॉल वर्ल्ड नंबर 1 to 3 में रिलेटिवली इजी। सो अब होगा गुकेश वर्सेस हिकारू, वर्ल्ड नंबर 2। कल अच्छा स्कोर था, क्या आज भी वो कंटिन्यू कर पाएंगे? अबाउट टूर्नामेंट, आई थिंक दैट इज ऑलवेज लाइकली। आई थिंक दैट इज ऑलवेज लाइकली। मैग्नस यूजुअली एंड्स अप विनिंग दीज इवेंट्स। Although let's keep in mind, day number 3 पे every win gives you 3 points. So anything is possible, yeah? And chat, we are so close to 1,000 likes. जल्दी से 1,000 लाइक कर दो. We will have a ChessCon Diamond membership giveaway. 1,000 लाइक पे, तो do not miss that. जल्दी से कर दो भाई। तक भाई मैग्नीशियम को आप हरा दो भाई, मैंने खेला था। आई केम क्लोज है, वेरी वेरी क्लोज, लाइक मतलब इवाल बार, मतलब कभी भी -10 के ऊपर नहीं गया, मतलब 10 ही डेसिमल का डिफरेंस था बस। रैपिड में हिकारू नंबर 10 है भाई। हिकारू ऑनलाइन चेस में कितना स्ट्रांग है, लेकिन दैट नंबर 10 इज देयर बिकॉज ही डजंट प्ले एज मच। सासू माँ चैट में, अरे सासू माँ जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आपको टाइम आउट दे देता हूं मैं, आप बहुत स्पैम कर रहे हो। Even the moves which Guki plays in sleeps too could not found in front of Magnus. यार Magnus के against, as many players have mentioned कि they don't play their best chess, pressure बहुत feel होता है। And I think maybe Gukesh today feel मुकेश का लगता है, अरे ये क्या है भाई?
Bro, I am on 1500 rating from 4 months. How can I improve? Bro, solve tactics through chesscom membership भाई. Puzzle rush daily करो 15 मिनट. देखो रेटिंग को ऐसे कूदेगी ना भाई, जैसे हमारे घोड़े भी नहीं कूदते भाई. क्रेज बढ़ेगी. Do you think new generation of players have hit their peak way earlier because than any of the previous because of access to HS engines? I think I would say that's not correct because Vishy sir was world champion in his 40s. I think Gukesh, Arjun, Parag, Nihal, Vidit and others as well, until they are serious about improving, like they don't lose motivation. I think they will always improve. ये हमेशा होगा. At least until the age of, let's say, 30. उससे पहले तक तो I wouldn't be surprised because most players hit their peak in their late 20s or 30. That's the age. Content creator making video on Hikaru Guki out of context. What is your thought? Yeah, I mean, it was meant for a show. इतना seriously लेना नहीं चाहिए उसको. I think कुछ लोगों ने बहुत seriously लिया. बाकी I think I get some people's idea who don't have enough context to the tournament. Like it might look a different way. So I understand both sides there. गुकेश जीता तो पार्टी दोगे ना? गुकेश अगर फर्स्ट आया टूर्नामेंट में तो कुछ कर सकते हैं भाई. तो कुछ कर सकते हैं भाई. Then I think it is. Then I think that's a fair party. मैच को रिटायरमेंट दे दो भाई. यू डोंट वांट मैग्नस टू रिटायर. मैंने कल भी कहा था यू वांट मैग्नस टू प्ले, ताकि कोई ना कोई इंडियन इतना स्ट्रांग हो जाए और मैग्नस को हराए बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक, ताकि वो खुद लाइक इट्स एविडेंस दैट सम इंडियन कुड बी द नेक्स्ट गोट. टिकू मौलिक, दैट साउंड लाइक मालिक ऐसे मतलब. हाय टिकू, समय की तरह से चेस खेलते थे जैसे जानता हूँ. अरे अरे मैं भाई, तो आपने मुझे हारते बहुत बार देखा है. दैट्स ग्रेट. यूज कॉमेट ब्राउजर फॉर गेम यूज. वाओ भाई, चैट में भी एड स्पॉन्सरशिप चल रही है भाई. अब आपके पास भी स्पॉन्सर है चैट, हमारे पास तो है नहीं. हमें भी दिलवा दो यार. मैग्नस को कौन रोकेगा भाई? कोई तो रोकेगा यार, कोई तो होगा जो आएगा और मैग्नस को बस हम सबको ऐसे हॉट ऐसे वो तो क्या बोलते हैं उसको, समथिंग चक्का कर देगा. आई डोंट नो, हक्का बक्का कर देगा भाई. मेंबरशिप किसको मिलेगा? एक चैलेंज करेंगे चैट पे, उसमें से एक बंदे को मिलेगा. इस मैग्नस गाय को मत खिलाओ, हर टूर्नामेंट जीतता है. भाई नहीं नहीं भाई, खिलाना पड़ेगा खिलाना पड़ेगा खिलाना पड़ेगा. मैग्नस सन वर्सेस सरकार. Maybe that's the world championship of 2040. God knows. अरे नहीं शायद मजाक कर रहा हूँ भाई. I am 1500 rated player. How can I improve? Solve tactics I mentioned earlier. Um, Arjun is helping Gukesh. भाई अर्जुन ने एक बार एक कुछ स्टेटमेंट किया था. I saw in some interview. I think Chess India interview था. I don't remember exactly किसका था, but I think I'm not sure if I saw an interview or if I heard something like, but basically he would, I don't think he was interested in being a second. Like he would rather be a first, right? He would himself rather play the world championship than be somebody second. Are you गोकू पगलू? यार मेरे बचपन में था भाई गोकू पगलू पगली दोनों था मैं. कितना देर का ब्रेक है भाई? भाई ब्रेक अभी चालू गेम हो जाएगी भाई 2-3 मिनट में. Magnus is bold and he just plays to kill boredom. You know what? Usually I would say no, but that's even partially correct. Like Magnus is not even playing at his peak. Like I'm pretty sure this is not peak Magnus. Like forget the peak strength, like forget peak focused also. He's not even peak focused. I'm pretty sure about that. Like he's like playing at 85% focus right now. जब वो हारेगा ना एक गेम, that's when he starts getting that focus back. What a Wesley So's peak? Wesley So तो yeah, I think that's he's past his prime. Yeah. वर्ल्ड कप के बारे में बताओ भाई. वर्ल्ड कप चालू हो रहा है 31 तारीख से. हम सब लोग जा रहे हैं गोवा. चैट आपके पास भी मौका है गोवा का ट्रिप जीतने का भाई. एंड यू कैन फॉलो चेसकॉम इंडिया इंस्टाग्राम एंड फाइंड दोस कॉन्टेस्ट. इंडिया इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो. 3-3 अलग कॉन्टेस्ट चल रहे हैं जहां से आप लोग जीत सकते हो एक डायरेक्ट ट्रिप टू गोवा. यू विल गेट अ चांस टू बी एट द वेन्यू ऑफ द वर्ल्ड कप. दुनिया के सारे प्लेयर्स आ रहे हैं. वील हैव गुकेश, वील हैव अर्जुन, वील हैव पराग, वील हैव विदित, वील हैव अरविंद, वील हैव निहाल, वील हैव केमर, वील हैव अनीश, वील हैव लाइक ऑल द टॉप प्लेयर्स द वर्ल्ड. कल टूर्नामेंट है, कल नहीं है, कल ये वाला है. कल ये है 29 को एंड 1 तारीख से वर्ल्ड कप है.
आज के सारे मैचेस क्या हुए बताओ ना भाई, दो ही गेम हुए, दोनों मुकेश खा रहा है। सो यू नो व्हाट चैट, कई बार होता है ना, लाइक इफ यू ब्रेकअप विद समवन, यू दैट्स अ फ्रेश स्टार्ट। एक फ्रेश स्टार्ट हो चुका है हमारा आज। आज से हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे। वी हैव नॉट डेटेड एनीबॉडी, वी हैव नॉट लॉस्ट एनी गेम्स, सो वी आर गोना स्टार्ट ऑफ फ्रॉम राइट नाउ। दिस इज द फ्रेश स्टार्ट इन आवर लाइव्स। हम पिछली दो गेम भूल जाएंगे और हम यहां से चालू करेंगे भाई। देखो भाई, नौ, अरे भाई, पजल 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 इज द सोल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। इस बार भी वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं खेला क्या? नहीं, बट ही विल प्ले द टोटल वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। अगर आपने नाम सुना है इसका, टोटल टोटल वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच जरूर खेलेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। समय लेना होगा वहां, आई डोंट नो। आई थिंक अगर फाइनल राउंड्स में कुछ चमत्कार हो जाए और समय भाई फ्री हो तो यू नेवर नो। बट अभी एज सच मुझे इंफॉर्मेशन तो नहीं है कि वो आ रहे हैं। बट समय भाई लव्स चेस, ही प्लेज चेस एवरी सिंगल डे ऑन चेस कॉम एज वेल। तो इफ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, ही इज फ्री, ही माइट शो अप। बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है मुंबई से, क्विक फ्लाइट सीधा। मैं सुना है हेलीकॉप्टर से भी ट्रैवल करते हैं भाई, कई बार एक्सपीरियंस के लिए तो भाई जल्दी पहुंच जाएंगे। What do you think in future Gukesh will be at Magnus? I think it's possible. I think confirm yes बोलना would be too much because Magnus is the greatest player of all time. To say कि Gukesh वहां exact level पे पहुंचेगा या उससे आगे निकलेगा would be harsh. But can he do it? Yes. मैग्नस 7.5, यस, मेरे नीचे आपको करेक्ट स्टैंडिंग्स दिखेंगी। मैग्नस इज ऑन 7.5 बिकॉज हर विन के डे नंबर 2 पे 2 पॉइंट मिलते हैं। अरे अर्षद भाई, चिल चिल चिल, कोई स्ट्रेस नहीं है भाई। Do the commentary with Sagar. We will be doing commentary with Sagar actually for the World Cup. So we'll have 6 commentators, I think. It will be Sagar Bhai, Tanya, it will be me and Sahaj, and also Harshit and Amruta. So 6 log commentary karenge. We'll also have Rakesh there on site shooting some amazing content, who might even join for commentary jab bhi mauka mile. We'll also have other, Chesscom team members. Our the country director Awadh will be there. We'll have team from Chessbase India, team from Chesscom India. सारे लोग वहां पे होंगे. We'll have, all the top players in the world. We'll have some influencers come in. बहुत सारे लोग होंगे भाई. अगर आप सरिसी टुशी फैन है, आई थिंक वो भी वहां हो सकते हैं. अगर आप प्रोफेसर चेस फैन है, वो भी हो सकते हैं. जो भी आप उनको फॉलो करते हैं इंडिया में, सारे लोग वहां होंगे भाई. कितनी देर में स्टार्ट होगा? आई थिंक राइट अबाउट नाउ. आई एम गेसिंग इट विल स्टार्ट एनी सेकेंड नाउ. क्या आप जैन हो? जैन तो नहीं है, बट चैन में जरूर हूँ भाई. रात का टाइम है, रिलैक्स कर रहे हैं भाई, बस एंजॉय कर रहे हैं भाई. अब के जीतेगा तो मजा आएगा. Hikaru would have been GOAT in another timeline with Magnus. I think even Fabi could have been the GOAT actually, like in a timeline. Because Fabi also, yeah, I think at least classical May, he could have been the greatest player like of the current generation. Tushar is, I think he's Indian actually. He used to live in Hong Kong, but now he lives in India, I think. भाई सजेस्ट करो सम बुक्स. भाई बुक्स नहीं भाई, कमेंट्री फॉलो करो भाई, काफी है. आई एम टेलिंग यू, टैक्टिक्स प्लस कमेंट्री भाई. टीसी, टीसी भाई, टीसी बनना है तुम्हें जिंदगी में. एंड तुम चेस में आगे निकलोगे. टैक्टिक्स सॉल्व करो 15 मिनट, और भाई रात को कमेंट्री, बस इतना ही करने की जरूरत है. ऑनलाइन में मैग्नेस से भी बेटर लगता है हिकारू. या एग्जैक्टली, हिकारू हैज दैट एक्स फैक्टर इन ऑनलाइन चेस. बट ओवर द बोर्ड में आई थिंक मे बी कारुआना आल्सो मैचेस अप. क्लासिकल में तो आगे भी हो सकता है. Hikaru is outstanding in online chess. I agree. Malve chat, game starting any second. So, bhai, do we have the players at the board? क्या प्लेयर्स तशरीफ रख चुके हैं? ओके ओके. कितनी स्टार्ट होगा? आई थिंक आई एम गेसिंग 11:45 इज द टाइम. मेरे को लग रहा है 2 मिनट चालू हो जाएगा. 1 मिनट नाउ. आर यू सिलेक्टेड फॉर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप? यस भाई, आई एम. झाड़ू पोछा मारने के लिए कोई तो चाहिए. हाउ शुड आई इंप्रूव माई रेटिंग इज 50? टैक्टिक्स भाई. अगेन द आंसर विल नॉट चेंज. कल पेपर है, but I can't stop watching this. Tonight is gonna be a good night, bro. So don't stop watching this. I think paper तो आते जाते रहेंगे. One paper cannot decide your destiny unless it's the birth certificate. I mean that can, but still overall I don't think so. आप स्टार्ट कर दो मैच, मैं कर दूं क्या? अच्छा चलो भाई. गुकेश, ओके, सो लेट्स हैव द क्वेश्चन. तो क्या पहला मूव खेलेंगे गुकेश? बिकॉज दैट्स अ टफ क्वेश्चन. ही लॉस्ट 2 गेम्स. कॉन्फिडेंस पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ा होगा, राइट? थोड़ा सा आई थिंक प्रेशर पड़ा होगा. सो व्हाट डू यू थिंक गुकेश प्लेस हियर?
आजकल दिमाग बहुत खराब होता है, बिल्कुल होता है खराब, क्या तो इलाज कराओ अंश भाई। इट हैपेंस टू द बेस्ट ऑफ अस, डू नॉट वरी अबाउट इट। D4 E4 A4 तो मुश्किल लग रहा है मुझे। आई एम थिंकिंग ही इज गोना गो फॉर हिकारू है, लेकिन यार हिकारू, एंड हिकारू ने पिछली बार किंग्स इंडियन खेला था, सो बट इस टाइम शायद वो किंग्स इंडियन नहीं खेलेंगे मुझे लग रहा है, because now he's not in a must win situation, right? Because he last time he had lost the first game जब उनके ब्लैक आए थे, so I think he might just go for E4, ऐसा मुझे लग रहा है। Because I do you prefer one Indian dominate like Magnus and no other Indian top 20, or what we have now? I would prefer what we have now, um, because it gives us more possibilities. And to be honest, having more people in the top 20 makes it more likely that somebody will dominate like Magnus. Let's not forget कि इनका आपस में एक competition रहता है। Like I don't know if you saw the podcast जो राज शमानी ने प्रग के साथ किया था, जहां पे प्रग ने खुद बोला like when Gukesh became the world champion, it was motivating. And that's a common feeling most successful people have, like होता है ना, कई लोग दूसरे की सक्सेस देख के जेलस होते हैं, वो लोग पीछे रहेंगे हमेशा। कई लोग देख के इंस्पायर होते हैं, आई थिंक वो लोग हमेशा लाइफ में आगे जाते हैं, एंड देन यू सी हाउ वेल दिस ईयर हैज गॉन फॉर प्रग। सो आई थिंक ये जो कंपटीशन है, इट हेल्प्स देम बिकम स्ट्रॉन्गर। लंडन इज वेरी अनलाइकली एक्चुअली अभी, अगर ये दूसरी गेम होती ना मे बी पॉसिबल, पहली गेम में नहीं होगा। Come on, let's go with the games. It's time, let's go. Come on, Gukesh भाई, वर्ल्ड नंबर 1 को वर्ल्ड नंबर 2 को हराना पड़ेगा भाई। Let's go. Why don't you get inspired by someone? I do get inspired by a bunch of people, both commentary wise, both content wise, but उनका नाम नहीं लूंगा भाई, because बहुत उनका नाम ऑलरेडी बहुत लोग ले चुके हैं। हिकारू इंटरव्यू दे रहा है भाई, उसको बोलो लेट हो रहा है भाई, पनवेल निकलना है। निकल गया मैं ऑलरेडी। मेरी रेटिंग 1900 है, से बढ़ नहीं रही, क्या करूं भाई? देखो मेरी रेटिंग चेस कॉम पे थिंक 2500 2600 है, सो उतने तक मैं लेके जा सकता हूं, उसके आगे भाई आपकी जिम्मेदारी। Any of this done, I have no idea exactly what happened, but whatever happened, I mean, was sad. Reason, I don't know how that will change things for us, but yeah. चिल्लाओ मत यार, सब सो गए हैं। चैट कितने लोग हैं जिनको नींद आ रही है? एक बार सबके सब हाई लिख दो भाई, उन सब लोगों को हम जगाएंगे। साहिल भाई, इज द वर्ल्ड कप क्लोज फॉर इन person spectatorship? Where can we get the passes? Thank you, super chat India World G. I think it's not closed actually, so you will get the passes. They'll be released very very soon. I'm actually surprised कि अब तक आए नहीं है, but बहुत जल्दी आ जाएंगे। कई बार होता है, थोड़ा लॉजिस्टिक्स के इशू होते हैं, so you will see the link on Chesscom India Instagram very very soon। आ जाएगा बहुत जल्दी। किस किस को नींद आ रही है भाई, बताओ भाई। और जिसको नींद आ रही है भाई लोग ऐसे, चलो आज हम प्राणायाम करेंगे, इंडिया का लोकल होगा, ऐसे हाथ रब करने का, ऐसे हाथ रब कर, करो करो, रब करो। और उठो भाई, गेम चालू होने वाली है भाई, कम ऑन लेट्स गो। विच ओपनिंग इज गुड फॉर अ बायोसोलेटेड लंडन सिस्टम? हाउ मेनी मोर राउंड्स? 4 more games, 2 more rounds टुडे। देखो भाई, नहीं नहीं आ रही भाई गुकी का कमबैक, भाई कमबैक होगा आज, होगा भाई, बिल्कुल होगा। कम ऑन लेट्स गो गुकेश भाई, आज कुछ क्रेजी कर दो गुकेश को भाई। लेट्स गो, D4 खेला, 96 C4 on the board. Will Hikaru go for Kings Indian? No, he plays E6 this time as predicted. He will not go for the Kings Indian now. Nimzo Indian played this time, E3 आया बोर्ड के ऊपर, सबसे लॉजिकल चॉइस यहां पे आया, कैसल किया ब्लैक ने, बिशप से पिन अनपिन किया नाइट को। व्हाट विल हैपन नाउ? मे बी B6 इज द मूव, बिशप B7 खेलने के लिए गुकेश जल्दी कैसल करेंगे, एंड ओपनिंग मूव्स आती जा रही है। गुकेश राइट नाउ प्लेइंग वेरी क्विकली, टाइम पे थोड़ा सा आगे, 15 सेकंड। आई थिंक पिछली गेम से उन्होंने लेसन दिया होगा कि भाई तेज खेलना है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मूव्स, इट्स आल्सो अबाउट द क्लॉक। बाय द वे, टाटा स्टील 2026 की लिस्ट आज ही आई है, और उसमें 4 इंडियन है, 4 इंडियन आउट ऑफ आई थिंक 12 नहीं 14 प्लेयर्स। इट इज प्रग, इट इज अर्जुन, इट इज गुकेश एंड अरविंद। सो खतरनाक फील्ड होने वाली है। And come on, D5 played. That's an interesting choice, by the way. In this position, chat, देखो, इस पोजीशन में 415 गेम्स खेले गए हैं, 415 में से सिर्फ 10 गेम में
D5 खेला गया है. So either this is a mistake or this is a new idea by Gukesh. By the way, takes मार दिया है, pawn takes मार दिया है. We are heading off into a. Ooh, that's a risky move. Oh my God, Bishop G7 is possible. What? Bishop takes, king takes, queen G4 check, picking up the knight. Knight G5, there is H4. So Bishop G7 पे knight F2 मारना पड़ेगा. Oh my God, this is crazy. Crazy move. Queen F3, King G7, Queen F2, Queen F5 check. Oh my God, King D1. Wow. Why this game could be crazy actually. What's going to happen? What's going to happen? Will Gukesh find Bishop G7? He can also just play Bishop D3. Also very logical, by the way. Bishop D3 also very logical. That's not the only move. He can play Bishop G7. He can play Bishop D3. He can play even Queen C2. Come on, Gukesh. Come on. This is possible. This is definitely possible. Don't think Gukesh should go in this for rapid. I also partially agree because it's Hikaru in front. You don't want to play crazy lines against Hikaru, but also you want to challenge yourself, yeah? You really want to challenge yourself to play these crazy lines because at some point they will happen. पेड़ा नहीं खाता भाई मैं. पेड़ा नहीं भाई, पेड़ा यार. I don't know. खाना है तो भाई कम से कम एक चीज बस पिज्जा तो बनता है. Come on, come on, come on, come on, come on. Play fast. I agree with you. He has to play fast. Hikaru का idea वही है to make Gukesh think in the opening. That's his strategy. He has to take on G7. Come on, Gukesh. Ooh, he's taking too much time for my comfort. He cannot do this. Gukesh G, please. Please. भाई मैं तो भीख भागने में आ गया. Come on, Gukesh भाई चलो यार. Black queen check. See, if bishop G7, black queen check, आपने खेली, then I bring the bishop back. And if knight C3, there is simply queen D2 and I win the knight back आराम से. So not a big deal there. गुकेश भाई 1.5 मिनट हो गया यार. बिशप D3 खेल दो. Is he calculating some crazy line here? Like for example, I don't know, queen H5, king G7. I don't know what is he calculating, like queen E5 check maybe. But it doesn't make sense. I don't know. It doesn't feel like it's He finds it. He found Bishop G7. Best move. Brilliancy on the board by the world champion. But he took a lot of time. 2 minutes 36 seconds. Did Gukesh take too much time for this move? We'll find out just about now. And Hikaru has an only move to find. Knight takes F2 now, or he's lost. Of course, he'll find it, by the way. And Hikaru seems shocked, by the way. I think he did not see this coming. I don't think Hikaru saw this coming. Beer bicep syndrome. What's going to happen now? Wo bhi time le rahe. Don't be 100%, but play fast. Exactly. Great advice there. And now if king G7, as we discussed, simple. King G7, queen G4 check, and you pick up the knight for free. What a move, by the way. Bishop takes G7. Beautiful move. Wow, Hikaru finds it. Oh, king takes Mara. Very interesting. I thought he might actually go for the other line, जहाँ पे, queen f3 से आप queen से मार सकते थे. You could have maintained your chances to castle, but I think maybe he wants to move the queen somewhere else. वो queen f3 से move waste नहीं करना चाहते. Now knight f3 would be very logical. Developing very quickly. Let's go, Gukesh. टाइम पे अभी भी 1.5 मिनट का लीड है हिकारू नाकामुरा के पास. ब्लैक पीसेस से दोनों किंग कमजोर है यहां पे. Gukesh is afraid of Magnus question marks. कह रहे हैं sky is the limit. He always feels the pressure. I think every player in the world chat, every a player who's rated 500 and a player who's rated 2500, players who's rated 20, everybody is kind of subconsciously scared of Magnus Carlsen because they know he never makes a mistake. He just never makes a mistake. And if he doesn't make a mistake, then how do you beat him? Like psychologically, it's very hard to handle. 500 चैट. बाय द वे वुड लव टू नो योर रेटिंग्स. कितने रेटिंग वाले लोग चैट में हैं? हमारी रेंज क्या है? क्या वो 200 से 2000 है? क्या वो 100 से 3000 है? क्या रेंज है हमारी?
भाई क्वीन G4 चेक खेला गुकेश ने, किंग गया कोने में, एंड कोने में यूजली काम अच्छे होते नहीं है, क्वीन F4 आया, मे बी इट्स काइंड ऑफ ब्रिंग द क्वीन टू एन एक्टिव पोजिशन, बट एज ऑफ नाउ D6 एंड ब्लैक इज फाइन। 400, 2100, 1800, 1000, 800, 2175, 2245, 2889.2, क्लियरली मैग्नस चैट में भी स्मर्फ करते हुए 2700, 1300, बहुत पूरी रेंज है हमारे पास, दैट्स अमेजिंग। 3240, भाई 3000 फर्क कह रहे हैं, 4000, भाई ये कुछ ज्यादा हो गया भाई। भाई साहब मिस्टर गेमिंग 2400। हाँ अब थोड़ा कम फेंको, थोड़ा रियलिस्टिक फेंको, लाइक 2400 बोलोगे ना मैं मान भी लूंगा, वेरी हार्ड फॉर मी टू फिगर आउट। अब 550 600 बोला एक बंदा, मतलब फेंकने की भी लिमिट रखो भाई थोड़ी सी। एक बंदा 33,000 बोल रहा है। इसको स्टॉकफिश जब दुनिया टेक ओवर करेगा ना, अब बोल कितनी रेटिंग है तेरी, अब बता भाई। इसी को पकड़ेगा पहले। बाय द वे नाइट F3 प्लेट, सो डेवलपमेंट बिल्कुल जारी है यहाँ बोर्ड के ऊपर। आई थिंक ब्लैक की पोजीशन भी सॉलिड है, एज लॉन्ग एज ब्लैक कैन डेवलप क्विकली, आई थिंक ब्लैक इज डूइंग फाइन। क्वीन E7 लॉजिकल मूव, थोड़ा सा किंग को प्रोटेक्शन, थोड़ा सा पॉन पे अटैक, या D6 पॉन डिफेंड किया ताकि नाइट को डिलीवर कर सके। एंड ये बाय द वे बिशप H7 इज पॉसिबल हियर, वाओ, व्हाट, if you don't take, you are lost, and if you take, queen F5 check is a draw. Wow. Why bishop H? He doesn't play it. Gukesh doesn't take the draw. He had a draw against Magnus Carlsen. मना कर दिया है उनको उन्होंने ड्रॉ के लिए। एंड आई थिंक उनका आइडिया अच्छा है, बिकॉज मैग सॉरी हिकारू, आई मीन हिकारू की बेस्ट मूव यहां पे पॉन टू F5 है। And that is, I mean, a logical move, but not super easy also, right? I mean, you probably want to play something like, develop the knight or the bishop first, but F5 is the best move. हिकारू नाकामुरा बाय द वे टाइम पे उतना आगे नहीं है, मैग्नस तो बहुत आगे थे, तो फिलहाल के लिए टाइम मैनेजमेंट गुकेश की इस गेम में बेटर है। मे बी दिस इज द गेम वेर ही गेन्स मोमेंटम। चैट एक विन चाहिए। कल हमने देखा गुकेश ने एक गेम जीती, सडनली ही वन 3 in a row, कैन ही डू सो राइट नाउ? एंड चैट डू लाइक द स्ट्रीम, लेट्स गेट मोर पीपल इनटू द गेम। चैट लेट्स गेट टू 1000 लाइक्स, जल्दी से लाइक कर दो भाई, वी वांट मोर पीपल टू कम इन, सेलिब्रेट चेस, सेलिब्रेट इंडियन चेस, एंड दिस इज प्रिपरेशन फॉर द वर्ल्ड कप फॉर गुकेश। हिकारू का टाइम कम होते हुए, अरे अरे अरे, ओह, नाउ द शू इज ऑन द अदर फुट, लेट्स गो। ओके टाइम और कम होते हुए, और हिकारू भाई चिल करने का भाई, स्ट्रेस नहीं है, आराम से बैठो, कॉफी ऑफी लाता हूं मैं, आराम से पियो भाई, वनीला फ्लेवर कॉफी। और बाद में नाइट विसेस खेल दिया है, नाइट से पॉन पे, जैसा मैंने कहा F5 वाज नॉट इजी, एंड नाउ यू कैन प्ले E4 एंड बेसिकली F5 को फिजिकली रोकने की कोशिश कर सकते हो, राइट? मतलब होता है ना कई बार, आपने सेकंड एसी में ट्रेन बुक करी, आपने कहा भाई मेरी सीट है सेकंड एसी में बुक करी है, मस्त होके जाऊंगा, आप ट्रेन में चढ़े, कोई पहले ही बैठा हुआ है, फिजिकली वहां बैठ चुका है, अब आप अपनी सीट पे नहीं बैठ पा रहे, तो सेम चीज है, लेट्स प्ले E4 एंड ट्राई टू स्टॉप दिस फ्रॉम हैपनिंग इंस्टेंटली। भाई आई लव वनीला फ्लेवर, बाय द वे वनीला कॉफी मस्त होती है, ट्राई करना बाय द वे। बाय द वे चैट, मुकेश बहुत फास्ट, थोड़ा तेज, मतलब ऐसे वो स्पीड, कई स्ट्रीमर हमने सुने हैं, आई शो स्पीड, थोड़ा आप भी शो कर दो, थोड़ा स्पीड शो कर दो भाई, थोड़ा सा, पूरा नहीं चाहिए, नॉट 40 मिलियन सब्स, बट थोड़ा सा भाई। आई एम इन मुंबई, यू शुड स्पीक मराठी, कह रहे हैं सिड 32। ओहो, ओह नो, ओह नो, तो स्ट्रीम बंद कर दे क्या भाई फिर? सिड भाई आ गए चैट के अंदर, फर्स्ट एसी में हुआ है, बढ़िया भाई बढ़िया। थैंक यू राहुल भाई। एंड चैट, अगर आपको इंडियन चेस के फैन है अगर आप, आई थिंक आई वांट टू हाईलाइट अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डिटेल। अगला एक साल देखो इंडियन चेस के लिए कैसा लग रहा है। We have, as Gukesh is thinking, we have the World Cup, we have clutch chess, the match between Gukesh and the world top 3 happening right now. As soon as it ends, एक दिन के gap के बाद we have the World Cup,
The Chess World Cup, the biggest event of the year, 26 days of full on action, knockout event. दुनिया के सारे प्लेयर्स, 3 कैंडिडेट स्पॉट्स अप फॉर ग्रैब्स. वो खत्म होगा. वी हैव द GCL स्टार्टिंग, दैट्स इन मुंबई दिस टाइम. वो 10-15 दिन चलेगा. दैट एंड्स. Then we have the World Rapid Blitz, crazy situation. That ends. Then we have Tata Steel India, in Kolkata, भाई crazy event, सारे top players होंगे वहां पे. That ends. Then we have Tata Steel Main, जहां पे भाई we have 4 Indian players, including Gukesh. एंड ऐसे करते फिर कैंडिडेट्स, फिर टोटल वर्ल्ड चैंपियनशिप, फिर आई गेस इंडिया यूएसए भी कभी होगा, फिर वी हैव नॉर्वे चेस, फिर वी हैव ओलंपियाड, वर्ल्ड चेस. भाई दिस इज अ ग्रेट टाइम टू बी अ चेस फैन. द नेक्स्ट ईयर looks amazing. By the way, e4 played by Gukesh and now pawn to f5, only move by the way. अगर नहीं खेलते तो at some point I could have locked this completely. So f5 खेल दिया है and now he's trying to open up attack towards the white king. इंडियन चेस में SIP कैसे करूं? नाइस वन भाई, नाइस. थैंक्स सुपरचैट भाई. ठीक भाई. पूजा गैम्बिट यार, अब क्या हिकारू के साथ पूजा गैम्बिट करेंगे यार? नहीं यार, आई मीन अगर जरूरत आएगी तो हम करेंगे, बट फिलहाल के लिए ठीक है. फिलहाल के लिए हम चंगे हैं. चैट क्या बोलते हो? फिलहाल बढ़िया पोजीशन लग रही है नहीं? आई थिंक अभी 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 कोई स्ट्रेस नहीं है लाइफ में. बाय द वे, हमें कंबाइंड अभी 4,500 लोग देख रहे हैं. चैट जो भी आप लोग देख रहे हो जिस भी चैनल पे, डू लाइक द स्ट्रीम. लेट्स गेट 2000 लाइक्स. यहाँ पे किंग G1, इंटरेस्टिंग मूव बाय गुकेश, किंग को सेव कर रहे हैं. बट नाउ माय क्वेश्चन इज, व्हाट हैपेंस आफ्टर f takes c4? बिकॉज आई डोंट वांट टू ट्रेड क्वींस. और अब क्वीन ट्रेड के बाद आई थिंक दिस इज ओके फॉर वाइट, बट आफ्टर बिशप f5 आई थिंक पोजीशन इज लाइक रफली इवन. सो व्हाट डू आई डू हियर? This is very interesting. So Gukesh is ready to trade queens, kya? The other move is queen G5. But that also is leading to a trade. So I'm not really sure if Gukesh is completely happy with this position, because endgame may maybe, it might not be, as easy to win. Do you really want Gukesh to get lucky against Magnus and Hikaru, or do you want to surpass them, dominate? I think I want him to surpass them, of course. But the first time it happens, you need a bit of luck. First time when they defeated Magnus, CARLSEN missed mate in 3. When on earth does Magnus miss mate in 3? And एक बार miss किया and Vidit won that game. So, you really need that, luck sometimes to get that first win in. And after that, you can actually gain momentum. By the way, chat, फिलहाल के लिए Hikaru is still thinking, I think he should take. अगर वो एंड गेम में नहीं जाते तो फिर उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज निकलेंगे और मजे ले लेंगे भाई. तो he has to really take this pawn trade queens. I think otherwise somehow your king is a bit open. Now my king is very safe. And by the way, huge update, Magnus Carlsen is much worse against Caruana. Very interesting. Gukesh, golden opportunity to gain back the lead. Let's win this game. Let's defeat Hikaru Nakamura. Come on, Gukesh भाई, अपने लिए कर दो, देश के लिए कर दो भाई. बाय द वे चैट, कोई कह रहा है 1000 लाइक हो चुके हैं. सो चेसकॉम डायमंड मेंबरशिप इनकमिंग इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स. लेट मी नो व्हेन यू आर रेडी चैट. उसी टाइम पे चैलेंज कर देंगे हम लोग. By the way, still no moves. This is good. Let Hikaru think. Let the guy sweat a bit. Let him feel the pressure. पीछे गोकू को सुला दो भाई, गोकू कभी सोता नहीं है भाई. Come on. By the way, still no moves. Chat is ready. So chat, ऐसा करेंगे, जो पहला बंदा करेक्ट आंसर देगा along with their chesscom ID gets a 1 month diamond membership. ठीक है? आंसर स्पेस ID. अग्रीड चैट में लिख दो एक बार, उसके बाद ही करेंगे चैलेंज. ठीक है? जल्दी करो भाई. King G1 and Hikaru has fallen behind on the clock. Let's go. Gukesh D slowly but surely is doing pretty well. Come on. बढ़िया लग रहा है. अग्रीड, बढ़िया. सो चैट, सवाल ये है, ठीक है, एंड एज वी नो कि भाई
वर्ल्ड कप बहुत बड़ा इवेंट है, इंडिया में हो रहा है। सो इससे पहले वर्ल्ड कप इंडिया में किस साल में हुआ था? इज द क्वेश्चन। द फर्स्ट पर्सन टू आंसर विद द चेस्का मेंबरशिप गेट्स अ डायमंड मेंबरशिप फॉर 1 मंथ। लेट्स गो भाई। इससे पहले इंडिया में वर्ल्ड कप चेस का कब हुआ था? वर्ल्ड कप, नॉट ओलंपियाड, वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं भाई, हु इज द करेक्ट गाय? किसने पहले डाला है आंसर? सही बताना भाई, इफ यू सी द करेक्ट आंसर किसी का, लेट मी नो। 13 में नहीं, 23 में नहीं, 8 में नहीं, 2003, वेरी क्लोज। 2008 नोप, 1999, 1992 नोप। भाई कैसे लोगों को पता नहीं है यार? नहीं नहीं, नो, नो वन, आई डोंट सी द करेक्ट आंसर येट। 22 में भी नहीं हुआ था, 4 में भी नहीं। अरे भाई कहां चला गया करेक्ट आंसर यार? किसी ने तो डाला होगा। मॉड्स बताओ भाई, हु इज द फर्स्ट पर्सन विद द करेक्ट आंसर? आई डोंट सी एनी करेक्ट आंसर्स जस्ट नाउ, एटलीस्ट अंटिल नाउ आई डोंट सी इट। Yes, Aman Raj 2087. I think you are the first person. 2002 में हुआ था वर्ल्ड कप, एज फार एज आई रिमेंबर, अनलेस आई मिस्टेकन, डू लेट मी नो। आई थिंक 2002 में इंडिया वर्ल्ड कप हुआ था, जहां विशी सर खेले थे, जहां तक मुझे याद है। सही है ना आंसर? वेरीफाई कर लो गूगल पे, कर लो वेरीफाई गूगल पे। एंड कई बार आपको लेगा आपने पहले लिखा है, बट व्हेन यू टाइप इट and when it reaches the server there's a difference, so only I can see the correct order on the back end, so that's very important। and आप जीते हैं अमीका ओवन जी, आपको मिलती है 1 महीने की डायमंड मेंबरशिप। बाद में एक और चैलेंज करेंगे 2000 लाइक पे, सो कीप लाइकिंग द स्ट्रीम, एक और मौका मिलेगा दोबारा। लेट्स गो। डोंट गूगल इट, नाइस नाइस। 2 सेकेंड्स लेट भाई, आई एम श्योर यू नो द पावर ऑफ 2 सेकंड्स। बाय गेम पे आते हैं, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए हम लोग। नाइट जी, यहाँ पे देखा क्वीन एक्सचेंज हो चुकी है, आया बिशप F5, एक और ट्रेड हुआ, नाइट D5, नाइट D6, B6, रुकी 1। राइट नाउ द पोजीशन लुक्स रफली इवन, बट मुझे लग रहा है कि अभी भी इट्स लाइक स्लाइटली बेटर गुकेश। कम ऑन मुकेश भाई, थोड़ा प्रेशर डालो भाई। 9 अक्टूबर से 20 अक्टूबर को हुआ था 2002 में। सो एनीबडी हु इज वेरी वेरी क्यूरियस, हैदराबाद में हुआ था। एग्जैक्ट डेट्स आपको मिल चुकी है। ऐड आ गया क्वेश्चन, मैंने ऐड नहीं डाला भाई, सो दैट्स नॉट ऑन मी। तो मेंबरशिप आपको ऐड हो गई है भाई, प्लीज डू चेक। आई हैव एडेड द 1 मंथ मेंबरशिप। सो अगला चैलेंज होगा 2K लाइक्स पे। And chat फिलहाल के लिए गुकेश, chat, okay, come back to the game. Look at the time. Gukesh is a minute behind. He needs to do something. He needs to find something here. क्या रहेगा यहाँ पे? He needs to get the rooks to the 7th rank. Right now, the knight on D5 is stopping it. There's no way to create an attack. Rook trade होंगे तो knight in game में जाएंगे. And let's not forget, knight in game में Hikaru के पास pawn, outside pass pawn है potentially. So this could be slightly worse even. So you don't want to trade rooks, but you can't take advantage. Maybe G4 is the best move. Trying to push your pawns as far as possible ताकि कोई भी रेस हो तो हमारे पीछे तैयार हो। Come on, let's push G4. G4 खेलना पड़ेगा. I think that's the only way. Create a momentum and initiative here, Gukesh. And play it quickly. You have 1 minute on the clock. And he plays G4. Beautiful move by the world champion. अब किंग को ऊपर लाएंगे हम धीरे धीरे के गेम में। Come on, come on, come on. Gyotamay bhai, shout out to you. Let's go, chat. अभी उम्मीद है एंड चैट इस एंड गेम में मे बी टाइम डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है, एक हल्का सा थिंग बाय हिकारू एंड टाइम बराबर हो जाएगा। द प्रॉब्लम इज द 2 गेम्स गुकेश हैज लॉस्ट प्रीवियसली। मैग्नस से हारे 2 गेम पे, थोड़ा साइकोलॉजिकल किक पड़ा होगा। क्या वो काउंटर कर सकते हैं जिस तरीके से शार्क टैंक पे भाई हमारे वो कंपनीज काउंटर करती है भाई? 1 करोड़ फॉर 0.001%। लेट्स गो भाई, कम ऑन भाई, मेरा बर्थडे है, जा एविडेंस कहां है? वेयर इज द एविडेंस? मैंने रुक D8 प्लेड, नाइट F5, लेट्स गो भाई। नाइट F5 इज मोमेंटम, कम ऑन, इसी का इंतजार था। मैं प्लेड बाय गुकेश, हल्का सा प्रेशर बनता हुआ, हल्का सा है नशा। लेट्स गो। वी डोंट हैव कैमरा बिकॉज बहुत महंगे होते हैं कैमरास। बाद में कारुआना इज कंप्लीटली डिफीटिंग मैग्नस। Oh my God, Carlsen completely lost. So can Gukesh win
and potentially stake a claim to rank number 1 again. Let's go. Rook d1. Come on, come on, come on. This is the moment, chat. Yahan pe tough moment for black. Does he go for knight e3? Try to exchange knights. Does he go for knight f6? Try to attack the pawn. Does he go for knight e7? Does he go for knight f4? Does he go to knight b4, attack the pawn? Hikaru के पास इतनी choices हैं. कई बार choices से हमारा decision खराब होता है. You might have 4 good choices and you think everything is bad. Yeah, but you have one more game, right? So it doesn't matter. You get a chance to strike back. You will go to 6 points. And you also defeat like the second guy, right? Hikaru ko hara rahe ho, so you will go to second place. Come on, come on, come on. Oof, this is very tough. भाई अननोन प्लेयर पता नहीं क्या फूक के आए हैं, बट भाई आई डू यूज द इंजन. आई थिंक दिस इज प्रीटी ऑब्वियस. जब गुकेश बेस्ट मूव नहीं निकाल पा रहा है, एंड लेट्स नॉट प्रमोट स्टूपिड थिंग्स, उनको मैं 200 साल के लिए टाइम आउट में कर दूंगा. आई नो व्हाट यू आर डूइंग ब्रदर, आई नो. फिलहाल के लिए कम ऑन कम ऑन कम ऑन. रुक D1 प्रेशर ऑन हिकारू जो 45 सेकंड्स पे जा रहे हैं. ही नीड्स टू प्ले नाउ, बट आई होप ही डजंट. मे बी देयर इज अ चांस देयर. अभी भी कंफ्यूज है कहां खेलना चाहिए. लेट्स नॉट फॉरगेट नॉर्वे चेस क्लासिकल गेम. Oh, doesn't find the best move. Still close to draw, but G5 is a potential idea. Let's push our pawns. This is the moment. H3 also possible, but there's H5 trying to trade some pawns. Hamara knight on F5 is our only asset, by the way. That's the only reason why Gukesh is better. So you have to maintain this knight, and uske liye G pawn ka zinda rehna zaruri hai. Now G5 does move the protection of the knight, but it attacks the black knight and gives us some more. It's like knight h6 ideas fir aa sakte hai, right? So you lose something, you gain something. Bullet mode on, 40 seconds each, chat. G5 played by Gukesh. Beautiful move. अभी भी close to equal, but Gukesh is slightly better. Idea है Rook D7. अंदर घुसना है 7th rank पे. That is the dream idea. Oh, by the way, if Rook D7 यहाँ पे, oh, by the way, he played H3, 95 now. So again, not allowing Rook D7. Maybe H4, maybe King G2, just improving the position. Yeah, King G2, nice move. Nice move. Mistake, but very hard to find King G3. Very hard to find because your pawn is attacked. King G3, sacking the pawn is the best move. I don't think Gukesh will find King G3, chat. Idea could be a king walk. I don't think he'll find it. It's very difficult to find this with 20 seconds on the clock. Ooh, tricky move. 15 seconds. Doesn't find it. Now close to a draw. Knight e3 check is the move for Hikaru. He will find it, of course. Knight takes, rook takes. Close to a draw now, chat. Rook d8 check, king f7. Rook d7, king g6 maybe. You take this, I take this, you take this, I take this. It's going to be a draw, I think. Likely a draw, chat. Very likely going to be a draw now. बट रीमैच होगा इसके बाद. एक और मैच बाकी है. सो पहली गेम ड्रॉ होने के चांसेस हाई अनलेस समबडी ब्लंडर्स इन टाइम प्रेशर नाउ. आई थिंक दिस इज गोना बी अ ड्रॉ. It's crazy how strong these players are. Rapid में भी गलती नहीं कर रहे. Now Rook B7, Rook 8. Wait. रुको. Tham, Muna tham. Rook B6. C4. C4 just simplifies the game. Yeah, dead draw now. Yeah, this is going to be a draw. And iska matlab, next game will start in exactly 4 minutes from now. And that's going to be the decider game. Seedha. We'll figure out who wins. And let's not forget, kal Gukesh ne Hikaru ko black pieces se hi haraya tha. Can he do it again, chat? Can he do it again? Okay, so I'm setting up the poll for the second game. इस वाले में draw हुआ है, so 11% लोग जो थे वो सही थे. Well done. By 2000 लाइक पे एक और डायमंड मेंबरशिप गिव अवे जाएगा. Let's do game number 2 now का poll. It is Hikaru versus Gukesh. Game 2. Hikaru wins, Gukesh wins, or a draw. Let's figure it out. Let's go, buddy.
किंग किंग तक खेले भाई, दैट्स क्रेजी। फैबी ब्लंडर व्हाट? नहीं, फैबी जीत गया भाई। फैबी डिफीटेड मैग्नस, दैट्स इनसेन। Fabiano Caruana defeats Magnus Carlsen, जो लास्ट रैंक पे थे। ही डिफीट्स द गोट। ये क्या हो गया भाई? समय भाई, लैग लैग, समय भाई लैग। समय भाई, समय भाई, समय भाई, समय भाई, भाई। हाँ भाई, लैग था क्या? नहीं, आई थिंक नेट तो गया था भाई, आई थिंक सो। मेरा क्या था क्या? रियली? ओके, आई थिंक बोर्ड में दोबारा करना पड़ेगा क्या अब? हाँ, रुको रुको रुको। आ गया, बढ़िया बढ़िया, चलो बोर्ड आ गया भाई, बढ़िया। इन गुजरात, गुजरात से भाई हमारे पीएम जी हैं, तो और क्या है भाई? आ, समय रहना नहीं भाई, समय रहना नहीं है। समय रहना, आई थिंक अभी उनका बर्थडे था 2 दिन पहले। Board not Gukesh dropped to fourth. Don't worry, भाई. One win from that position, he almost goes to first. सारे प्लेयर्स साथ में जुड़े हुए हैं, so don't worry too much about that. मेरा नीट गया था, अच्छा नेट, ओह सॉरी। नीट तो वैसे भी तुम्हारा जा ही रहा है। लेटेंट चेस कॉम इंडिया, नहीं नहीं भाई, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। जिसने मुझे टाइम आउट किया, वो रुको भाई, इनको एक, भाई मजा आता है कई बार टाइम आउट करने में। शूट आउट, सॉरी, शॉट शाउट। भाई क्या क्या कर रहे हो यार तुम लोग? हिकारू हरा दे उकेश को नेक्स्ट गेम। आई थिंक उकेश विंस द नेक्स्ट गेम भाई। आई थिंक उकेश जस्ट विंस द नेक्स्ट गेम कंफर्टेबली, मतलब आराम से, आराम से बोलते हैं ऐसे। आराम से जीतेगा भाई, देखना तुम, देखना भाई। आंसर एंड आईडी दोनों थे अरशद भाई, ही हैड बोथ थिंग्स। दिस इज बाय द वे वाटर भाई, वाटर। मैग्नस का गेम दिखाओ ना, मैग्नस गेम, बाय द वे दैट्स अ गुड पॉइंट, लेट्स हैव अ लुक एट हाउ मैग्नस लॉस्ट। व्हाट वाज द क्रिटिकल मोमेंट भाई? दिस वाज बर्लिन। ओ आराम से ऐसे, मतलब आराम से स्क्वीज कर दिया यार। पॉन सैक करके, बिना क्वीन के किंग साइड अटैक, वाओ। भाई फैबी डिस्ट्रॉयड मैग्नस, वाओ। पीस सैक, ओहो हो, ओहो, ओहो हो, वाओ। ब्यूटी भाई, ब्यूटी। एंड चैट, नेक्स्ट गेम होगी हिकारू अगेंस्ट उकेश, उकेश होंगे ब्लैक पीसेस, लेट्स से क्या होता है। Gukesh will bounce back. I'm pretty sure he'll bounce back. Chad, do not go anywhere. The game starts in exactly 1.5 minutes from now. This is the moment jahan pe Gukesh can again take the lead. And poll karo. So far, I can see 57% people saying Gukesh wins, 28% saying Hikaru wins, and 14% draw. Draw hone ke chances are the least likely now. Are you going to cover the World Cup? Indeed, I'll be there in Goa along with my ब्यूटीफुल अमेजिंग टीम, जिसमें साहज भाई होंगे, राकेश भाई होंगे, अवध भाई होंगे, हमारे एडिटर्स भी आ रहे हैं, साहिल एंड आर्यमन। सो क्रेजी टीम होगी हमारी वहां पे ऑन साइट। उसके अलावा चेस बेस इंडिया की भी टीम होगी वहां पे। सो वी गोना ब्रिंग यू द कवरेज ऑन ऑल यूट्यूब चैनल्स, चेस कॉम इंडिया, चेस 24 इंडिया, चेस बेस इंडिया का, इसका इंडिया, उसका इंडिया, सब सब चैनल्स पे आएगा भाई, डोंट वरी। हाँ, ये तीसरी पार्टी भी है हमारे प्रोड्यूसर साहब। पर्क डिफेंस कैसा रहेगा? बहुत घटिया ओपनिंग है, सिर्फ मैगस खेल सकता है वो भाई। चैट, द गेम इज अबाउट टू बिगिन इन 1 minute. It is Hikaru with the white pieces, pressure on Gukesh at the start. आज के दिन में his biggest problem has been the time. That's somewhere Gukesh has struggled. So my question for you is, what happens in this game? Gukesh win, draw, या loss? Spam कर दो जल्दी से भाई. Let's go chat. What is your prediction for this game? This is a crucial one, an important one. आपका फेवरेट सिंगर कौन है? यस, सिंगर यार, इट्स वेरी हार्ड टू चूज वन, वेरी वेरी हार्ड टू चूज वन यार, ऑनेस्टली। इंजन में, इंजन तो जीतेगा ही भाई, इंजन तो हर किसी जीतेगा भाई। आ गया फिर ये भाई, फिर आ गया ये बंदा। इसको यार, रुको रुको, इस बंदे को थोड़ा सा 400 साल का बैन देते हैं क्या कोई? इज इट पॉसिबल?
भाई 4 साल का बैन होता है क्या? ये बंदा अजीब चीजों का प्रमोशन कर रहा है। रुको रुको रुको, इस बंदे को टाइम आउट। एंड द गेम्स हैव बिगन, लेट्स गो चैट। 4,000 लोग एक चैनल पे, 1,500 लोग दूसरे चैनल पे, वी हैव 5,500 पीपल वाचिंग। और ओ, इज दिस द बेलग्रेड गैम्बिट? आई थिंक दिस इज द बेलग्रेड गैम्बिट, राइट? इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और कुछ और नाम है इसका। ओ लुक एट दिस, E4 E5। No, this is not the. Is it the Belgrade Gambit? I forgot the name, I think. Crazy move, moving the knight twice. चैट कई बार कहते हैं कि भाई एक पीस को दोबारा ओपनिंग में नहीं चलना चाहिए, बट हिकारू नाकामुरा ब्रेकिंग all the opening principles here. The idea is, I just want to confuse you, Gukesh. Maybe you're not up to date with theory in this opening. एंड नाइट 2 बार चल दिया है। आइडिया कि अगर आप ये मारते हो, पॉन टेक, सडनली आपका ये पॉन हैंगिंग है। अगर आप ये मारते हो, आई थिंक द आइडिया इज D4, आई थिंक सो, बट विल फाइंड आउट द आइडिया प्रीटी सून। D6। ओ मुकेश वेरी स्मार्ट यार, डजंट वांट टू कैलकुलेट एनीथिंग। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि 30 सेकंड में खेल दिया, टाइम वेस्ट नहीं किया। एंड बट ओके, नाउ ही हैज टू टेक ऑन E4, isn't it just transposing? Ooh, either he has to accept a slightly worse position with this, or he has to take and transpose, which is not what he wanted to do in the first place. So Hikaru still putting pressure. 1 minute का difference already. नहीं संजय नहीं, दीप भाई, I think it was the other guy who won. I think I have the exact order in front of me. Gukesh will destroy Hikaru. Let's hope so. Come on. एक बार सबके सब जो लोग देख रहे हैं, गुकेश अपनी स्पैम कर दो चैट के अंदर। लेट्स चीयर फॉर आवर प्लेयर्स यार। जब कोहली खेल रहा होता है तो हम भी कहते हैं ना भाई, कोहली मार। लेट्स गो गुकेश भाई, मार ऑपरेटर की पीसेस। कम ऑन कम ऑन। एंड फिलहाल के लिए गुकेश 2 मिनट पीछे। गुकेश यू हैव टू प्ले फास्टर, यू हैव टू प्ले फास्टर, वरना हमेशा एंड गेम में स्ट्रगल करेंगे। ही प्लेज बिशप G4, नॉट द बेस्ट मूव, इट्स नॉट अ बैड मूव, बट इट्स नॉट द आइडियल। एंड नाउ जस्ट C3, maintaining the center gives Hikaru a tiny edge. Come on Kesh. And chat, we have I think 6,000 plus people watching now. Stream like करो, एक और diamond membership giveaway करेंगे at 2K likes, so like the stream. And Hikaru now having his first thing. कई बार क्या होता है, आप ऐसी moves खेलते हो and इंजन कहता है noob, बट कई बार ना आपका ओपोनेंट को भी पता नहीं होता है मूव, क्योंकि उसने ये मूव देखी नहीं होती, एंड सडनली ही कुड मेक अ ब्लंडर, एंड फॉर एग्जांपल ही कुड टेक ऑन E5 एंड द पोजीशन इज कंप्लीटली इक्वल। इट इज पॉसिबल कि हिकारू ने ये मूव नहीं देखी एंड ही माइट आल्सो मेक अ मिस्टेक। समटाइम्स अ बैड मूव, a bad move can have good results. It does happen sometimes. जैसे होता है ना क्रिकेट में, वाइड बॉल पे स्टंप हो जाते हैं, सेम चीज है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। Gukesh not maintaining his clock would cost him his third. Exactly, I agree, Sachin. Sachin bhai ne bola, बिल्कुल सही बोला होगा. But I think it's at least better than what it was against Magnus. Magnus में तो भाई it was very difficult. It was 4, 5, 6 minutes behind at one point. Come on, Gukesh. Hikaru also taking some time. I think he's also not aware. So our guess, our prediction was correct कि Hikaru ने move नहीं देखी. And now the best move for Hikaru is Bishop G5 या C3. सो आप पिन कर रहे हो हमारे घोड़े को, हम भी पिन करेंगे आपके घोड़े को, पूरा रिवेंज स्टाइल। क्या हाल टिक्कू भाई? बिल्कुल बढ़िया भाई टिक्कू भाई। टिक्की खा रहे, आज ही खाया वैसे राज कचौरी में यार। कौन 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 हिकारू भाई को ना अभी वो जिगली पफ भेज देना चाहिए भाई, सुला दो हिकारू भाई को, टाइम पे हार जाएंगे, मजा आ जाएगा भाई। लेट्स गो हिकारू भाई, हार हो जाओ भाई। ब्रो नीड्स टू प्रैक्टिस टाइम चेस। आई थिंक if I'm being honest, Gukesh 100% practice for this, but his preparations might have been focused more towards the World Cup, right? I told you, D5 मेरी मूव खेली हिकारू ने, तो क्या मैं हिकारू हूं कि या फिर वो मैं हूं? नहीं, क्या मैं हिकारू हूं कि वो टिक्कू है? I don't know what's happening there. But D5 Hikaru could not find the best move, and Gukesh's gamble worked. Gukesh's gamble, GG. अरे 94 मारना था, इवन गुकेश डिडंट फाइंड द बेस्ट मूव, बट ठीक है। आई थिंक आई लाइक दिस पोजीशन, इट्स मोर सिंप्लीफाइड, एंड गुकेश यहां पे मूव्स फास्ट निकाल पाएंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिकारू विल इजीली कैरी, इट इज पॉसिबल मलय जी कि हिकारू जीत सकते हैं, टोटली वाइट पीसेस हैं, पोजीशन भी लाइकली है, बट स्टिल आई फील कहीं ना कहीं पे गुकेश इज सॉलिड, राइट? सो इफ योर ओपोनेंट इज कॉन्स्टेंटली पंचिंग यू एंड यू हैव अ सॉलिड डिफेंस,
you can tire him, and at some point you will get chances to counter attack, right? So Gukesh can have that strategy, and Hikaru against it might be very effective as long as you're able to hold the punches. If you get one punch on your nose, you're done. And there is the punch. Bishop G5, mistake from Hikaru Nakamura. He couldn't find the best move, and now Gukesh is absolutely fine in the game. Crazy chat, by the way. We have 5K people on Chess24 India. I think we have another 2K people on Chess.com India. Kahan se aap log aa rahe hain? Where are you guys joining from in the world? Let us know. Would love to know your location by send me location. And meanwhile, Queen E7. Oh, wait, is Gukesh going queenside? If Gukesh goes queenside, chat, ये गेम ड्रॉ नहीं होने वाली भाई. ड्रॉ भूल जाओ भाई. If Gukesh goes queenside, this is not going to end in a draw. Let me make it very clear right now. So depends, where is the king going to go? Queenside or kingside? Let's see. Okay, critical moment. Where will the king go? Will he keep it flexible for now? Will he just play h6, for example? Just keep it flexible, not commit to anything. जुपिटर, सन, मार्स. भाई मैंने सोलर सिस्टम का नहीं पूछा भाई. धरती पे कहां रहते हो? बर्न, स्विट्जरलैंड. नहीं भाई, क्यों जलाना सुलगा? अच्छी जगह यार. Come on, come on, come on. Yeah, he's keeping it flexible for now. कोई चक्कर नहीं है. And now if bishop h4, I can do the same castling either way, and I've gained a move, right? Because आपका bishop वापस चला गया है, and I can kick your bishop with g5 at any point. Gukesh, by the way, for the first time today, he's ahead on the clock. That is a great sign. For the first time on day number 2, Gukesh looking fine. Come on, let's go. This could be his first win. Great question by Ankit, by the way. Isn't the bishop pair usually better than 2 knights? It is. लेकिन in an open position, right? अगर आपके पास एक long range piece है, उसको long range चाहिए attack करने के लिए. If let's say I remove a few of these pawns, then bishop pair becomes strong. But right now bishop अपने pawn को देख रहा है. ये bishop attack तो कर रहा है, but अकेला है. In fact, after bishop 4, I can even play g5. And now lock your bishop here. This bishop has no future. So right now the bishop is not well placed, but long term they could have potential. So Gukesh has to be careful. Come on, come on, come on. Okay, the time advantage for Gukesh is increasing. That is a great sign so far. As you can see, it is 8 minutes 15 seconds for Gukesh, the world champion, and 5 minutes 45 seconds for Hikaru Nakamura, the potential future world champion challenger for Gukesh. So who knows? Hikaru, by the way, has qualified to the candidates, like will likely qualify. So he could be the next challenger. This could be a future world championship match. That's true, actually. Hikaru was trying to confuse Gukesh, but ended up confusing himself. But that's very common. It's not common to just Hikaru. Like, it happens quite often. And I think कई बार हम होता है ना, we want to confuse our opponents, but we end up confusing ourselves. Very, very common. Of course, I think मजाक कर रहा हूँ भाई. Jokes. Meanwhile, by the way, 3-minute edge for Gukesh now. Magnus game, by the way, chat update, it's dead equal right now. Magnus did lose the last game. If Gukesh were to win, he would go to Sida 8 point. Sorry, 7 points, sorry. So that's going to be amazing. Oh, Hikaru's still not moving. He's still not moving. And he plays something. Bishop E3, that's not a great move. But now D5? That's not easy, right? D5. Idea is, अगर आप ये pawn मारते हो, now castle, and suddenly Hikaru is lost. Okay, I'm going to be honest. If Gukesh finds D5, he's going to be the future GOAT. I'm going to make a claim, okay? Because I think this is tough, and I think uska rapid blitz बहुत strong होगा if he finds this. सिग्मा एडिट कोई बना लो भाई. कोई एडिट बनाओ भाई मेरा भाई. कोई तो बनाओ भाई. Okay, he finds D5. Bhai, he finds the best move, and Hikaru, to his credit, also finds the best move now. And now Queen B4. That's the best move. Also, Knight C4 also works, but Queen B4 again a tough one. Look at this. Queen B4 check, C3,
And queen takes e4, sacking the knight but attacking the rook. Not easy to find. Yo, Mr. Daddy Cool 7, where is Sahaj? Sahaj bhai is traveling for the World Cup. वो event भी आ रहा है. We are so packed कि now there is no time. Commentators gotta travel. Gukesh now thinking, see, this is the advantage. He has time on the clock now. So he can actually use that time to calculate. So important, right? He has time to figure out the important decisions. If he was lower on the clock, he wouldn't be able to think. Come on, F4 played. Where will the knight go? Knight c4 also possible is one move. Knight c6 would be quite passive. I think white is clearly better. And वो bishop pair का advantage फिर चालू हो जाएगा. So let's see what happens. And Gukesh finds the best move. Queen b4 check. Queen d2 आता है. And now queen takes e4. And Gukesh D is better. He is clearly better now. Now queen side castles. Ooh, it's still tricky. Hikaru saying, bro, I am going to attack you now. Come on, come on, come on, come on. Hikaru still wondering what is the best idea here. I think Gukesh at some point has to commit his king. First of all, if he tries to castle here, the problem is the knight is hanging. So if you move the knight, for example, I play, I don't know, knight g6, yeah, मैंने यहाँ पे चला, then there's bishop b5 check. And if c6 is bishop d3, and somehow my bishop pair is looking very strong, as we discussed. f5 aa raha hai, rook g1 aa raha hai, bishop d4 aa raha hai, and the knights look a bit stupid. So he plays knight c4, nice move, best move in the position. Bishop takes only move because I think यहाँ पे there was queen, some bishop pressure, बहुत सारा b2 pressure. They could be mating ideas long term. So white takes it, queen takes c4, b3 queen पे attack, and now queen drops to a6, attacking the a2 pawn. And look at this, bishop to d4, not even defending the a2 pawn. And now comes queenside castles and king to b1. What a crazy position. And after knight e4, Gukesh Damaraju has a clear advantage. He's clearly better now. Still shaken by Dania's strategy. Absolutely. And I think that was so hard to see. I mean, hear about actually. I hope like, yeah, I hope we get to know more, but very, very hard. I think for the entire chess community overall, it was such a shocker actually. We had some clue he was not doing the best, but itna hoga, like we really didn't know. And by the way, f3 played now, so knight e4 पे control कर दिया है, but these pawns are still weak. They're double pawns, right? They are very weak in the end game. The rooks can attack them. Knight h5 is in the air as well, putting more pressure. And ये pawn हमेशा pressure. Rook e2, by the way, is also an option because queen controls the e2 square. So कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि Hikaru is really struggling in this game, and Gukesh has a golden opportunity to win with the black pieces. How to get a rating in India? I think you have to play some federated events. You can check out aicf.in. That's where you'll find all the top events. By the way, Gukesh right now, again, behind the clock, he needs to play. He needs to play quickly. That's something we have noticed has been a problem for him, at least today. Let's go. Rook e2, Gukesh. We need to attack the queen. It's a free tempo on the queen. Rook e2 would be amazing. What is he thinking? What are the options he's considering? Hikaru loses the bishop pair or the game. I think bishop pair. Okay, ये नहीं खेला उसने. I think bishop pair is always important, but I think he had to take that knight. He had no choice. Come on, chalo bhai. Finds it. Beautiful chal. And queen c3 now. Hikaru कह रहे हैं कि भाई मैं ये knight मार के तुम्हारा भी double pawn कर लूं. By the way, Fabiano Caruana winning for the second time in a row against Magnus Carlsen. Oh my God. Bhai, Caruana is on a roll here. Bhai. And let's not forget, अगला मैच उसका गुकेश के साथ है भाई. भाई फॉर्म में आ गया बंदा. By the rook d6, idea clearly rook c6 to attack the queen. So maybe rook d2 from white, try to exchange some pieces. Let's see क्या करते हैं. And also defends the knight, right? So bishop f6, now I can आराम से take with the, okay, I can't take with the rook, pawn से ही मारना पड़ेगा. But ठीक है, still an advantage to have the rook on the 6 file. This paper is stone, paper, scissors. I don't think so. I think this is still very strong because
एट द टॉप लेवल दिस इज रैपिड चेस में बहुत गलतियां देखने को मिलती हैं. टॉप प्लेयर्स भी गलतियां करते हैं. क्लासिकल होता आई वुड अग्री विद यू, बट रैपिड चेस में आई थिंक बहुत मौके मिलेंगे हमें. आई डोंट थिंक दिस इज स्टोन पेपर, आई थिंक दिस इज प्योर हार्डकोर चेस. Chat, by the way, let's get to 2K likes. Do not forget diamond membership around the corner. That corner बहुत coming close. Meanwhile, Hikaru still thinking time drop होता जा रहा है उनका. 420 टाइम है. What a loop. Magnus beats Gukesh, gets beaten up by Fabi, then Fabi ulting. I mean, it's also nice. Like you get to see कि player के styles जो हैं एक दूसरे को सूट करते हैं कई बार. That's also kind of nice to see. I think Gukesh is clearly better. Whether he will win this depends. How does he handle the time pressure? I think he will handle it well. I'm hoping he wins. But फिलहाल के लिए, I think the bishop right now is a good piece. Let's keep that in mind. It's centralized, putting pressure on the king side and the queen side. तो इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा. कैसे कर रहे हैं इसको न्यूट्रलाइज? That's a big question. जब तक वो नहीं करते, I think the position is holdable for white. ये पीस अभी भी उम्मीद दे रहा है उसको. As an example, yeah, let's say bishop e5, rook c6, queen c7 mate. Just showing the ideas कि it can end that quickly. Ad आ गया, commentary रोको, lols. Meanwhile, chat देखते हैं अभी भी कोई moves नहीं है. 3 minutes, Hikaru dropping low on the clock. That's a good sign for the world champion. Song release किया है. ओहो वाह, मुंतजिर. अरे भाई आप तो पहले ही कुछ गाली देते हैं, अब song promotion करना है. This is Gukesh kind of position. He likes to grind this kind of games. I mean, this is anybody's kind of position, right? Rook 7th rank पे है तो चिल करेंगे भाई. 7th rank पे हमारा रुक बैठा है तो कोई स्ट्रेस नहीं है. Okay, shouldn't lag on time and don't. This game is ours. Absolutely agree. अगर यहाँ पे वो, I think time advantage maintain करेंगे, he will win this. Hikaru Nakamura has made another mistake, and now Gukesh is just a clear pawn up. He is just a clear pawn up. I think just take d4 and d3. Just push that pawn, weaken the white king, and win the game. Wow. Come on, just do it. Rook g1 is very logical, but एक चीज ध्यान रखना, आपका भी king weak है. For example, queen a3 and some rook check could be made. And also, I can always play b6 and king b7. So my king is not really critically weak. I can easily defend. This is the moment to strike. Absolutely agree. b6 also a nice move. King के लिए square बना के रख लो. वो मार भी सकते हैं. I think गुकेश के पास multiple moves है अच्छी. That is a good sign now. साहिल भाई कुछ खा लो भाई. अब तो दिमाग खाऊंगा मैं अपने नहीं, मतलब खाना खाएंगे. दिमाग नहीं. आलू भी नहीं. ओके, b6 बाय द वे नाइस मूव देखा. किंग b7 आ सकता है अब यहाँ पे. मे बी किंग b2 फ्रॉम हिकारू, वो भी वही कर सकता है. ही कैन आल्सो से कि भाई ही टेक्स. दैट्स एन इंटरेस्टिंग चॉइस बिकॉज नाउ आई कैन पिक अप दिस पॉन आल्सो. सो 2 पॉन मार सकते हैं हम. Why did Hikaru trade? I think because he wanted to damage black's pawn structure. He thinks कि that's my only way to hold a draw. I think Hikaru is happy with the draw. बिशप से क्या था कि दोनों को विनिंग चांसेस ज्यादा मिल रहे थे. मारने के बाद आई थिंक ही इज होपिंग फॉर अ ड्रॉ कि मेरे डबल पॉन, तुम्हारा भी डबल पॉन. दैट्स व्हाट ही इज होपिंग फॉर. बट ये पॉन मर रहा है भाई. साया का रेटिंग कितना है? मेरा रेटिंग आई थिंक चेस कॉम 2500-2600 घूमता रहता है. एंड फिडे इज अराउंड 2200. अगर फायर आर्म चैट पे ना हो तो दैट विल स्टे 2200. हिकारू रिटायर नाउ. नहीं भाई, वी वांट हिकारू टू प्ले. ही माइट बी द नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर. लेट्स नॉट फॉरगेट दैट बाय द वे. कम ऑन चैट. बाय द वे 3000 3500 लोग एक चैनल पे, 2000 लोग दूसरे चैनल पे. डू लाइक 3000 लोग, सो 6.5 ऑलमोस्ट 6500 लोग देख रहे हैं. डू लाइक द स्ट्रीम. हिकारू नाकामोरा से जीत रहे हैं अभी गुकेश. कैन ही कन्वर्ट दिस गेम? नाउ रूक e7 थ्रेटनिंग चेकमेट इन 1. तो कैसे रोकेंगे भाई? आंश भाई आपको तो मेरी साइड रहना पड़ेगा ना यार, ऐसे कैसे चलेगा?
नाउ रुक D7 ओनली मूव। गुकेश भाई ध्यान से, ओनली मूव इज रुक D7। डू नॉट गिव दिस चेक, डू नॉट गिव दिस चेक। वी नीड टू पुट प्रेशर ऑन दिस पॉन, आई थिंक। कम ऑन, रुक D7 गुकेश, ओनली मूव, ओनली मूव, ओनली मूव। ब्लू एरो चेस कॉम पे जब भी दिखे भाई ध्यान रखो, द प्लेयर हैज टू फाइंड इट। नाउ गुकेश बिहाइंड द क्लॉक अगेन, थोड़ा प्रेशर बिल्डअप होते हुए। Come on, come on. Enemy का full, yes. Beautiful calculation. And now if you take, I think that in game is completely winning. So यहाँ पे most likely white को रुक game में रखना पड़ेगा, check देना पड़ेगा, and then yeah, he gives a check, and now maybe he grabs this pawn, yeah, grabs that pawn. And now chat, question for you. What is the black army's biggest asset? गुकेश का सबसे बड़ा asset यहाँ पे क्या है भाई, बताओ भाई। यू आर इरिटेटिंग यार, अरे चलता है भाई, कई लोग प्यार करेंगे, कई लोग हेट करेंगे, ये लव हेट रिलेशनशिप चलता रहता है लाइफ में। बी योर सेल्फ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट डायल्यूट योर सेल्फ। मैंने कहीं कोट पढ़ा था, डोंट डायल्यूट योर सेल्फ फॉर एनीवन। भाई वो कोट मेरा फेवरेट है। एच पॉन, एब्सोल्युटली, ये पॉन है हमारा एसेट। अगर सब कुछ हटा दें तो ये पॉन क्वीन बन जाएगा। सो इफ नथिंग हैपेंस आई विल जस्ट पुश माय एच पॉन एंड क्वीन। सो व्हाइट को इसका ध्यान रखना है। Meanwhile, white will try to attack the king की तरीके से, will try to attack the rook also. So यहाँ पे he has to maintain that defense and also push the h pawn. For example, h5 here would be a good move. Come on. By the way, Magnus Carlsen completely lost 2 games in a row against Fabiano Caruana. What an upset. By the way, Queen G1 check. Mistake by Gukesh. Slight error. Okay, he's still better, but he's not completely winning now. Queen F5. Attacking the rook. Come on, come on, come on. Time. 41 seconds for the world champion. Can he hold on to his nerves? Will not be easy actually again. You pronounce Sehaj wrong. Yeah, I don't know. Like, I somehow always, because I have known Sehaj for a long time. So I have known him when he was a child, like he was playing chess. He didn't know me then because he was a GM, so I knew him. And me and Prakhar Gupta, whom you might know as Prakhar ke Pravachan, and a few of her friends used to call him Sahaj then for years. So that's why it got stuck with us. So yeah, it's hard. It's a hard habit to get it off. एसेट तो चला गया, अगर ये एसेट मारोगे तो हम नया एसेट निकालेंगे भाई। some ideas to attack the king. Who's your favorite DBZ character? Yeah, it has to be Goku, but also I do have huge admiration for Vegeta though. भाई मानना पड़ेगा। सबसे घटिया तो भाई यामचा है भाई, काहे को है भाई उसमें। वैसे कौन कौन भाई, 1 minute for Hikaru, still thinking. Come on, come on. Yup, I'm from deepest Faridabad. By the Queen F5 played Queen C6. एसेट को मेंटेन करने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट कब तक कर पाएंगे। गेम थोड़ी इक्वालिटी की बढ़ती जा रही है। Yeah, we were in the same chess team in school actually. Oof, pressure on this pawn. Come on, Gukesh. थोड़ा, just don't give that pawn away if possible. Just try to maintain that pawn for as long as possible. Hikaru will give us a chance. He will give us a chance. अरे मजाक करो सेठ भाई। D4 played and now Queen C3 is in the air. Let's keep that in mind. Always a threat. अगर आप यहाँ पे अटैक करते हो, मान लो Queen H5 खेलते हो, that is lost. Queen C3 and D3 and resign करना पड़ेगा। तो इसको पॉन को मारना मुश्किल है भाई। आई मीन वो जब वेजिटा पहली बार आया था तो किससे, वो साइबरमैन से हार गया था यार। आई मीन कम ऑन यार। ओ बाय द वे, क्वीन E4 नाइस रूक। यू कैन नॉट प्ले क्वींस बाय द वे, दैट विल बी ब्लंडर। No, 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 no. Isn't this close to a draw now? Apparently it's winning. Okay, that's great. But I thought like इसमें chances ज़्यादा रहेंगे draw के. Ooh, has to be careful. By the way, the best move is King A6. Wow. That's impossible. That's impossible. That's literally impossible to find. Like, no chance. भाई कैसे निकाला भाई? That's crazy. Wow. भाई गुकेश legend bro, legend, legend.
मानना पड़ेगा भाई, गुकेश ओपी एंड ही इज अगेन बेटर नाउ समहाउ. -1 advantage, let's go. Queen c5, queen c3. Oh, he's repeating, he's trying to gain time on the clock. Come on, come on, come on, come on, come on. Queen c5, queen c3 has to be the idea, I feel. It has to be the winning plan. 14 seconds for Gukesh. 13, 12, 11, 10. Ooh, a4, big blunder. Rook b8 was a draw with queen b7 ideas. Hikaru has blundered the game. Queen c5, winning for Gukesh. Played, Gukesh, come on. No. Queen c5 was winning. And now it's again close. I think it's a draw now, maybe. अरे यार, हमारा एसेट ही गया अब. अरे यार. Yeah, the time was a factor for sure. The time was a huge factor, I think. He's still trying, but this is a draw. This is a draw. I think he's trying king a5, king b4. That's his plan, basically. But it's going to be very difficult to execute that, actually. Very, very difficult. He needs to get better. Time pressure, it's very hard sometimes, Dad. Very hard sometimes. Yeah, okay, so it's played. Yeah. 9 seconds, 8 seconds, king a5, nice move. He has gone to b4. Is this enough counterplay? Is this enough? Don't think so. I think दो pawn मरेंगे अभी back to back, but I think white has enough counterplay here. And Hikaru will not lose this. Very unlikely. King here. Let's take the f3 pawn. Rook b3, come on! Play, check! There was a golden opportunity there for Gukesh. Wow! Rook b3 check and simply takes the pawn would have been a win. Oh, that was so close. Aye. Now it's a draw. Although the game... king is cut off. It's a draw, yeah? It's a very simple draw now. Okay, draw is not so bad, but yeah. I mean, that could have been a win. That could have been a win. Okay, both players trying to make improvements, but this is just a draw. Even I will draw this against Gukesh, I think. So Hikaru is not going to lose this. But then Magnus has lost his second game, and this is a draw. Magnus loses 2 in a row. And iska matlab, the standings, as you can see, are very, very close. 7.5 for Caruana, 7.5 Magnus, 7 Hikaru, 6 Gukesh. And final matchup of the day will be Gukesh Domaraju against Fabiano Caruana. Chat, let's get to 2K likes jaldi se, because ध्यान रखो second diamond membership giveaway होने वाला है जल्दी से. Stream like करो, and let's hope Gukesh can defeat Caruana and end the day on a high. Let's not forget, yesterday Gukesh was nowhere close to first rank before the last round, and then he defeated Caruana 2 games in a row and led the tournament. And that's still possible. So anything is possible. Let's have faith and let's see what happens. Crazy Fabi comeback. Yeah, he defeated Magnus twice. That's insane. Why does white have 0.3? Because white moves first. And imagine a boxing contest jahan pe the first guy gets to punch first. Like, the first guy has an edge, right? Because what if I knock you out in the first punch itself? So automatically, it's said that white has a slight edge. But as you play moves, I think with time, with more moves coming in, the advantage reduces. Gukesh and Fabi changed positions. Lamau. Yeah, I mean, that's true. That's true. But okay, I mean, the difference is not much, right? ऐसा नहीं है कि Magnus 15 point बैठा हुआ है. So it's just like, for example, Gukesh with one more win today would have been on 8. It's just one game difference right now. So I wouldn't worry too much. Fabi भी like मुझे हल्के में ले रहे थे. Fabi कुछ तो ब्रेकफास्ट में तगड़ा खाया है आज. कुछ तो खाया है तगड़ा. क्योंकि अपना टाइम आएगा. अपना टाइम आएगा. अरे बिल्कुल आएगा भाई. आज ही आएगा भाई. अभी देखना. क्योंकि by the way, white pieces है. Let's hope so he can beat Fabi in the first game. Fabi, by the way, on an absolute roll today, defeating Magnus twice. So इतना आसान नहीं होगा इस बार. तुमने क्या खाया? मैंने क्या खाया यार? आज मैं दिन को स्पेक्स बनवाने गया था, तो आई एट एट हल्दीराम. शाम को मैंने क्या खाया? कुछ तो खाया भाई, याद नहीं है. आपकी शादी हो गई?
बहुत जल्दी भाई, बहुत जल्दी करेंगे। आपने बोल दिया है आनंद भाई, तो करनी पड़ेगी यार। कौन सी गेम है ये है लूडो नहीं चेस। गुकेश विल एंड विद 10 पॉइंट्स टुडे, वाओ। बोल्ड प्रिडिक्शन। आपके मुंह में घी शक्कर आइसक्रीम जो खाना है भाई, सब आपके मुंह में। भाई मैग्नस गिविंग चांस टू फैबी, ऑफ कोर्स, एंड वी वांटेड ड्रामा राइट, वी वांट द स्कोर टू बी क्लोज। अगर मैग्नस दोनों गेम जीत गया होता तो ही वुड बी राइट नाउ ऑन 11.5। टूर्नामेंट ही खत्म हो गया होता भाई। सो यू डोंट वांट दैट आइडियली। फैबी एट देसी घी यार। ये मिल्खा सिंह की मूवी नहीं चल रही कि बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा और देसी घी अभी खत्म करना है, दैट्स नॉट इट। Are we getting a glimpse of 2014 Fabi? Hopefully not against Gukesh. He can show it against Magnus and Hikaru. Two more games today, chat. And today is day number 2. Tomorrow is the final day. And कल हर win के लिए 3 point मिलेंगे. So standings I think can change drastically with every match. कल 1 point था, आज 2 point है, कल 3। एंड अगला मेंबरशिप चैलेंज होगा 2000 लाइक्स पे, तो कीप लाइकिंग द स्ट्रीम। एंड चैट, कल खत्म होगा इवेंट, फिर हमारा 29th को, देन 30th 31st इज रेस्ट, एंड फर्स्ट को चालू होगा वर्ल्ड कप। अरे थैंक यू बदन भाई। आप अभी पूरा सेटअप नहीं है, आई थिंक इट्स नॉट परफेक्टली सेटअप। एज यू कैन सी सेंट्रलाइज भी नहीं है अभी, बट कुछ चीजें अभी और डालनी है इसमें। अभी मैं थोड़ा सा वर्ल्ड कप के बाद इसको प्रॉपर्ली सेटअप करूंगा। ये किताबी भी सेटअप नहीं है अभी प्रॉपर्ली, बहुत चीजें करनी है, बट या इट्स गोना लुक बेटर देन अर्लियर फॉर श्योर। Sir, be unbiased. We do want an Indian to be champion. Of course. Of course, we want an Indian to be world champion and champion here as well. भाई बात तो सही है, शादी में फ्री के खाने का मजा अलग ही है। वाह वाह, क्या कह दिया भाई। मेरी शादी में नहीं होगा बस। गुकेश वन, मैग्नस लॉस्ट, गुकेश इज लास्ट, मैग्नस एट द टॉप, कंफ्यूज्ड। यार आई थिंक टॉप लास्ट करना नहीं चाहिए, इट्स टू अर्ली फॉर दैट। आई थिंक अभी जब हम स्टार्ट करते हैं कोई स्कूल में कॉलेज में साल, अभी एक ही टेस्ट पेपर हुआ है, अभी बहुत, अभी तो फाइनल एग्जाम्स बाकी है, अभी तो मिड टर्म बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। Your favorite present Indian player? Pure chess, I think has to be Gukesh, I think, because उसने हमें इतनी खुशी के moments दिए हैं. But I think overall it's, I mean, all of them, yeah. I mean, everybody gives us moments to celebrate. Like चाहे वो विदित हो, Prag हो, Arjun हो, Gukesh हो, like even others, Arvind, Nehal, like all of Divya, Hampi, like let's not forget women players as well. Vantika, Vaishali, Harika. कल तो मुकेश टॉप था, तो अभी अभी बॉटम है, कोई बात नहीं, आ जाएगा टॉप पे फिर से। आई थिंक एक विन तो चाहिए 8 पॉइंट पे आने के लिए। समय की तरफ से ओके, ये तो हो गया। सारे ही मस्त है, एग्जैक्टली exactly. फेवरेट चेस प्लेयर ऑफ ऑल टाइम एनी कंट्री? उफ, खाली चेस प्लेयर यार, हैज टू बी मैग्नस ना यार। आई थिंक दो ही लोगों में डिबेट है, मैग्नस स्लैश कस्पारोव। मे बी फिशर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट इक्वेशन, बट आई थिंक इट हैज टू बी मैग्नस। कमाल आदमी हो, घी नहीं लाए। पराठे किसके साथ खाऊंगा कल, फिर पराठे भी तो खाने हैं ना भाई। यू आर लाइंग अबाउट व्हाट? क्रैमनिक को हरा दो भाई, मैं क्रैमनिक को नहीं सकता भाई, खेलना ही नहीं है मुझे यार, मन ही नहीं है। व्हाई नॉट ताल यार, ताल, Tal, was like his games were beautiful, but they were not historically the most accurate. Like accuracy, अगर तुम ताल की games की देखोगे, they would not be that high. Like they would not be that high. So from that angle, maybe greatest player of all time, maybe Tal would not be part of that debate. But maybe top 10 of all time, definitely. कुकेश फैबी स्वॉप्ड, तो अभी स्वॉप कर देंगे भाई। आपका रेटिंग कितना है? तुमसे ज्यादा, मैग्नस से कम। भूख लगी है, भूख तो लगी है भाई सच में। डिनर मैंने, अच्छा अभी याद है, डिनर किया नहीं है मैंने एक्चुअली तभी। Vishy sir, I think also can be an option for sure. But I think Vishy sir maybe didn't have the best record against Kasparov, for example. So I think top 5 players of all time, Vishy sir definitely is part of that. I think for me at least, he'll be top 5 all time. But number one, maybe I think will be Kasparov slash Magnus. I think so at least.
मैगी गिफ्ट करो भाई, सहज भाई, मतलब कितनी मैगी, 23-24 मैगी पेंडिंग है भाई, वो देंगे तो हम खाएंगे ना यार, आपको भी बांटेंगे। समय को बुलाओ, मजा आएगा। प्रोड्यूसर साहब आ जाओ भाई, स्ट्रीम पे आ जाओ भाई। हम, पता है हमारे प्रोड्यूसर का नाम भी समय है, तो जब भी आप ये बोलोगे हम उसी को ले आएंगे स्ट्रीम पे। नेक्स्ट मैच कितने बजे होगा आई थिंक? वो कह रहा है मैं नहीं आ रहा भाई। मेंबरशिप 2K लाइक्स भाई, यू आर फार अवे। ऐसे डैड बोलते हैं ना कि अगर तुम पेपर में टॉप करोगे तो मोबाइल फोन मिलेगा, वैसे ही 2K लाइक्स पे मिलेगा भाई मेंबरशिप, बट यू आर फार अवे, 700 लाइक्स रिमेनिंग। Choose one. I will choose Magnus because I personally couldn't see Gary in action as much, right? Because I mean, the era was different, like when he was dominating. So from me to see it happen live, like that means a lot more. So maybe Magnus, I will choose. Magnus आ रहा है वर्ल्ड कप के लिए? नहीं, Magnus is not coming. आप जीएम को भी हराए हो, ऑफ कोर्स बहुत बार, बट आई थिंक परसेंटेज वाइज मे बी इट्स नॉट दैट हाई, दैट नंबर इज नॉट दैट हाई। आपका स्कोर विजिट पे गलत दिख रहा है, रियली? नहीं, वो पिछली, वो इनकी लास्ट गेम का है। सो द लास्ट गेम दैट हैपेंड, आई थिंक सो, जैसी गेम चालू होगी दैट विल बी फिक्स्ड, डोंट वरी। एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट द लेफ्ट साइड थिंग, वो उस पर स्ट्रेस मत दो, बिकॉज वो 2 पॉइंट्स काउंट नहीं कर पा रहा विन के लिए। लुक एट द स्टैंडिंग्स बिलो मी। पराग वर्सेस गुकेश, ये आईडी क्यों लिख रहा है एक बंदा भाई? 1200 वॉचिंग, बट भाई पहले भी लोगों ने भी तो लाइक किया होगा ना, एंड पीपल की पॉसिबिलिटी, सो इट्स पॉसिबल टू गेट 2K लाइक्स। वेयर वुड यू रैंक साहिल टिकू? उसके लिए वो बहुत सारे प्रिंट करने पड़ेंगे पेज, सो आई थिंक मे बी वी अवॉइड वेस्टिंग पेपर, या हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ शीट्स। How good was Casablanca? Casablanca is very interesting. Magnus once mentioned he thinks Casablanca is the most talented player of all time. I saw it in an interview somewhere. But I've also seen top players say that his rating must be around 2200. Casablanca. Imagine. Because it was also a matter of time, right? उस time पे क्या होता था कि um, like there were not as many strong players as tough competition wise, so you could win even with being just slightly strong. So I have seen very contradictory opinions about Casablanca. Very hard to say ki, where do you put him in terms of rating. 2 more games to go today, yeah. Oof. What if another Indian player wins world championship? I think it's good for Indian fans. Like, would I prefer कि Hikaru जीते world championship या कोई और Indian? I would prefer some other Indian. Between Gukesh and some other Indian, maybe slight preference to Gukesh because you want one dominant player. But I mean, we want an Indian to be world champion. That's very important. World Cup venue, I think it's I forgot the resort. Rio Resort, I think, in Goa is the venue, as far as I remember. No, I've not played Saga Bhai over the board. Saga Bhai doesn't play as much, and neither do I. तो आजकल तो किसी से ही मैच नहीं होता है over the board. ताल और क्या ताल यार, ताल, for me it's ताल for sure. Your favorite opening? London system भाई, the best, the सबसे bestest opening. डाइटिंग और वेट लॉस का क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ भाई, सो डाइटिंग, बहुत कुछ हुआ, मतलब बहुत कुछ हो चुका है, इतना कुछ हो चुका है कि मैं क्या बताऊं, बहुत ही ज्यादा कुछ हो चुका है एक्चुअली। बहुत मेहनत करी गई है। गोवा के बीच पे चिल्ड पानी पियेंगे, या पानी पी रहा हूं मैं एक्चुअली अभी, आई एम ड्रिंकिंग सम वाटर राइट नाउ। You think Arjun or Nihal will also qualify for candidates? Arjun though, I am hoping, because he does deserve it. Yeah, God forbid kitni baar second aayega banda. Like he deserves it too much. I think more than anybody else in the world. Nihal, I think I've always believed is one of the most talented players in the world. So it's possible. But Nihal, I think somehow has not shown that sign yet that he can like win such a top level event. So let's see what happens.
स्टार्ट अभी 1-2 मिनट हो जाएगा, 1-2 मिनट लगेगा आई थिंक। अभी 1 बजे आई थिंक 12:59 हो रहे हैं, 1 बजे चालू हो जाएगा इन 1 मिनट आई थिंक। Do you think rapid chess is the future? Yeah, the question is, do you think T20 is the future? It's very hard to say. Maybe it is. But also, I think there are fans of each format. ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि भाई नहीं भाई, classical chess, is the true chess. Like बाकी सब कुछ, is only for fun. Like ऐसे भी लोग हैं। कई लोग कहते हैं classical chess कौन खेलता है रे भाई, 6 घंटे बैठे रहो भाई, इतने पिक्चर देख के आ जाऊंगा भाई मस्त वाली। So there are people on both sides. चेसेस बंद हुआ था आई थिंक, टिक्कू चैनल चल रहा है अभी भाई, सो इट्स क्रॉस 100K, तो दैट्स गोइंग ओके। व्हाई इज हिंदी प्रोमिनेंटली यूज्ड ऑन ऑफिशियल इंडिया चैनल? आई थिंक बिकॉज उसका रीजन एक स्पेसिफिक है कि somebody who really wants just English commentary, 100% English, can always go to Chesscom Global for most events and see commentary there. But somebody who prefers Hindi has no choice. तो इसलिए हम इंग्लिश करते हैं यूजुअली, कि जिनको हिंदी इंग्लिश दोनों पसंद है वो लोग आ सकते हैं। Will Hans even qualify? Oof, the toughest question. I think he has a good chance. I genuinely think he has a chance. देख लेंगे क्या धोया उन्होंने 18-6 से अभी in the speed chess championship. I think he genuinely has a chance, but maybe not for candidates, maybe for top 8. I think he will qualify into top 8 and then maybe get knocked out. What if it's Prabhu Gukesh? तो मजा है ना भाई, हारे तो इंडियन, जीते तो इंडियन, बढ़िया है भाई, इससे बेटर क्या हो सकता है? हार ही नहीं सकते वर्ल्ड चैंपियनशिप, इससे बढ़िया कोई ऑप्शन हो ही नहीं। टिक्कू करण जौहर, यार पता है ये करण जौहर के मैंने वो स्पेक्स जो नए थे, मैंने जानबूझ के वो बड़े वाले फ्रेम नहीं लिए, बिकॉज करण जौहर के पास वही फ्रेम्स है। तो मैंने कहा जानबूझ के डिफरेंट स्पेक्स लेता हूं ताकि करण जौहर ना लगूं, बट अभी भी लग रहा हूँ अपेरेंटली। विच ओपनिंग शुड आई यूज? आई एम 500 योलो भाई, इटालियन या लंदन, दो ही ओपनिंग्स है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट फ्री स्टाइल? या देखो, फ्री स्टाइल डांस हो या चेस, तो कभी कभी बहुत बढ़िया लगता है, बट पूरे साल में भी आई एम नॉट श्योर। they have another event coming up, the final event of this year, right, just after the World Cup, so let's see what happens. Your idol in chess as we are growing up, I think for everyone it's been Vishy sir. I think इसका तो एक ही आंसर है हर किसी के लिए, it was always Vishy sir. The fact that I can interview him now, meet him now sometimes is crazy to me. वर्ल्ड कप में सागर कमेंट्री बिल्कुल भाई, आई थिंक सागर, तान्या, सहाज, मी, हर्षित एंड अमृता, वी ऑल विल बी देयर। टिकट भाई, टिकट भाई, टिकट भाई क्या होता है भाई? आई नो रात के 1 बज रहे, मैं भी थका हूं, बट एक लिमिट भाई। ऑटो करेक्ट का गलत इस्तेमाल। क्या हुआ अब तक? गुकेश मैग्नस से हारे और हिकारू से ड्रॉ किया। अब फैबियानो कारुआना से मैच है, 2 गेम होंगे, स्टैंडिंग्स बिल्कुल नेक टू नेक चल रही हैं। इफ गुकेश विंस ही कुड एंड अप इन फर्स्ट प्लेस, इफ ही लूजेस ही कुड एंड अप इन लास्ट प्लेस, तो कुछ भी पॉसिबल है मेरे भाई। एंड कारुआना इज इन ग्रेट फॉर्म, मैग्नस को 2 गेम लगातार हराई है। Noderbeek na yaar, I think he is also somebody who will get knocked out somewhere around top 8. Like Noderbeek ने भी कोई ऐसा, I think he had better results in 2023. तब से we have not seen like a crazy run for Noderbeek. So I'm doubtful कि he is going to qualify. But it will be close. It will be close though. Gukesh also lost 2 points. Yeah, he also did. Absolutely. थोड़ा ऐसे डाउन करके कमेंट्री कर, वरना नेबर भाई ये मेरा लो एनर्जी है। क्योंकि गला कल काफी दर्द कर रहा था आफ्टर यस्टरडे कमेंट्री, एंड ऑल्सो रात के 1 बज रहे, तो ये मेरा लो वर्जन है भाई। सो आई डोंट नो व्हाट टू से। Why Gukesh is always choking in such big tournaments? Yeah, I don't think it's choking. First of all, I think it's very obvious he's right in the running. He's 1 win away from first place. So I reject the notion he's choking right now. And even if something like that happens, I think it's a very, very tough tournament, right? World number 1, 2, 3. And the games, let's go. D4, knight, F3. Will we see a London? That will be crazy. Oh, no London now because G6.
Kings Indian defense on the board. Let's go. The games have started. थोड़ा रैप करे कमेंट्री करो भाई. ओहो, वो रैप मैंने किया था भाई. 1.6 मिलियन व्यूज ऑन इंस्टाग्राम. बट मे बी अभी नहीं, कभी और. ब्लैक के लिए ओपनिंग्स फॉर 500. भाई स्कॉलर्स मेट हो जाना है. क्या ओपनिंग सीखोगे तुम अलेक्जेंडर भाई. लव यू भाई, बट मुश्किल लग रहा है. आप फ्रेश डिफेंस खेलो, मे बी एटलीस्ट स्कॉलर्स मेट नहीं होगे. वर्ल्ड कप के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होंगे फॉर इंडिया? आई थिंक देयर आर 21 पार्टिसिपेंट्स. बहुत प्लेयर्स है भाई इंडिया के. बाय द वे, बिशप E3 played. I think आइडिया सिंपल है. क्वीन D2 castles and full on attack on the king side. But यहाँ पे knight G4 could be a plan for black at the right moment to attack the bishop. So let's see कैसा रहेगा. फिलहाल के लिए Caruana having a deep think. This is a super super important game chat. Gukesh जीतते हैं तो he could stake a claim to finishing in first place even after day 2. In fact, I think मैंने से पूछा क्या था कि if you had to summarize Gukesh his chances in this tournament, something like that in one word, he said like wild card, which was very interesting to me. Ki, like he thought he had no chance or less chances. So there's a good chance ki Gukesh could surprise everybody here. Let's do it. Siddharth, I agree. I think his intuition is not that great, but as we know, intuition is basically the ability to find the right decision with less effort, right? To some extent, your mind kind of directs you in the right direction, and it just means it's just experience at the end. So the older you get, your intuition is likely to develop. So the fact that Mukesh is 19 years old and became world champion at 18, I wouldn't worry too much about it. The fact that Magnus' intuition is better doesn't mean कि Gukesh's will not be, matching Magnus's in a couple of years. बाय शाट नाइट G4 खेला. बिशप घुमा के G3 पे आ चुका है. अभी पोजीशन ठीक लग रही है. ओ H4 भाई. H4 played. So ED4 now only move for Fabiano Caruana. ED4, Knight D4, सेंटर खुल रहा है. किंग साइड पे फ्लैंक अटैक. गुकेश has just raised the stakes. Chat question for you. Who do you think tops the table? Good question by Mr. Abe Sojaji. So, what do you think? Who do you think tops the table after day number 2? Will it be Magnus? Will it be Fabiano? Will it be Hikaru or Gukesh? Come on, chat. By the way, knight C6, nice move played by Fabi. Apparently, taking was the best move, but Gukesh drops the knight back to F3, attacks the G5 pawn. सब लोग मैग्नस लिख रहे हैं. डू यू थिंक हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट और नॉट? आई थिंक हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट इफ टैलेंट डजंट वर्क हार्ड. लाइक हार्ड वर्क इज कंपल्सरी फॉर बीइंग सक्सेसफुल. इट्स नॉट अ इफ और बट, इट्स अ मस्ट. उसके बाद यू नीड लक और टैलेंट टू सप्लीमेंट इट. By the way, now G takes H4, very risky move by Caruana. Rook takes H4, and suddenly Gukesh has some initiative potentially. कम ऑन साल में कितना कमा लेते हो? अभी भेजता हूँ बैंक स्टेटमेंट. अभी अभी भेजता हूँ, मेल करता हूँ भाई. वैसे तो अभी बैंक बैलेंस खाली है भाई. इफ यू नो व्हाट आई मीन. जिसको पता है, एनीबॉडी हु कैन गेस क्यों खाली है, दे कैन गेस. बट या, हिकारु's मैग्नेस कंप्लीट हो गया क्या? बिल्कुल भाई. हिकारू और वो भी गेम चल रहा है. आई थिंक द गेम इज गोइंग ऑन. वेरी क्रेजी गेम आल्सो हैपनिंग इन दिस पोजीशन. बट फिलहाल के लेट्स स्टिक टू फैबी अगेंस्ट गुकेश. गुकेश कॉन्टेम्पलेटिंग नाइट से मारूं, F5 लाऊं, रुक से मारूं, बिशप से मारूं. 3 ऑप्शन है. कम ऑन कम ऑन कम ऑन. मुकेश बाय द वे 2 मिनट ऑलमोस्ट अहेड है. सो दैट्स नाइस टू नो कि टाइम पे आ गए हैं. when talent doesn't work hard, why? When talent doesn't work hard. Gukesh for Fabi 0. Let's hope so. मंथ एंड तो नहीं भाई. आई डोंट थिंक दैट्स द रीजन. बट एनीवेज, वो तो हमेशा हल्का रीजन होता ही है. क्योंकि विल कम बैक टुमारो. ही विल भाई. आज ही करना है कम बैक. कल किसने देखा है मेरे दोस्त? आज करना है कम बैक. come on, Gukesh, thoda tez. We cannot let go of our time advantage here. We have to take that pawn quickly. मार दो भाई. खत्म कर दो उस pawn को. Come on. Why is he thinking so much? Come on. अरे यार, क्या चल रहा है भाई?
I think Gukesh, okay, using his time as of now, see, as long as he's ahead of Fabi, I'm happy. Fabi से पीछे नहीं जाना है, that's very important. उससे पीछे नहीं जाना है बस. वर्ल्ड कप का टिकट नहीं भाई. व्हाट्स द नेक्स्ट आफ्टर वर्ल्ड कप? आफ्टर वर्ल्ड कप आई थिंक विल बी, आई थिंक freestyle chess, then it will be, I think, world rapid and blitz. There'll also be speed chess championship games in the middle somewhere there, depending on how well Plug does and so on. Plug का match, by the way, speed chess का 30th को है. I forgot that because I think we might not be streaming this because of World Cup, but I think वो भी एक match crazy होगा. If he wins, then we have Plug against Magnus, तो वो पक्का stream करेंगे. भाई गुकेश चल क्यों नहीं रहा है भाई? यार, he was 2 minutes ahead. We want him to maintain that time difference. Okay, but okay, maybe he's coming with some creative idea here. First of all, the logical choice usually feels knight h4 to get to f5, but I think the problem is rook e8. And somehow यहाँ पे मेरा king थोड़ा weak है. अगर f3 खेलोगे defending this, knight e3, don't like this. And he takes with the knight, so he goes for the logical choice. But what now after rook e8? The last time Gukesh took too much time, he played a bad move. So let's see what happens now. Right now, knight h4 was the worst capture among all three captures. If we go back to this position, best was rook h4, second best was bishop h4, and third best was knight. So Gukesh did not find the best capture there, unfortunately. Salva, any updates on Ding? Will he be playing anytime soon? Ding played the Speed Chess Championship just yesterday or 2 days back, or yesterday, I think he played it against Hans, and he got destroyed. So it was hard to watch, actually. I'm kind of hoping Ding practices a bit, gets back his confidence, and then plays some events. He's such a sweet guy, and we would love to see him do well. Skincare batao for the glow. Glow likh raha hai kya? Ooh, glow. Wow. Thank you. In how many lives NM can become a GM? NM बिल्ली तो नहीं है, तो एक ही लाइफ में करना पड़ेगा मेरे भाई. बाद में फिलहाल के लिए गुकेश, why is it taking so much time? I don't get it. I think he's had two very, very long things. Bishop e2 played. Now you kind of unpin this, but now bishop takes c3 is a simple choice. I think you could do this, pawn takes, and apparently queen g5 is very, very strong. Even, for example, rook e4. I think just winning that pawn is very logical. Let him cook. भाई करेंगे भाई, cook भी करेंगे. How many games are left for Gukesh? I think this is the second last game. 6 games in. Okay, I think so. Caruana plays the best move, but he doesn't include bishop c3. This is a chance for Gukesh to play rook c1, defend that knight, ताकि मैं रुक से मार पाऊं. And ये रुक कल को f3 पे आके अटैक भी कर सकता है. Or he can push the knight to d5, sack that pawn on b2 that is not so important. For example, bishop b2, rook b1, bishop g7, knight c7 यहाँ पे आ रहा है, bishop f4 यहाँ पे आ रहा है, and I am basically attacking black here in a very, very strong way. So I think इस knight को बचा सकते हैं with knight d5. Oh, मेरा कैमरा गया. Okay, changing batteries. हमारे प्रोड्यूसर साहब meanwhile बड़े स्मार्ट दिख रहे हैं उनकी छोटी सी डीपी के साथ. And suddenly 4 very smart players show up. Come on Gukesh bhai, फोटो में स्माइल, हमें रियलिटी में भी स्माइल चाहिए at the end of day 2. By the way, Gukesh has played knight to f3. Not the best move, but a decent one, and attacks the queen, so cannot be a bad one. But now black can again take on c3. चलो चले मितवा, बिशप से नाइट मार दे, ऐसा मत करना. Oh, Caruana doesn't take it. So Gukesh Gamble working again, gets another opportunity to basically avoid the damage to his structure. My camera is back. He can again go 95. Let's go 95 here. We need that move. That knight is very close to Black's king. Why is there less talk about Arjun? Even streamers ignore Arjun. ऐसा नहीं है. I think, in fact, everybody wants to see Arjun at the top level. I would say maybe it's because
I think Arjun maybe media wise he's less. I think Gukesh के इतने collabs, reels आते रहते हैं. Arjun is not as active. And I think it's very hard to know why. It's very hard. It's very interesting. When I think about it, Arjun had the highest rating for an Indian. He had a rating higher than Gukesh. Gukesh, though, is obvious he's the world champion. Maybe I think it's because he didn't win that big event. If you look at Prague, he won the World Cup or came second after Magnus. Then Gukesh won the World Championship. So he's not won that one big event, I think. Maybe that's why that's the case. It's not really to do with people trying to exclude Arjun. That's not the case at all. We all love Arjun. So by the queen d2 played, and now finally you defend that knight. So good news. अब ये मारना अच्छा नहीं होगा, I think. I mean, it's still okay, but not as effective as it was earlier. Why is Gukesh taking so much time? God knows why. Luckily for him, Caruana भी time ले रहे हैं, but he has been taking so much time as of now. Come on, come on, come on. ये, I know, I know pressure है. I know it's the last couple of games. I know Caruana is in form, but we need to play quickly, Gukesh. Knight b5. I think usually हमें सवाल पूछना चाहिए. What is the advantage of playing? अभी तो Caruana की move है, but what is the advantage of playing knight d5 और knight b5? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों c7 अटैक कर रहे हैं, लेकिन knight on d5 could also go to f6, could also go to f4 to attack the queen, could also give a check on e7. So that's why knight d5 is better. And तभी देखो black ने मार दिया knight. That knight was very strong. And he takes with the pawn. Very interesting. And very important, if you take this pawn, then you know what the best move is, chat? You know what the best, कौन guess करेगा? कौन है हमारी chat का, alpha 0y? What is the best move for white after rook takes e4? There's only one move. Only one move. Yeah, Mr. Kushwanji bilkul has hit the nail on the head. And couple of other people, I think, as well. Lakshya, I can see. It is queen side castles. That is insane. That is insane. But okay, he takes with the queen on e4. And now the best move is king f. Okay, that's ridiculous. King f1 is the best move now. Idea bishop d3, rook h6, and so on. Wow. So Gukesh playing some amazing chess. King to f1. That was not an easy move to play. I must admit, this very difficult move found in just 13 seconds. Amazing find. And now I think bishop d3 in the air, rook e1 incoming as well. Pressure on h6. We have basically stepped out of this check, this pin. Hamara bishop azad ho chuka hai aaj. Yep. So how are they getting 2 points for a win? So day one of the event, every win gets you 1 point. Day two of the event, every win gets you 2 points. And day three of the event, every win gets you 3 points. So it's an incremental setup. It's a new format. And that's why. Fabi against he becomes a super player. That's actually true. But I think Fabi and Gukesh have traded blows. Olympia 2022, like Fabi got crushed by Gukesh. Then Fabi also delivered some blows, I think, in recent times. 2025 में बहुत बार हराया Gukesh को. And now Gukesh, kind of giving it back. So it's nice to see this rivalry building up. Fabi Gukesh की aura में आ जाता है. By the way, Queen G6, not the best move. Bishop F4, attacking at 6, a nice move, putting pressure. He can also play King G1, by the way. Also a nice move. By the way, Fabi under some time pressure. अब पता क्या देखो, very important. Gukesh is 1.5 minutes plus up, right? He has to maintain that. अब वो छोड़ना, just because you're up on the clock doesn't mean you have to use it entirely. Find a good move, just move. Let's play King G1. फर्क नहीं पड़ता. But play it quickly. Let Fabi blunder.
अभी tickets release नहीं हुए अक्षत भाई. They will likely get released in the next couple of days. Keep an eye out on the Instagram handles for Chesscom India, Chessbase India. आएंगी वहां पे links for sure. But there are three contests going on. One is the tagline contest for the World Cup. One is the caption contest, and one is three separate arenas for below 800 players, 800 to 1400 and 1400 to 2000. If you win that arena, you get an all expense paid trip to Goa for a couple of days. So you can go to the World Cup, visit the players, meet the players potentially, and be right there in the action, in the middle of the action. So check out those contests on our Instagram handle. By the way, Bishop F4 played best move and H5 not the best move. Now suddenly Gukesh, slowly the bar is going up. Knight H4 is a very nice move, but I still like Rook E1 and King G1 more, I think. Just kind of improving the position, not committing to any plan just yet. Yep, audiences will be allowed. They'll be there's apparently going to be a place for the audience to hang out, so you can visit. There'll be tickets being launched soon. It's going to be a lot of fun. Magnus Hikaru, by the way, right now Magnus is slightly better, so we'll go to the game at the end. As of now, time barabar hote hue. King G1 played, nice move by Gukesh. I love the fact. Oh, that's a slight mistake. Rook H3, come on. Rook H3 is the moment. We've been waiting for. Ooh, okay, but nice move still. Second best move played, Knight H4, attacking the Queen. Rook H3 next time, kabhi na kabhi. He avoids the trade basically. He wants to keep as many pieces as possible on the board. Who do you think is going to win? I think this is going to be close. I think Gukesh wins. I'm gonna bet on it again, yeah. I know my predictions today have not been correct, but I've been thinking with my heart and not my brain. But in this game, my brain also says Gukesh, yeah. Come on. Queen kahan chalenge? Queen E6, by the way, the best move. Not an easy move, I must say. Queen G7. Ooh, he finds it. And now maybe Rook E1. कुछ पिन हो सकता है यहाँ पे. पहला क्वेश्चन हो गया ध्रुव भाई. सेकंड क्वेश्चन, डायमंड मेंबरशिप कम्स एट 2K लाइक्स. प्रग और अर्जुन वर्सेस गुकी. आई थिंक ईदर वर्क्स. यू वुड बी हैप्पी टू सी ईदर. आई थिंक ईदर वुड वर्क फॉर इंडियन फैंस. बाय द वे, 1 मिनट का एज. That's a mistake. And knight G6, only move for Caruana, and he gets the equality he's been waiting for. I think Caruana is absolutely back in the game. But he is under time pressure. He's still under time pressure, so anything can happen. Oh, he finds it. He finds it. And now bishop is attacked. Knight is being exchanged. Bishop is attacked. Now Caruana leading the way suddenly out of the blue. He's slightly better. क्या करें गुकेश यहाँ पे? Yeah, I mean, Gukesh is still okay. He's not struggling, but yeah, he has to be a bit more careful now. Nice find by Fabiano Caruana, who is in great form after beating Magnus Carlsen twice in a row. Okay, by the way, Gukesh time still ahead by around 45 seconds. That's the good news. Black's king is still weak. That's the good news. Come on, Gukesh. Apparently, FG4 is decent. Yahan pe, that's a normal move. Knight G6 also works. Black, regardless, is gonna take on E2. That is the black plan. If you try bishop F1, by the way, to save the bishop, that's a problem. There is takes, and queen E3 check, and suddenly black is actually winning. So you have to be careful. You have to either take you cannot give this bishop on F4. Aapke sare pawn light squares pe hai. You need something to cover these dark squares. Caruana is better than Gukesh. I think that's a debate you can have for sure. But as of now, I think he did defeat Caruana 2-0 yesterday. So in this tournament right now, Gukesh has been dominant. He's still thinking, time फिर से नीचे जाता हुआ Gukesh का. He's lower than Fabi on the clock. What's going to happen now? Gukesh feeling the pressure. Is he going to lose? Is he going to strike back? कम हो गया टाइम बिल्कुल. भाई आप बोलो Gukesh might lose. Yeah, Gukesh might lose. अभी बोला. अरे अब 30 seconds behind, 40 seconds behind. Gukesh, move.
नजर क्या भाई, जब वर्ल्ड चैंपियन बना तब भी तो चेक करे थे, तब कैसे नहीं लगी? Time will go to 1 minute. He could crumble. It is definitely a possibility. This will be like a wrestling game. I mean, back and forth, both players landing punches. You don't know till the end who's gonna win. Definitely. Time management has been a big issue for Gukesh in this match, and it's not getting any better in this game. And he finds the best move. Great move by Gukesh, but he took a lot of time. He took 2 minutes and 44 seconds for that move. That is a lot of time when you have 1 minute on the clock. Oh my God. Okay, still close to equal chat. Take on H5, of course. Ooh, rookie 2. Tricky position right now. Maybe Bishop F4. Caruana still trying to win this. He's on the clock, has a slightly better position. I think a double pawns are the problem. अगर ये pawn यहाँ होता, Gukesh would be absolutely fine. ये रुक आराम से अटैक कर सकते हैं इनको, समझ रहे हो? लाइक मारने के लिए आई थिंक टक 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 कीप ग्रैबिंग इट. दैट्स व्हाई डबल पॉन्स आर वेरी वीक. दे कांट सपोर्ट ईच अदर. अगर यहां होता, आई कुड प्ले C4 एंड वन पॉन डिफेंस 3. कमेंटेटर्स कर्स द फैबी को. फैबी भाई क्या बढ़िया खेल रहे हैं भाई. क्या शतरंज खेल रहे हैं फैबी भाई. ओह, क्रेजी चेस खेल रहे हैं. मतलब शानदार चेस. ओह, क्या ब्यूटीफुल मूव्स बाय फैबियानो कारुआना. Gukesh, to control himself, maybe. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. Gukesh is thinking. He finds a good move, by the way, which I have for nice move. And now I think C5 is in the air. You could potentially try to exchange these pawns. Also, this is a big threat. So what does black do about this? Fabiano का टाइम धीरे धीरे नीचे जाता हुआ. Tip tip. 1 minute difference now. And just an update on the other game. Apparently, Magnus is still better on path to defeat Hikaru. B6, a decent move, preventing C5, the idea we just saw. And now I think we should take on G6. That's an obvious move. Come on. Just take that pawn. Don't think, Gukesh. 15 seconds. Take that pawn. Bro, take that pawn. Oh, wait. Oh, Caruana had to play King H7. He didn't find it. And suddenly Gukesh is back in the game. Bhai, this could go either way now. Okay, so it's getting interesting. King H7 now played. Ooh, getting tricky. Oh, not the best move. And now only move is Rook F8. I think he will find it though. Not a tough one for Fabiano Caruana here. Finds it. You have to be kidding me. The only move is A3. You have to be kidding me. A3 kya chaal hai bhai, just to save that pawn. That's so... 3 seconds play! 2 seconds! And that's a blunder from Gukesh Domaraju. And Fabiano Caruana can take the pawn, and he's winning against Gukesh. Wow. Yeah, the rook is too passive. Rook को यहां होना चाहिए जीतने के लिए. The rook is... Oh, that's an even bigger blunder now. Just A5, A4, and Caruana is winning. Yeah, this is gone, I think. भाई Caruana क्या फॉर्म में है भाई. Defeating Magnus twice and now Gukesh. Damn. A5, yeah, Caruana finding the best move. ये pawn से मतलब ही नहीं है. He can just push this one pawn and queen, and Gukesh will be losing this game. I think अगली game में comeback करना पड़ेगा. Black pieces, which is not gonna be easy.
And Fabian will go to 9.5 points. Wow. Yeah, G5, nice move actually. H6 pawn आखिरी उम्मीद थी, वो भी गया, and I think that's the end of the game. Yeah, King H6 is game and game over. Oh, wow! What a move! A piece sacrifice by. Oh, you can't stop the a pawn. The bishop cannot stop the a pawn. What a move! Wow. Wow. I think I have to admire that move. Beautiful move to end the game. The next game with Caruana will start in just 4 minutes. So let's go to Carlsen's game. जहां पे Carlsen धो रहे हैं अभी Hikaru Nakamura को. Oh, अगली गेम गुकेश जीतनी पड़ेगी भाई. He has to win the next game. Will Carlsen win and join Fabiano on 9.5 points? Let's figure it out. Important game. This one, 94 played. Bishop E1 looking passive. Magnus has a passed pawn, has a weak king to attack, has very active knights. Yeah, but C pawn है, push करना है उसको, and he will win the game, I think. Ooh, that's risky. Yeah, 94. Yep, H5 pawn भी गया. I think time to resign maybe. 93 is almost mate, yeah? Almost. Gukesh back is. अरे यार ऐसे मत बोलो यार. What if he defeats Caruana in the next game? फिर कुछ भी हो सकता है. कल जीतने के 3 पॉइंट है भाई. Let's not forget. I thought ब्लेंडर की एक्सचेंज के लिए भाई कार्लसन ने, but not really. Okay, I mean Rook H2 is winning apparently. Rook H2 is completely winning, which is ridiculous. I have to agree. Ukesh was, I think his time management has been the problem. It's not been great. Every game he's been behind his opponent on the clock, and which is a sign, right? That something is going wrong. I think he needs to solve his time issues. Until then, it's gonna not end well. He needs to be ahead of his opponent in the final crunch moments. Tabhi to he will have a chance. Yeah, this looks like Carlsen is about to win. Let's see how it ends though. How does Magnus finish off Hikaru Nakamura? No, I think even worse than that, Rahul. I think it was the moment when he took 2 minutes, 40 seconds and ended up with 1 minute on the clock. That was, I think, somehow worse, I feel. What a comeback by Fabi. So that means the comeback is possible. That should be inspiration. That's how you look at it, right? So if you are an ambitious player, you should look at it as inspiration. कि भाई Fabi ने किया तो मैं भी कर सकता हूं. Yep, Carlsen wins and he goes to what? 9.5 as well. So Hikaru और Gukesh पीछे रह गए हैं. Let's see what happens. It's Karu and Gukesh final game of the day chat starting in just 1 minute from now. Prediction डाल दो. I'm gonna set up a poll जल्दी से. इसका मैंने poll डाला नहीं था first game का. I'll set up the poll for game number 2. Let's see why. I think poll up maybe will not be as similar to Gukesh या जितना होता था. But you never know. Hikaru versus Caruana, game 2. Sorry, not Hikaru versus Caruana. Caruana versus Gukesh. ये क्या कर दिया भाई? Caruana versus Gukesh, game 2. Caruana wins. Gukesh wins या फिर draw. Let's go. वोट तो केशव करेंगे भाई. Magnus wins this match with 10 seconds on the clock, and Hikaru above has 2 minutes. Exactly my point, right? I think he needs to be ahead of his opponent. I don't care how. Any youngster who can be as dominating as Magnus or Kasparov. I think Magnus Carlsen से खुद ये सवाल ताने ने पूछा था. That was a great question. And Magnus said, there's no one right now in the world whom he thinks has a chance, like who he thinks has a chance to dominate chess like he did.
He did mention that he's really impressed by, I think, a Dogmas and a couple of youngsters, but not really any of the Indian players. So that's very interesting. And the games have begun. Final game begins, chat. E4 on the board. Caruana versus Gukesh. Let's see कौन जीतेगा. Poll में 45% लोग कह रहे Gukesh wins. Caruana is matching Gukesh right now in the polls. Yeah, 41% and draw 14%. And we have E4, E5 on the board. Spanish. Let's see क्या होगा गेम के अंदर. काफी solid opening choice by both players right now. And chat, कितने likes हुए? Let me see if it's even possible. चैट 1400 लाइक है. अगर सारे के सारे साथ में मिलके अभी लाइक बटन दबा दे और हम 2000 लाइक पहुंच जाए गलती से, तो एक और चेसकॉम डायमंड मेंबरशिप गिव अवे होगा. सो आई एम गोइंग टू डू 1 2 3 नाउ. सब साथ में लाइक बटन दबाना, ठीक है? 1 2 3 एंड नाउ हिट द लाइक बटन भाई. लेट्स गेट मोर पीपल इन. रात को जो लोग जो नाइट आउल्स हैं हमारे, उनको लाते हैं स्ट्रीम पे, साथ में फाइनल गेम देखते हैं, क्या पता ओके जीत जाए. एंड फिलहाल के लिए बिशप C5 ऑन द बोर्ड. कारुआना इन डीप थॉट ऑलरेडी अ मिनट बिहाइंड. अब ये टाइम एडवांटेज मेंटेन करनी है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, so far playing quickly, although Fabi has the center now. Gukesh has to be careful, has to break with D5 in the center as quickly as possible. It is occasion me and one time out this spammer. Who is the spam? अच्छा ये. अच्छा अरे भाई पॉलिटिक्स मत लाओ यार. आई मीन पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है हमें. हम ऑलरेडी चेस में बहुत पॉलिटिक्स है. बाय द वे E5 D5 ब्रेक कर दिया है गुकेश ने. E5 प्लेड. आई थिंक बिशप F5 इज अ वेरी गुड स्क्वायर फॉर द बिशप. कैसल करेंगे नेक्स्ट एंड देन आई थिंक गुकेश इज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन. Why is chess media not streaming? I have no clue why they're not streaming. Actually, they are on site. Maybe कुछ issue होगा. God knows. Maybe you can ask Sagar bhai. I'll ask Sagar when we meet, but I don't think I have a clue right now. गुकी फिर भी 3 मिनट लेगा फिर एक मूव में. वही तो अवॉइड करना है ना भाई, वही अवॉइड करना है. Let's hope so he doesn't do that now. Chat, I have a question. So, if you had a choice, would you watch a global broadcast like Chesscom Global, or let's say St. Louis, or let's say, Freestyle, yeah, whatever? Or would you watch an Indian broadcast like, let's say, Chesscom India, Chess24 India, ChessBase India? Like, which one would you prefer and why? Just curious. यहां बैठ के देख रहे हो तो यही प्रेफर करते होगे. आई एम गेसिंग. Yeah, maybe this is not the right place to ask that question. I should ask a general audience, but still would love to know. बाद में बिशप टेक C6 मार दिया है. अब यहाँ पे नाइट से मारना चाहिए. नाइट इतनी देर से वहीं बैठा हुआ है इस चीज के लिए. And now I think rook C1, very logical move because you put the rook on the half open file, put pressure on that knight, and second rook आएगा E1 पे. So Caruana's position looking very logical. Chess24, Chess24, CBI, हिंदी में मजा आता है. ग्लोबल बॉडकास्ट, हिंदी सुननी है मुझे. Chess in India anytime, prefer quality. So I think a lot of different answers, but I think very interesting. There's so much negativity. I don't think negativity तो हर जगह होती है भाई. वीडियो को तुमने हारते हुए देखा कभी? जो नेगेटिविटी आती है चैट में भाई साहब, वो अनप्रेसिडेंटेड है. आप गाली दो एक. नहीं नहीं भाई, गाली वाली हम देते नहीं है भाई. हम शरीफ आदमी है भाई, दूध से धुले हुए हैं. रोज सुबह 9 बजे. बाय द वे कूक सीवन खेल दिया यहाँ पे. एंड the knight is kind of misplaced also because you would love to play C6, but at least आप यहाँ pressure डाल रहे हो. So for example, bishop F5, कल को even bishop G4 could pin that knight and you could threaten bishop takes D4. Okay, so समझ में आ गया. And now, would you prefer commentary in English or Hindi? I know it's kind of a similar question, but still, what is your preferred language of commentary, English or Hindi? थैंक यू एक्सजीवर भाई. वीडी का फैन हूं, कुछ नहीं सुनूंगा भाई. जब हारता है वीडी तो क्रेजी दिखता है भाई चैट में. इंग्लिश बेस्ट है ना. आई काइंड ऑफ अग्री एज वेल. आई थिंक, आई मीन ऑफ कोर्स दानिया इज वाज क्रेजी यार. आई मीन ऑफ कोर्स. Yeah, I also like English.
मराठी भी सुननी है एक बंदे को। अच्छा, नाइस नाइस। एक बार नेपो बोल दो भाई, नेपो भाई वर्ल्ड कप आ रहे हैं भाई, मिल लो नेपो से आके गोवा में डायरेक्टली भाई। बाय द चैट, लैंग्वेज का पता नहीं, बट बोर्ड पे एक ही लैंग्वेज बोली जाती है, वो है फास्ट चेस की, स्पीड चेस की। एंड लुक एट द क्लॉक अगेन, गुकेश हमारा जो मोर देन अ मिनट बिहाइंड, एंड वी आर सीइंग द सेम प्रॉब्लम। Come on, come on, come on, come on, come on. I think यहाँ पे queen b3 is a nice idea because you're putting pressure on the b7 pawn and played. And if you move that pawn, for example, मैंने b6 खेला pawn को बचाने के लिए, then rook c3, doubling up rooks, and this can be a huge weakness. So I think a queen b3, excellent find by Caruana, and Gukesh needs an innovative solution here. Because rook b8 जैसी move खेलना, ugly move, right? Because आपका rook pawn को बचाने के लिए अटका हुआ है. And he plays queen d7. अगर आप queen b7 मारोगे, I think rook b8 and rook takes b2 is the plan for now. Do you see CBI as your competitor? I think ऐसे तो चेस बेस इंडिया भी हुआ, चेसकॉम ग्लोबल भी हुआ, ऐसे तो फ्री स्टाइल भी हुआ. आई थिंक एंड एवरीबडी हु स्ट्रीम्स brings more people into the game, and as a community the chess community grows and everybody benefits from it. So I think that's how I look at it. Otherwise तो तुम सदमे में ही हो भाई, फिर तो हर कोई कंपटीशन है, फिर तो तुमने कर लिया भाई, लाइक फिर तो कर लिया तुमने कंटेंट. सो दैट्स द एटीट्यूड आई लुक एट इट इन एट लीस्ट. रुक f8 फॉर फैबी. भाई रुक यहां पे कूद के कैसे जाएगा भाई? ओह, दैट्स अ स्लाइट एरर बाय Fabiano Caruana. It looks like a nice move, but knight takes e5, pawn takes, and rook b6. That's the maneuver, and suddenly the queen is misplaced because you have to now play queen c3, but there is d4, and you are losing protection of the b2 pawn. So I think good chances of course suddenly for Gukesh now, but takes ka rook b6 is essential. Wait, is Fabi thinking queen b7? He could be. Diplomatic नहीं है भाई, trust me, I've always believed in this. मैं चाहता हूं कि चेसकॉम ग्लोबल, चेस इंडिया, even St. Louis gets maximum viewership, because if they get more viewership, we also get more viewership. That's always the case. क्रिकेट में कई लोग भाई कमेंट्री भी नहीं करते. इफ यू सीन अ क्रिकेट स्ट्रीम ऑन यूट्यूब, दे विल जस्ट प्ले रैंडम ऑडियंस बैकग्राउंड नॉइज एंड जस्ट शो द स्कोर and get lakhs and lakhs of viewers. So, now they can say, oh, do they see Hotstar as competition? You see how everybody benefits. Anyways, long term, this strategy there. But फिलहाल के लिए Queen B7 मार दिया Caruana ने. So he finds a nice solution to his problems. And now Rook C8, very important. You don't want to allow Rook take C7. Yeah, very important. It is playable and play design went indeed on the board. क्रिकेट में भी होता है, क्रिकेट में होता है ये चीज. आई हैव सीन मल्टीपल टाइम्स. Okay, rook c8 played, and now d5 will happen. So अब rook b6, अब वो खेला. Oh, queen trapped c है, by the way. The white queen has no squares. That's very interesting. Or I can try to keep it trapped, or I can just take the pawn. Very tough choice for Gukesh. Does he keep the queen trap or does he take the pawn? I think pawn मार देना चाहिए, because जो मिल रहा है वो ले लो. I have not been to Norway before, Amit. I think someday for sure. Would love to see those lights, Okay, chat. Final game of the day. 7.5 minutes for Fabiano Caruana. It is 6 minutes 50 seconds for Gukesh. Time neck to neck. 30-second disadvantage right now for Gukesh. Manageable है, but क्या वो ऐसा time advantage, जो time advantage है और extend नहीं होना चाहिए? That's the important decision. Okay, super chat. Let me check. Super chat है. Please bring Samay. I want that OG chess stream. लाएंगे भाई at some point for sure. Samay right now is very busy. I assume we are talking about Samay and I'm not our producer. I think he's very busy with shows. He's doing so well in life. And the last thing we would like to do is stop him in his journey. So wishing him all the best and hope he gets more and more success. So let him do his bit. Meanwhile, by the way, Rook takes a2. Let's capture another pawn.
Chad, I have to be honest. I think Gukesh has some winning chances. And I think it all revolves around these pawns now. Can he push these pawns? Can he create genuine threats of queening these pawns? That's going to decide whether he wins or not. Simple. White also has his own plans, by the way. So it's not a one-way street just yet. Yeah, but I think there was no way to put more pressure on the queen. Like, the queen would escape at some point. Like, there was no way you trap the queen. That's the problem. You didn't have enough pieces there. But as of now, Caruana are doing fine. I think he has active pieces. Knight can come to c5, attack the queen. E pawn be strong here. I think SGY, you're throwing out gold nuggets every 10 minutes. Anybody who has more time in the final 1 minute of the game wins. That's basic. As long as the game is not completely lost for you already, if you have more time, likely you'll win. Simple. Who is better, Gukesh or Fabian, according to you? Do you mean like overall, rapid blitz overall, or do you mean classical? Which format do you mean? Up next on कब खेलोगे? I think not for a while. I'll be commentating on a bunch of events. First is this one, the Clutch Chess Championship. Then is the World Cup. Then is I think it's gonna be freestyle chess. Then it's gonna be World Rapid and Blitz. Lots of tournaments coming up. मुकेश भाई पहली बार टाइम पे आ गया भाई प्लीज वो मेंटेन करना एडवांटेज छोड़ना नहीं yep you get 2 points for a win today overall I think overall maybe Caruana is like 2-3% better but classical mein I think Gukesh is already slightly better I feel that's my take I might be wrong on this I think depends from person to person because it is close regardless of how you look at it but I think classical mein Gukesh is probably better now. He has more fluctuations. Fabi is more stable, but I still feel कि Gukesh is already stronger now. By the way, still no moves by Fabi. So Fabi making the Gukesh mistake of thinking too much. I am Tikul Tile bhi kabhi na kabhi aayega bhai, kabhi na kabhi. Even lasts for how many days? 3 days. Tomorrow is the last day, and then we move on to the World Cup. दिल्ली फ्रीस्टाइल में कब है वो हुआ ही नहीं भाई वो कैंसिल हो गया दे कुडंट फाइंड अ स्पॉन्सर ये लास्ट मैच है इसके बाद डिप्रेशन आएगा वापस नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होगा लेट्स होप सो गुकेश एंड्स ऑन अ हाई नहीं 14 Fabi was different let's just be that was a completely different Fabi look at the accuracy by accuracy wise Gukesh is 98.8 so doing very well I mean अब मैं बोलोगे very well बोल दिया टिकू भाई जिंक कर दिया टिकू भाई very well बोल दिया भाई तारीफ तो करनी पड़ेगी ना भाई टिकू भाई इन समय सब बैटल अरे बाप रे वो ट्रॉमा याद मत दिलाओ भाई ये तो टाइम डिफरेंस बढ़ता ही जा रहा है 3 minute टाइम डिफरेंस नाउ वाई ब्लैक पीस कांट मूव फर्स्ट पहले ब्लैक पीस से खेल लो भाई किसने रोका है आपको अब एटलीस्ट अपनी गेम से तो कुछ भी कर सकते हो आप अपने घर पे खेल लो दोस्त के साथ तो कम ऑन भाई डबल टाइम से ज्यादा है एंड क्वीन e3 अ मिस्टेक बाय फैबी and rook a3 now the only move for Gukesh for an advantage he can also play other ideas but I think rook a3 is the best move pinning that knight See, now he can think. Now it's not an issue. At least 1 मिनट तो सोच ही सकता है यहां पे जस्ट नहीं बिकॉज ओपोनेंट बहुत पीछे है बट यहां भी 3 मिनट मत लेना भाई लेट्स टेक लाइक 1 minute max and move like I would rather have the second best move bishop e4 in 1 minute than have rook a3 in 3 minutes simple रूह अफजा नहीं भाई ये वो है क्या बोलते हैं उसको यार वो जो होता है ना वो क्या बोलते हैं उसको यार आई डोंट नो क्या बोलूं Bro, is Divya qualifying for candidates? Difficult. I think Divya का second round में match निहाल के साथ है. So that's going to be a tough match for her.
She has a good chance. नहीं नहीं भाई. नहीं, this is that यार, वो जो होता है ना, वो जो विटामिन वाले वो होते हैं जो पानी में डालते हैं, whatever, I don't know. But anyways, Queen E3 played, still no moves by Gukesh. Gukesh भाई please चल दो यार, please चल दो यार, let's not take too much time. You have to move right about now. Let's maintain that time difference. क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, वही. रूह अफ़ज़ा लोल्स. टैंग, वाओ. कम ऑन यार. चल क्यों नहीं रहे यार ये लोग? Why is Gukesh take भाई? Just because और stars के support you have 24 hours in a day doesn't mean कि एक काम में 24 hours लगाने हैं. What is Gukesh thinking? Is he considering? See, what I really want to play is c5. That's the dream, right? Because I want to push these pawns. But I can't do it because knight takes. So automatically, rook a3 comes to mind. It's not super complicated. So what is he thinking? Gukesh! Let's play rook a3. Who are you to judge him? अरे भाई हम cheer कर रहे हैं भाई. ये वही बात हो गई भाई कि अगर if you can't play cricket like Virat Kohli, don't judge him. Don't give him advice. Like that's not how it works. By the way, he finds it great move, but he took a lot of time. He took 2 minutes and 47 seconds to find it, and now apparently c5 is the best move. Wait, what? c5, knight c5, rook c3, queen c3, d4. Queen check and king h8, and apparently this is better for black. Wow, this is not easy to find though. Not easy to judge at all. Come on. यार टाइम बराबर हो गया यार चैट. यार वी वर 3.5 minutes ahead. एंड दो ही चालों में टाइम बिल्कुल बराबर हो गया भाई. बिल्कुल बराबर हो गया. What is going on? Come on, Gukesh. Tough. Somebody said Executor Gaming said, what after rook b8 here? Rook b8 is possible. I think white will just go knight d4, exchange some pieces. As long as c5 is not possible, white is kind of happy. Rook b8 possible though. Definitely an option. And Gukesh finds the best move. He finds the best move, c5. He took a lot of time, but at least he came up with the best idea. Now, will it be enough to win the game? Let's find out. Final 3 minutes for both players. Neck to neck chal raha hai. Now Caruana has to take time. He's gonna calculate, can I pick up that pawn? Because if you don't pick up that pawn, d4 is incoming. Forking queen and rook. What a big threat. He takes the pawn. Rook takes e3, queen takes e3. Will he play d4 now? The best move. Not easy because check aati hai d4 ke baad. Chess is hard. Chess is really hard, chat. You have to play well till the end. Even one weak moment and he doesn't find the best move. Last mocha for Fabiano Caruana to find rook c1. Will he find rook c1? The only move, or he's busted. Of course he will find it, yeah? You have to defend the knight. I don't see any other moves. He finds it. a5 played. But what about queen a5? Isn't it just close to equal now? Might be a draw. I didn't have dinner today. I think time ही नहीं मिला यार. We'll have something after the stream, but फिलहाल के लिए queen e3 apparently is the best. If I was white, I would just chop off that pawn in a second because that's the black's own black. That's literally the only hope black has, yeah. Tikpa, just life advice how to maintain discipline. Discipline is the toughest thing to master. I think it cannot happen overnight. कई लोग बोलते हैं कि either you have it or you don't have it. I think it's a practice. It's very hard. I think one thing that helped me, which I can possibly advise, is maintain a checklist daily. क्या काम करना है? And that really helps you get work done. I think that really helps. Meanwhile, a5 played. What to do now?
Fabi behind the clock. That's nice at least कि time pressure Fabi पे है भी. Draw में कितना point मिलेगा? Draw में भी मिलेगा 1 point, but ideally we want 2. Eval bar is working. It's right in the middle. E6 I think is too ambitious, I feel. I mean, it's possible, but it could just, you have to be very cautious now. Black का pawn जा रहा है, and आपका pawn भी थोड़ा अटका हुआ है. The black queen is stopping that pawn. I think maybe he can just keep the pawn on e5 for now. Depends, right? Is Fabi playing for a win? If he's playing for a win, he could do this. But I think it might backfire as well. Yeah, I thought so. He'll take the pawn. That's just more human, yeah? Queen e5 played, and now maybe just knight b3, exchanging rooks. And this looks like a draw to me, chat. I think ये तो draw ही होगा. h3, weird move, by the way. Okay, I mean, not weird, but feels slightly slow. Apparently, bishop h3 is possible. If you take this, then there is queen g5 check, picking up the rook. So crazy stuff. But Gukesh just plays d4, best move. And now the best move is g4. Okay, that's not going to happen. I think queen b4 looks more logical, just to keep pressure, threaten this check. Yeah, queen b4 played. And now if you play d3, for example, that's a blunder because there's knight d3. And ab knight maroge to rook marunga. So you have to take the rook, and then I take the rook, and it's better for white now. So yeah. h6 played. Okay, nice move. Guki के पास pass pawn है, white के पास knight है. So if this pawn vanishes, white can actually win this. You have to be careful with this pawn. Can't give this pawn at all. Come on, Gukesh. You have it within yourself. Time pe pehli bar. For the first time today, Gukesh is way ahead on the clock. Will that be enough to get his first win of the day? He's not had a single win today. Can he get that under his belt today? Come on, Gukesh. Oof, Fabi offering trades. And karna padega because the queen is also attacked, so you don't really have a choice here. Marna hi padega. And is it enough to win? I don't think so, chat. There is no queen e1 check because the queen controls the e1 square. Knight hanging nahi hai. And d3, for example, pushing is just too slow. I can just take this, actually. And if bishop d3, there is queen b3 check. And I pick up the bishop. King h7 played, getting out of that check. And d3 is now a threat. Gukesh won a draw one game versus Hikaru because he was low on time. Yeah, exactly. And that's not just in the Hikaru game. I think that's happened in every game so far. He's been low on the clock. Okay, d3 played. I think still a draw, there is no way for black to activate, like to push this pawn. You can't kick the queen out of the d2 square. You can't play queen e2 because knight controls. And queen c2 pe I can just take. And the knight already stops the pawn. So there is no way, I think, how black can progress. If you move the bishop, then I pick up the pawn, it's a draw instantly. Actually, if white can try to win then. For example, queen e2, you don't take, by the way. That will be losing. You just keep it like this. No issues. Queen e2, just keep it like this. No issues. कोई stress ही नहीं है भाई. I think it's your travel Nikhil Roshan. How are you? What's up? By the way, queen e2 played queen f4. Oh, wait. He's losing a pawn with check. Okay. Some chances suddenly. Suddenly some chances. He's won a pawn. But is it enough to win this? I still don't think it's enough to win this. But at least some hypothetical hope for Gukesh. Because Fabi time pressure mein hai. And if Gukesh wins this somehow, that will be evidence that it's all about the time. Okay, he's using that time to his advantage. Thinking what to do. Queen g6 check is very logical. You can gain some time on the clock as well doing so. Bishop g6, okay, keeps his king safe. Knight d2, okay. I think just
White just wants to maintain a blockade there. Knight is the best blockading piece. ये pawn को रोकना है, एक कदम आगे बढ़ने नहीं दे सकते. Ooh, knight coming to e5, maybe. Bro, any opinion about Total World Championship? I think, yeah, it's a nice concept. Has a bunch of flaws right now. Why is, the goal Total World Championship is to find a champion who's good at all formats. Technically, that's better than the world champion, right? Because you're good at all three, not just one. Then how is the guy qualifying to the world championship itself, which is a completely different time control? So, देखना पड़ेगा. As a concept, it's nice, but has a lot of flaws right now. Okay, Queen d4. Still no committal moves. If you play knight h4, for example, then I can just give a check and not suffer at all. Queen e3, okay. चैट क्या आता है? ड्रॉ की कोई गलती करेगा? ड्रॉ और रिजल्ट. आई एम नॉट सेइंग कौन जीतेगा. डू यू थिंक ड्रॉ और अ रिजल्ट? डू यू थिंक कोई बंदा गलती कर सकता है यहाँ पे? एज ऑफ नाउ इट फील्स डिफिकल्ट कि कोई गलती करेगा, बट आई थिंक इट्स लाइकली गोना बी अ ड्रॉ. लेट्स सी, कुछ भी सकता है. या आई एग्री, आई थिंक ड्रॉ ही होगा 99%. Bishop d5, f3, okay, some interesting detail, some movement at least. कुछ लोग रिजल्ट लिख रहे हैं. By the way, in the other game, Magnus is beating Hikaru, so he's gonna go to 11.5 points, and he's likely gonna lead the event. And Gukesh and Hikaru will be in third place, I think, if the game ends in a draw. Okay, Gukesh using the h pawn as an attacking piece. By the way, this pawn is now hanging, so you might have to also play g5 now, which is not exactly what you wanted to do in the first place. Because जितना king open होगा ना, उतने white को perpetual checks मिलेंगे. Then it's very hard to avoid a draw. Yeah, g5 played, but now I have a lot of checks. अरे super chat, thanks a lot, Nick Roshan bhai. Hello chat वाले दोस्तों, please hit the like button. Hello Sahil bhai, how have you been, rookie for the win? I've been fine, doing well. Hope you're doing well as well. Thanks a lot for the super chat. Indian chess is back in action. I think we are in the end game now. The super important part of the Indian chess cycle. Ooh, 93. Now, this pawn is getting a bit weak, brother. I'm a bit worried now. F4. This could be worse for... भाई ध्यान से गुकेश भाई, थोड़ा ध्यान से शर्माना जरूरी है यहाँ पे. Caruana and Gukesh now has less time. Bhai, only move king h6. Now Caruana has an instant draw if he wants to. Instant draw. Repetition uske paas. Let's see if he takes it or if he does push for a win. He can push, but it's risky also, yeah? So maybe, he does push for a win. Now Queen h8. A big threat, I think. Queen c6 played. Is it a big threat now? Maybe not, yeah. Bishop h7, Queen f8 check, King h5. Yeah, he plays it. Queen f8 check, King h5 only move. Yeah, Queen f7 check, King h6. Yeah, it's a draw, very likely. King h6 only move, by the way. Only move. Bishop g6, there's knight f6 check, winning the queen. Gukesh under pressure now. Yeah, they are repeating moves. Likely gonna be a draw, chat. Likely. Magnus has won, by the way. Yeah, Magnus Carlsen wins and goes to the lead with 11.5 points. And that is gonna be a draw for Gukesh, I think. Yep, that's a draw. And iska matlab, chat, Gukesh gets 1 point. He goes to 7 and joins Hikaru in third place. So as of now, Fabiano Caruana and Magnus Carlsen have the best chance to win the event. Lekin, कल के rounds में every win gets you 3 points. So if tomorrow in the first game Gukesh were to beat Magnus, Gukesh would already catch up just in one game. So do you think Gukesh has a chance to come back tomorrow, chat? क्या लग रहा है? Yes or no question. Simple. I think there is some chance, but I think he will have to start off with a good result. First game, dono din he has lost. I think that's not a good start. But even more importantly, he has to manage his time. I think that's something which was
obvious in today's play कि यार that was always a problem. So let's hope so Gukesh comes back on the final day tomorrow with a win, and पहला गेम फिर से होगा Magnus Carlsen के साथ, then Hikaru, then Caruana, and tomorrow we're going to have the final standings of this event. So yeah, tomorrow 10:30 p.m. as usual. Thank you Samay bhai for the amazing production, and thank you chat. आप लोग रात तक मेरे साथ रुके Chess24 इंडिया पे, Chess.com इंडिया पे. Chess फिर से क्रेजी मोमेंटम में आने वाला है, बिकॉज इट्स गोना बी क्लच चेस, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड रैपिड ब्लिट्ज, जीसीएल, टाटा स्टील इंडिया, टाटा स्टील कैंडिडेट्स, इट्स सो मेनी इवेंट्स कमिंग अप. अगला एक साल पूरा पैक्ड है. सो होल्ड ऑन टू योर पॉपकॉर्न. Indian chess is growing again. See you chat tomorrow. See you soon at 10:30 p.m. Take care and good night. Bye bye.